Yo, chat, I'm live. भाई, I'm live. Chat, क्या हाल है यार? So we are भाई day 4 आ चुका है आज. Day 4 आ चुका है. And आज भाई बहुत इंपॉर्टेंट दिन अगेन. यार मैं हर बार ये बोलता रहता हूँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है. बस सारे दिन इंपॉर्टेंट ही लग रहे हैं आजकल मुझे, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट. यो चैट, क्या हाल है भाई? चलो भाई देखते हैं, स्ट्रीम स्टार्ट हो गई ना? हाँ, स्ट्रीम स्टार्ट हो गई. चलो स्ट्रीम स्टार्ट हो गई. एंड टुडे विदित इज प्लेइंग अगेंस्ट शिरोव. सो चैट में कॉफी लेके आ रहे. कॉफी आ गया भाई, आ गया. यो भाई चैट में है भी कि नहीं है? कोई चैट में है भी कि नहीं है? क्या हाल है भाई चैट? यो भाई, क्या हाल है? भाई द राउंड इज अबाउट टू स्टार्ट अगेन. एंड सही बोल रहे हो, और लेट करेगा तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा. नाइस. द बैकग्राउंड मूविंग इज काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग. ये लो भाई, बैकग्राउंड मूविंग. ये लो भाई, बैकग्राउंड मूविंग. This opens up to the magical world of Narnia, by the way, if you want to ever go. वहां पे खुलता है, ठीक है? Just saying. यो चैट, क्या हाल है? यो अवनीश भाई, क्या हाल है? कैसे हो? चैम टीवी भाई, बढ़िया हो यार. तुम बताओ भाई, गेम शुरुआत क्यों नहीं हुई यार? 7:32 हो गया. What the hell is wrong today? गेम कैसे स्टार्ट नहीं हुई भाई? What the hell happened? ओह, इट फील्स सो गुड. भाई ये क्या बात है? ये मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा के रखे. भाई गेम क्यों नहीं स्टार्ट हो रही यार? अभी है ना राउंड? मैंने स्ट्रीम 1 घंटा पहले तो नहीं स्टार्ट कर दी? कुछ डे लाइट जोन, टे लाइट जोन स्टार्ट हो गया उनका. भाई लेट मी कंफर्म. अगर ऐसा है तो भाई फिर आई सी आफ्टर 1 आवर. नहीं, स्टार्ट तो हो गया यार, स्टार्ट तो हो गया. फिर क्या चक्कर है भाई? व्हाट द हेल हैपेंड? मेरा भी कल एग्जाम है, लास्ट में आऊंगा. अरे नाइस. यो हमें भाई, क्या हाल है? आज वीडियो पेल दे, मजा आएगा. मजा तो आएगा. बाय द वे, you will see all three people have black today. Vidit has black, Harikrishna has black and Anish has black. तीनों के black है आज. So आज बस तीनों जीत जाए. कराकिन कब क्या हो गया? No more tweets. करेगा भाई, करेगा वो भी. He'll be back with some more nonsense tweets. When will you grow a beard? I don't know man. वो no shave नंबर वाले बंदों में से, no net नंबर से नहीं हूँ मैं. भाई गेम क्यों नहीं शुरुआत कर रहे? यो ऋषि भाई, क्या हाल है? टिकुआ सनी लियोने लग. भाई मेरी कोई ऐसी मूवी तो मुझे बनी नहीं, जहां तक मुझे याद है. बने ही क्या? लाइफ में कुछ किया ही नहीं ऐसा, तो भाई मूवी कहां से बनेगी? एनीवे, पॉलर गैलिफारो वुड बी जॉइनिंग समेट टीम ऑन संडे. ही अनाउंस्ड ऑन डिस्कॉर्ड. ओह नाइस. संडे को क्या यार? व्हाट्स देयर ऑन संडे बाय द वे? संडे को, अच्छा संडे को 6 तो है. ओह अच्छा, बुलेट चैंपियनशिप. मैं भूल गया था संडे 6 है भाई. नाइस. आज फ्राइडे है ना? हाँ फ्राइडे. द चेस नाइट स्टैंड. आप नो नट ईयर में से हो? अरे भाई ऐसा भी नहीं है भाई. भाई कनाडा भेज दो भाई. अभी तो यार गेम ही स्टार्ट नहीं हुई, कनाडा कैसे भेजें? हाँ वो तो समझ गया भाई, मैंने खुद पोल डाला है. मैं तो भूल गया था कि भाई संडे और 6 एक ही है. हाय अर्ली टुडे. हेलो अनिशा, हाउ आर यू? ट्विटर शैडो बैन कराकिन. आई डोंट नो भाई, वो कराकिन का सेल्फ बैन है, लगता है थोड़ा सा बिजी होगा भाई. रैली कर रहा होगा बंदा. ओहो, ये क्या हुआ? अचानक से धक्का लग के 5 मूव हाथ में. चलो भाई, लेट्स हैव अ लुक चैट. क्या हुआ? व्हाट द हेल भाई, इतना ओके. e4 e5 knight f3 knight f6 bishop b5 a6 bishop a4 knight f6 castles now b knight e4 d4 b5 bishop b3 d5 de5 now from white will be played, of course, then bishop e6 and the game continues. No carry will join on 7th. भाई 7th की ज्वाइन करेंगे? 7th क्या स्पेशल है भाई? कल वीडियो हार गया था नरेश भाई, कल हार गया था यार. वो संडे को संडे है भाई. ओ अच्छा, या वो मेरे दिमाग में नहीं आया एक्चुअली. संडे को संडे. Nice opening by VD. He's an expert in this. Yeah, but I hope so he can win also. This opening is supposed to be, it doesn't really give black many chances to win because the theory is well established into an endgame जहाँ पे black is basically fighting into a draw. In fact, Anish Giri's game itself was the one who kind of decided how for white to play this. वियर्ड आनी भी तो चाहिए उसका. क्या भाई आती है भाई. द थिंग हियर इज चैट कि अगर शिरव को ड्रॉ चाहिए ना, ही कैन इजीली टेक इट. मतलब देयर आर लाइंस इन दिस वेरिएशन जहां पे इजी ड्रॉ मिल जाता है. दैट्स द इशू आई हैव विद दिस, बट लेट्स होप सो भाई कुछ हो ना. इफ यू बिकम अ जीएम विल बी द फर्स्ट कश्मीरी जीएम. या भाई, ट्रू.
Who is leading tournament right now? Pool C में विदित लीड कर रहा है along with Fedoseev, दोनों लीड कर रहे हैं. तो वो गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे. अगर आज फेडोसीव वाइट से रैपोर्ट को हरा दे, अगर आज फेडोसीव चैट सुनो, ध्यान सुनो, अगर आज फेडोसीव वाइट से रैपोर्ट को हरा दे तो आज भाई हम फेडोसीव के फैन है भाई, कंफर्म. फिर फेडोसीव ओपी चलेगा चैट में. Shirov doesn't want to play anyway since he doesn't have chance kind of. Yeah, but he's very ambitious, GVY. He's not one guy to, take for like some sort of random draw. So he will fight. He will fight for sure. Rapport and Vidit are leading and not. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना. If Rapport defeats, if Fedoseev defeats Rapport, that means Fedoseev goes to 2.5 and Rapport remains on 2. So basically क्या है कि it's much more likely कि VD शायद Fedoseev को हरा पाए rather than Rapport. बाकी एक ही बात है यार. आई थिंक रिगार्डलेस वीडी को एक प्लेयर को तो हराना ही पड़ेगा. बेस्ट होगा कि यार बेस्ट होगा ये लोग ड्रॉ कर ले, वीडी जीत जाए. दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो ऑफ कोर्स. ये सब दोगलापन है, ये सरासर दोगलापन है. अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई. वाई शिरोव प्लेइंग डिस्पाइट बीइंग ओल्ड? व्हाट? रुको भाई रुको. कौन था ये बंदा भाई? एक नाम देखे इसका भाई. कौन था ये भाई डिस्पाइट बीइंग ओल्ड वाला? कहा गया भाई? वैसे डिलीट कर दिया क्या? Why is Shirov playing despite being old? रुको भाई. I will contact FIDE regarding this. Hello FIDE. Yeah. I have a complaint actually. Yeah, Shirov is playing even though he's old. I mean, how is this allowed? Yes, exactly. I mean, this should not be allowed. Yeah, I mean he's strong. He's 27, but he's old also. I mean 27 हो गया तो क्या हो गया? Old भी तो है. अच्छा, old allowed होता है क्या खेलना? ओके ठीक है. तो ओल्ड को खेलना अलाउड है भाई चैट. इट्स प्रॉब्ली अलाउड. तानिया ट्वीट इंडिया फॉर ओलंपियाड. ऑफ कोर्स भाई. बाय द वे चैट, ओके वील फॉलो दिस. लेट्स गो टू द विदित गेम. या d5 played. Now Shirov is thinking. By the way, he can also capture with the knight. That's also a variation, but usually white does not exchange these knights because once you capture with the knight, then the c pawn is free for black. So white does not want the knight to be free ताकि c pawn आगे बढ़ सके. So that's why it usually captures with the pawn. But देखते क्या होता है. चेस अंकलिश क्या है? शिरोव भी लाइक बुड्ढा होगा. और टिको भाई कैसे हो? बढ़िया हो भाई. इग्नोर ओपिनियन भाई, बिल्कुल इग्नोर नहीं है. क्या बीटी है यूक्रेन का प्रेजेंट वाला वॉर के लिए बोल दिया अब भाग? भाई ये क्या है भाई? किसने बोला ऐसा? आज भी जीतेगा क्योंकि मैं आ गया मैच देखने के लिए. अरे सिद्धांत भाई, लेट्स होप सो. थैंक्स विकी फॉर द काइंड वर्ड्स. क्या बीट? ओके हो गया. बाय द वे चैट, लेट्स गो टू द गेम ऑफ हरिकृष्णा वंस. बाय द वे हरिकृष्णा के पास चांस अगर है ना, लेट मी चेक ट्विटर यार. वो चेस बाय नंबर्स, क्या वो 0.1% दिखा रहा है हरिकृष्णा का? लेट मी चेक बाय चेस बाय नंबर्स. चेस बाय नंबर्स में देखते हैं भाई क्या अपडेट है उनकी. ओके, दे हैव पोस्टेड समथिंग. इंटरेस्टिंग चैट. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. क्या परसेंटेज है आफ्टर द मैच यस्टरडे? सो वी ओपन दिस अप. So chat, as you can see, first of all, Harikrishna का percentage है 0.03%. So I think he has to win all 3 games today and then hope for the best. In terms of Vidit Gujrathi, he has 1.7%. So he technically has like हल्का फुल्का chance. So and Anish Giri का 35.1%. Anish Giri तो पेल रहा है भाई पूरा. So very interesting. Let's close this now, of course. By looking from, he has no chance. That is also true. Why is VD black again? Because he has 2 whites, then he had 2 blacks, and so on. By the way, let's go to the VD game now. I think Anish की game interesting रहेगी. Oh, e4 c5. Oh, we have the decision now. यार, objection है, my lord. जब प्रखर ने खेला था भाई COB में बिशप c6 नहीं मारा तो कस्पारोव सर ने कहा था कि भाई you should take on c6. I mean, you don't take on c6, then knight e7. मतलब मैं लेखों की तरह बातें क्यों कर रहा हूँ by the way. Yeah, so knight e7 defends the knight, but गिरी ने नहीं बचाया. Knight e7 now, d4, and of course knight takes d4, knight g6 now. So still opening theory. Let's go to the VD game, and yeah, after the move d5 played by Shirov, and now bishop e6. Shane won. क्या बात कर रहे हो तुम? Really? Oh भाई, Shane Warne died. Oh my God. Shane Warne died. Oh crap, 52 की उम्र में.
Holy fuck. Really? How? How did this happen? ओ भाई ये कैसे हुआ यार? हार्ट अटैक कह रहे हैं. ओ फक भाई, ये तो स्पोर्ट्स पर्सन था यार. शिट मैन, दैट इज सो सैड. दैट इज सो सैड. यू नेवर नो मैन. हम कोविड करते थे, यहाँ पे हजार तरीके से प्रॉब्लम्स हो रही हैं. या वेरी सैड मैन, वेरी सैड टू हियर दैट. Anish is started to confuse opponent, make waste his time. How can he do? Yeah, Anish is of course always well prepared by. Just today man, just today I think, because कल तक तो मैंने कुछ सुना ही नहीं था भाई. I think it literally happened like I think half an hour ago या 15 मिनट ago it happened something. 15 मिनट पहले हुआ यार. Crap. Shit यार, that is so sad. It's confirmed. हाँ भाई confirm है यार. कोई बुलेट इमीडिएट खेल रहे हो क्या? यार नहीं यार, मैं नहीं खेल रहा बिकॉज मेरी रेटिंग ज्यादा है. 2000 नीचे वाला अलाउड है उसमें, सो आई कांट प्ले विद भाई. आई एम नॉट अलाउड टू प्ले. सीरियसली हाँ सीरियसली भाई, व्हाई वुड आई जोक अबाउट दिस? शेन वॉन क्रिकेटर वाला क्या? और कौन सा शेन वॉन को जानते हैं भाई? वही वाला 52 की उम्र में भाई. दैट इज सो सैड. बाय द वे 92 प्लेड बाय वीडियो. ओके, दिस इज सो वियर्ड. Me and Harikrishna both have same chances to qualify for candidates. नहीं भाई, he has 0.03% extra than you. He was my favorite spinner. बस की बॉल देखी थी तुमने एक भाई, यहाँ पे कहा वो पिच के कोने में जाके बैट्समैन के पीछे से बोल्ड. क्रेजी. पुरानी लास्ट टाइम स्ट्रीम कब करी थी? आई थिंक काफी टाइम हो गया यार, साल से ऊपर होगा अब तो. हाँ या एनीवे, दैट्स वेरी सैड चैट, दैट्स वेरी सैड. बाय द वे 92 played. I think we saw this position. I think Anish Giri played this in the first round of this tournament as well. So this is quite the trend. White usually used to play c3, but nowadays they're playing knight d2, and black is usually playing knight c5. So very interesting turn of events. Oh, we did play bishop e7. Interesting. Ball cinch exactly, right? Exactly. This game में draw हुआ तो best result क्या है? If Vidit draws, Vidit has to win by. I think Vidit cannot afford to lose. That's step one. अगर हार गया तो फिर तो भाई we'll be in dire straits. So draw तो करना ही है. And he should try to push slowly. मतलब push जबरदस्ती push नहीं करना, but हल्का push करना है. Who died? भाई Shane Warne died यार. That's kind of sad. Same way with Shaq sacked a piece. अरे हाँ भाई सही बोला रितेश भाई. Shaq ने इसलिए में sack किया था piece 2-2. But I think he played knight c5 and not bishop e7. So that is already changed. भाई Shane Warne यार, Shane Warne. That is so sad. क्या हाल है टिको भाई? ठीक है यार, but I'm a bit of a shock now. He Shane Warne. I mean, I thought he was like very young. He's 52 and he died from a heart attack. R.I.P. Shane Warne, yeah man. R.I.P. Shane Warne. He needs 2 wins for clear sense. Yeah, he needs 2 wins, Prakabhai. I think it also depends on the other results. For example, if let's say Rapport kind of loses today, then kind of it changes things. But yeah, फिलहाल के लिए we have to assume कि 2 wins required होंगी. Literally 15 minutes ago, exactly my point. Irfan Khan, अरे हाँ यार, I mean, but yeah, it's kind of sad, yeah. I mean, I don't know. It's kind of sad. Yeah, RIP legend wise, surely. I mean, one of the best spinners ever. Like, I have to admit, one of the best spinners ever. He used to commentate so often. Yeah, exactly, man. By the way, someone in chat said that he tweeted about someone said 12 hours ago and now he is dead. Oh, bhai, really? Life is unpredictable, right? Chesi bhai sahi kaha yaar, sahi kaha. Yeah, the thing is, and it's kind of expected, no? So everybody, including the person, has kind of come to terms with it. Like, if it's been going on for years, something, but this is like very weird. Anyway, chat, let's try to not think about this. I mean, otherwise, it gets very difficult to stream and also focus on the game. It's kind of sad. It's really sad, bhai. And it's so weird. Like, the person is not alive, but his Insta story is. Oh my god, that is so weird. Crap. Anyways, let's go to the game of Harikrishna. What's happening here? Okay, this is still opening theory. White has played a5, creating a weakness on a6. Let's go to Anish's game. Yeah, they're playing very quickly. I think we saw it till knight g6, bishop e3, bishop e7, c3, castles, knight d2, a6, bishop e2, and yeah. Life is unfair, bhai. Life is unfair, bhai. Life is always unfair. समय मतलब वो सिर्फ कोर्ट नहीं है भाई. That is a fact. Thanks for watching, Rohit bhai.
व्हाट हैपेंड भाई? फेक है, नॉट शोइंग ऑन ट्विटर। क्या बात कर रहे हो तुम भाई? हमने किसी को फालतू में तो नहीं मार दिया? क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं यार, ही डाइड। नहीं यार, द मिरर और ये सब बड़े बड़े उसने लगाया। क्या बात कर रहे हो? और शेन वॉन ने लिटरली 12 घंटे पहले ट्वीट डाला था कि रॉड मार्च पास हुए। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई? नहीं, वेरीफाइड अकाउंट से मेंशन दिस चैट, ही हैज डाइड भाई, ही हैज डाइड। क्रैप क्रैप मैन। या इट्स ट्रू एंड उसकी टीम में वेरीफाई कर दिया। क्रैप मैन, शिट, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल मैन, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। आप भी तो नहीं निकल लोगे 12 घंटे बाद? अरे भाई तोश भाई, मतलब कुछ तो शर्म करें भाई। जिंदा आदमी को मारने की उम्मीदें लगा रहे हो तुम। या ही डाइड अनफॉर्चुनेटली भाई। Just started watching a stream. Yeah, man. That's very sad. Weird, man. Life is weird. Anyway, okay. Let's try to focus on the game, and I'll try to focus on the game. Yeah, Anish took on D4. Okay, that's okay. Let's talk about something else, man, for a couple of minutes. He was working out. Okay. क्या बेशरम आदमी है ये? साइज में बात बेशरम आदमी है भाई। Standings में chat Nikhil bhai, I will let you know the standings right now. Basically, these are the standings in Pool C, as you can probably not see it as of now, but now you should be able to. Rapport and Vidit are tied on 2 each. So basically, अगले 3 गेम में जो ज़्यादा पॉइंट मारेगा, he will qualify from Pool C. The other person will be out. So it's very important for you to try and win this one. It's really, really important. I must stress, it's very important. How? Let's talk about Karyakin. I mean, yeah, that would be good. Good change of thought. Shirov forgot theory. Yeah, I hope so. He forgot theory. I hope so. Karyakin की कोई न्यूज ना दो भाई। Karyakin न्यूज मैं कहता हूँ, मैंने 2 वीडियो बनाई Karyakin पे सेकंड चैनल पे, एंड फनी इनफ दोनों के भाई व्यूज भी ठीक ठाक है। आई वाज लाइक भाई, मैं तो अपनी रात को 12 बजे मैंने Karyakin पे वीडियो रिकॉर्ड करी। मैंने कहा भाई मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं उस बंदे से, आई हैव टू मेक अ वीडियो। मैंने कहा कि यार ये मेरे मन के थॉट्स है, आई डोंट वांट टू लाइक स्प्रेड इट टू टू मेनी पीपल। तो मैंने सेकंड चैनल पे डाला और वो वीडियो वहां भी चल पड़ी। मैं कह रहा हूँ बढ़िया है भाई। नॉट मेनी पीपल लाइक Karyakin. Oh, by the way, Shirov did not play the best move. Shirov went wrong here. What? This is so weird. He took on E4. That is so weird. He's going for a draw. Shirov is going for a draw, chat. He, I think, does not want to play. He's going for a draw. Simple draw he's going for. Crazy. Yeah, it's not a blunder, chat. It's not a blunder, but he's going for a draw, basically. RIP Shane Won, bhai. RIP Shane Won, bhai. Yeah, that was tragic news, bhai. I just heard as I started streaming. Very tragic. RIP Shane Won, bhai. I mean, can Vidi carry on? I don't know, bhai. I don't know. I think it should be kind of drawish. Of course, he will carry on. It's not like he, bhai, they will shake hands in 2 moves. But the chances of any side winning are very low now. Yeah, this is comfortable Vidi now. He can push for sure. If he wants to, he can slowly try to outplay Shirov. But Shirov को outplay करना है ऐसी endgame में, it's very difficult. I hope Vidi knows this, by the way. Vidi cannot draw this. Win is a must. That's not true, Soham bhai. It's better to draw than lose. That's also very important. I think Vidi should play Queen D3. तोश भाई, आप किसकी सुपारी लेके आए हो? मेरे की, वीडी की? लगता है दोनों की सुपारी लेके आए हो आज। भाई स्पोर्ट्स पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे? सेफन भाई मैं खुद सोच रहा हूँ यार, लाइक मतलब बिकॉज ऑफ इतना स्ट्रीमिंग, मेरी खुद की डाइट एंड फिटनेस हैज गॉन सो डाउन द ड्रेन। कल से भाई सुबह जल्दी उठ के भाई मैं रनिंग पे जा रहा हूँ भाई। आई एम नॉट किडिंग अबाउट दिस। शिरोव कौन सी कंट्री से है? शिरोव है यार, आई थिंक लैटविया से, नॉट मिस्टेकन। आई हैव मेट शिरोव, बाय द वे। आई हैव मेट शिरोव। शिरोव ने एक राउंड रॉबिन इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, वहां मैं खेला था। सो आई मेट हिम, आई शोक हिज हैंड। और बड़ा इतना लंबा है यार वो, ही सो टॉल। एंड अच्छा स्पेन से है क्या? या ही प्लेज फॉर स्पेन, बट आई थिंक ही वाज एक्चुअली फ्रॉम लैटविया, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिकॉज आई मेट हिम इन लैटविया, सो या मैं तो कैसे प्राणायाम चालू कर रहा 15 की उम्र में। अरे नाइस। वेट कितना हो गया भाई? मेरा वेट भी बहुत ज्यादा है भाई। इट्स नॉट लाइक
ऐसा नहीं है कि मतलब सुपर ओबीज हूं, बट यार ज्यादा तो है, काफी ज्यादा यार. Can we exchange queens here? Yeah, we have to, man. We have to exchange queens. Because if you play fe6, then suddenly, I can, play knight d2, avoid the queen trade. And then your king is not in the best position. What if Vidit really qualify? If he draws, he will still have chances to qualify. Then all depends on this game. What will happen here? But I don't think Rapport will win this one. I think Fedoseev knows what he's doing and he should at least draw this. So yeah. I think workout is not the problem, but the bad supplements are the issue. Yeah, also, but I think hard tech में तो यार 1000 रीजन होते हैं. 110 से 120 kg नहीं भाई, मेरा 100 किलो से ऊपर वजन नहीं है भाई. भाई नहीं भाई, ये मत करो. इतना भी नहीं है, but it's high भाई, it's high. Shirov has played this before, Vanchuk in 2013. Oh, interesting. अरे thanks for multi-skilled YouTuber भाई, thanks a lot यार. Did you win? What did I have to win? अभिनव भाई ऑनेस्टली उसके आसपास ही है, उससे कम है, बट उसके ज्यादा कम नहीं है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. सो आई थिंक मैं कॉलेज में पूरा भाई ऑलमोस्ट एवरेज निकल आए थे, वैसा फिट होना पड़ेगा. समोसा ज्यादा मत खाओ. अरे यार समोसे नहीं खा रहा भाई. RIP Shane, yeah, Nankishu bhai, yeah, feeling really sad about this. I mean, like I still remember the ball that he put out, वो leg side पे भाई क्या वो, like batsman thought the ball is clearly wide and it bowled him. I was like crazy. Draw भाई, draw नहीं है भाई. अगर draw हो जाएगा तो बस हम 5 मिनट स्ट्रीम एंड कर देंगे, फिर ऐसा नहीं है. Show us your stomach. ये कैसी फैंटेसी से शौर्य भाई. एक मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम भी शौर्य है. I can totally imagine him saying that. Only ये क्या है भाई? Ball of the century. हाँ वैसे ball of the century तो मेरी भी है, but yeah. 69 कर लो weight. Yeah, मेरा lowest weight 69 ही है by the way. मतलब after the age of 18, that is. That's what she said. Okay. Is draw good for Vidit? It's not draw. It's not good, but it's okay. I mean, compromise कर सकते हैं draw के साथ. We can accept a draw मतलब. अरे नंदकिशोर भाई, thanks for super chat भाई 201. Thanks a lot भाई. भाई एक बार नंदकिशोर भाई ओपी इन द चैट हो जाए भाई. एक बार हो जाए भाई चैट. कम ऑन, लेट्स गो भाई. एक बार तो बनता है भाई. लिटरली जब भी स्ट्रीम करता हूँ तब भी सपोर्ट है भाई. क्रेजी. थैंक्स अ लॉट भाई. मैं हूं आपका बेस्ट फ्रेंड शौर्य भाई. नहीं यार, शौर्य रखिया मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं यार. मैं भी शौर्य को बेस्ट फ्रेंड नहीं रखिया यार. हाँ इको बॉल्स VD squeeze incoming. Let's hope so. The fact that VD is thinking, I think he does not know what to do here. That's not a good sign. Although both are possible. But yeah, you will have to think on the board. I just want to confirm कि आपकी समोसा की कंपनी है ना. अरे भाई नहीं यार, मैं आ गया दोस्तों. मनस भी आ गया भाई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डालने के लिए. या मैन मुकुल भाई, RIP यार, RIP Shinwan. It's kind of it's weird because you don't expect people you've admired a lot to just, yeah, it's just kind of sad. Although he also was a controversial figure, but I think still, yeah, I mean he was so good. Like ऐसा नहीं कि मतलब he was so good भाई. आपकी कंपनी नहीं है. अरे भाई राशि चुप. If it played style to textbook, due to which he can't defeat hybrid players who are more dynamic and strong. It isn't actually Vidit's fault here. I think Shirov went for the weird line with knight takes c4, which is kind of very drawish. This is not what white plays. I think Shirov is going for the draw here. But let's see what happens though. How's castle here? Okay, so white just capture your piece and you will castle. Not sure about that one. Yeah, Gokul bhai, that's very sad. That's really sad. Workout kar le. Acha, nice. How is EF3? EF3 would be a mistake, I feel. Because of multiple reasons. But the first of all being that simple bishop takes f7, king takes f7, queen takes f3. Capturing the knight would be completely lost. I think there will be something else here as well. I'm not sure exactly. Yeah, even bishop d5 looks very strong to me. Attacking this pawn, attacking this knight. But I think bishop f7 is more flashy. Yeah, bishop f7. RIP Shenwal 1969 to 2022. Yeah, RIP Shenwal bhai. Which database is free? I don't know bhai kaun sa free hai. By the way, VD capture on e6 now.
रैपोर्ट को हरवा दो भाई, हरवाना ही तो शिरोव को हरवा दो ना यार। ब्लंडर नहीं है भाई, ब्लंडर नहीं है। Gonna pay my tribute to him by taking a 5-wicket haul, playing him in Cricket 07. Yeah भाई। My sequel क्या यार? I was talking once ball of the century. I know अक्षय भाई। Can I be like VD? No भाई, बिल्कुल भी नहीं। VD is very down to earth। आप तो भाई हर किसी को ट्रोल कर रहे हो यार। VD weak king? Not really, Rashi. It's not really weak because the queens are going to get traded off, most likely. Unless white plays knight d2, yeah, you can hold on to the queens that way, but then I just castle and I'm still fine. अच्छा डेटाबेस नेम, अच्छा ओह वो चेस डेटाबेस की बात कर रहा होगा यार ये शायद। फाइंड द ब्यूटी इन रेपिटेशन, ओके नॉट रियली। मुझे पता है भाई, हम भी थोड़े से हमने भी भाई स्कूल में पढ़ाई करी है, कॉलेज पढ़ाई करी है। वो भाई मैं कह रहा था कि इट्स नॉट अ चेस डेटाबेस। साहिब भाई रजिस्टर करो, बोलो क्रिकेट से थोड़ा पैसा चेस में डालने के लिए। भाई देखो चेस का जो नाटक है ना, चेस का ये है कि नाटक, चेस का नाटक, चेस का जो पैसे का चक्कर है ना भाई, वो सारा का सारा डिपेंड करता है बहुत चीजों पे। बट आई थिंक वन ऑफ देम इज आल्सो द प्लेयर्स। सो जितना मतलब प्लेयर्स थोड़े से वो होंगे ना, कूल होंगे, दे आर अप्रोचेबल, दे नो हाउ टू टॉक विद इन पब्लिक, हाउ टू गिव प्रॉपर इंटरव्यूज, आई थिंक उतना गेम पॉपुलर होता है। सो आई थिंक द मोर the shyer the chess players are, the less likely are they will gain sponsorships, less likely the game will promote because of them. So and most chess players are actually shy, so that's a big problem. That's why VD has sponsorships in the hall. Of course he's a genius, so that's why he has some. पहचाना भाई देखकर भाई। Can I be like VD in chess, not in attitude? No भाई, 2700। यो प्रणव भाई क्या हाल है भाई? Do you bowl? Not really. शरल भाई, you can find the field database on chess.com. Go to chess.com opening explorer, आपको वहां मिल जाएगा। Anyway chat, let's check out once Anish Giri's game क्या चल रहा है वहां पे। कुछ खास तो चल नहीं रहा है, ओपनिंग फेज ही है। Yeah, bishop b7, rook c8 and so on. Let's go to the game of Harikrishna who has a 0.03% chance of qualifying for candidates. If Harikrishna qualifies for the candidates from this position, man, I will tear my clothes on stream. जो भी चाहे challenge delete हो जाए, because that will be crazy. It's like, you know, next level उदय चोपड़ा, पूरा मतलब crazy level. Let's go to VD's game. Yeah, Anshul bhai, Shane one passed away, man. That's very tragic. I am also 1700, only 1k difference. Shabash bhai. Only 1k. Why Shirov is thinking this much? Yeah, he's trying to calculate. I think Queen D1 was the main move here, so that's what he might have preferred for. But yeah, I think he might be trying to recalculate whatever he had seen a while back. Sure, Rapport game. Yeah, we'll also focus on that game, of course. That's also very important now. And right now, white is a bit better, but I expect a draw in this game as well. So let's go to the game of video again. Chat, by the way, all is not gloom because I think Anish Giri will obviously qualify from his pool. So we'll always have one Indian in the most likely in the candidates. But regardless, we want VD to qualify. In the previous position, Queen D1, Rook D1, EF3, Bishop G4, FG2. That's not okay. Queen D1, Rook D1, EF3, but EF3 does not work because of Bishop D7 check. And I pick up the knight on c6, attack your rook, so that's pretty much lost. And rook d7 is incoming, so that's not working by, unfortunately. So that's the issue there. Intermediate moves very important. Let's go to the game now in the live position. We want Anish to qualify. VD has no chance. मनोज भाई आप ना मतलब यार थोड़ा थामो भाई, अपने कच्चे बच्चे पकड़ के रखो टाइट, इंतजार करो भाई, कर सकते हैं क्वालिफाई। हो भाई कितना मतलब कदाचित को सपोर्ट, फिर वीडी को डिस, मतलब जिसको सपोर्ट करना है उसको कर नहीं रहे, जिसको डिस करना है उसको सपोर्ट कर रहे भाई। ट्राई करो। व्हाट बेवरेज आर यू हैविंग? व्हाट डू यू थिंक? कॉफी है भाई। अनीश गिरी कानपुर वाले। ये क्या है भाई, अनीश गिरी कानपुर वाले। मिस्टर डॉजी कौन है? ऑलवेज सी ऑन ट्विटर। भाई वो ट्विटर का बॉस है भाई।
कल विदित का क्या हुआ? विदित कल सो गया मस्त यार. टॉक्सिक कीवर्ड्स हर स्पोर्ट में होते हैं. टॉक्सिक नहीं है, आई थिंक उसका लॉजिक थोड़ा उल्टा है. कश्मीरी क्या हुआ? नहीं भाई वो नहीं है. बाय द वे चैट, आज पूरा वीडी गेम पे फोकस करना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम. इफ वीडी लूजेस दिस ही इज ऑलमोस्ट आउट. If he draws this, he has chances, but not that high. If he wins, he has great chances. So let's see what happens. That smile, that damn smile. Hopefully I wish some girls said that Angan bhai, no offense, but Rohan Kirapa hacked. Bhai, Rohan Kirapa kaun hai yaar? Who's Rohan Kirapa now? I've heard this name somewhere, I think. YouTuber hai na koi? Rohan Karyappa. Who the hell is Rohan Karyappa? Let me see. अच्छा, ओ नाइस. अच्छा, उसका इथेरियम की स्ट्रीम चल रही है. ब्यूटी भाई ब्यूटी. रोहन करियप्पा हैक. भाई कैसे हैक कर लेते हैं हर किसी को? हाउ डू दे हैक एवरीबॉडी? लाइक इट्स क्रेजी. वैसे हाउ डू दे हैक एवरीबॉडी? बिटकॉइन की स्ट्रीम चल रही है भाई यहाँ पे. नना दो भाई. बढ़िया है भाई, बढ़िया है. हैक क्रेजी. शेन वॉन्ट डाइड भाई. ट्रू भाई. Can you be like VD? No, bhai, I can't. I mean, chat, it's kind of very tragic. Shane Vaughn की bhai, I mean, I just could not believe it, bhai. Like, मतलब जब stream पे किसी ने मुझे बोला कि ऐसा हो सकता है, I thought like he must be in his 60s, but he's 52. That's just very tragic. What is difference between you and समय? मैं समय से घबराता हूँ, but समय मुझसे नहीं घबराता भाई. I mean like actual time, not समय. Kraken hacked his account. I don't know why Kraken कितना fault है उसमें. Knight g5 played by the way, and now Queen d1 has to be played. There's no other option, and then you take the knight of course. Hey Ashwini, your best kilo rating FIDE 2275. Yeah chat, kind of tragic man. Anil bhai too. Feels like time when Kobe. अरे ये क्या है भाई? चैतन्य भाई क्या लिख रहे हो यार तुम चैट में? क्या हो गया तुम्हें? Talk with Shirov, tell him to blunder. Ashwini, the news gets worse actually because Shane Won died, so that's kind of tragic as well. भाई सुबह कोच और स्ट्रीम करोगे? इस बार भी करेंगे भाई, स्ट्रीम तो करेंगे फॉर श्योर. द ओनली क्वेश्चन इज क्या करेंगे, कब करेंगे, किसके साथ करेंगे, कुछ पता नहीं अभी. शिरो की तारीफ कर दो, ब्लंडर कर देगा. अरे शिरोव तो ब्यूटी प्लेयर है भाई, क्या ही खेलता है लौंडा. मतलब बिशप g5 you can technically play, but then queen h5 check and white gains a slight edge because now you have to play g6, queen g5, bishop g5, and you unnecessarily weakened your last squares for this bishop. Like it will sit on f6 now, so that's why not bishop g5. पहले queen मार लेते हैं. He had a heart attack, Ashwin. Yeah, very tragic. यूक्रेन ओपी भाई, या यूक्रेन ओपी भाई. समोसा गिवे कर किया था भाई, कल किया हमने गिवे. कोई किसी ने रेशो नहीं किया, 40 लोगों ने रेशो किया भाई. हमने कहा भाई समोसे का मतलब ही नहीं है, बाद में करेंगे. Who can be the best opponent Magnus from the candidates? I think it has to be one out of Caruana, Anish, Piruzcha and Vidit. समय बहुत खराब है. समय कब किसका समय रुक जाए यार. भाई अगर वीडी ग्रैंड प्री जीत गया तो व्हाट आर योर चांसेस, व्हाट आर द चांसेस ऑफ चांसेस एंड कैरियर्स फॉर वीडी? आई थिंक इवन इफ ही क्वालिफाइज, आई थिंक हिज चांसेस वुड नॉट बी दैट हाई, बट इट बी अ ग्रेट डील बिकॉज उसको एक्सपीरियंस मिलेगा कैंडिडेट्स खेलने का, एंड दैट्स अ वेरी गुड स्टेप इन यू नो ऑन योर जर्नी टू काइंड ऑफ प्ले द कैंडिडेट्स एंड समडे चैलेंज कार्लसन. दैट्स फॉर श्योर. यो मतलब क्या हाल है यार? I am stuck at 700. How to improve? Check out the foundation course, right? That will really help you, bhai. Or tactics solve karo like crazy. Giri versus Magnus will be epic. Yeah, that will be epic as well, bhai. That will be really epic. No opponent. Magnus best, most unbeatable goat. No, I think he's not unbeatable. Definitely Stockfish can beat him. अरे क्या फिर वो हो ही बहुत पहले, वो तो हो पहले. हाँ वो भी है यार, वो तो है ही पहले, बट ड्रीम कर सकते हैं ना भाई. फॉर एग्जाम्पल या चैट में कौन कौन है जिसने कभी हु हैज नेवर फैंटेसाइज्ड अबाउट बीइंग विद सम सेलिब्रिटी. या हर किसी ने कभी न कभी किया होगा. सो वी कैन आल्सो फैंटेसाइज या अबाउट, और वी कैन फैंटेसाइज अबाउट बीइंग इन द कैंडिडेट्स. या
In fact, that is more realistic rather than our dreams. I saw his last tweet. He tweeted about Rod Marsh passing away. Yeah, exactly. That's the crazy part. I mean, yeah, don't tweet about somebody passing away. That's all I can say. Why? I would say Anish would win World Championship by beating Carlsen. It is possible, but not so easy. By whenever somebody challenges the world champion first time for the World Championship, it's not that easy for them to win because they don't have that experience of handling the pressure. Yo, Arshit bhai, kya haal hai? Arshit bhai, Shane Warne died, yeah. That's kind of tragic, man. That's really sad. Yusupov series review for rated books. Yeah, that's a good. Those are good books, but I'm not sure if they're good for 1100 rated player. That's what has come. Vidit 0.06 eval better. Oh my god, 0.06 better है वो. फिर तो जीत रहा होगा यार. टिक्कू कौन जीत रहा है? जल्दी बोल. अरे यार जानवी रिलैक्स. I mean, ये क्या है भाई? Equal है यार, अभी equal है. How about knight d4 threatening knight c2? But knight d4 is kind of not cutting the bill because you can clearly see first of all e4 is hanging, then queen h5 is my worry, g6 and then queen g4 attacking e6. I don't like this for black because black's king is weaker. So clearly we have to trade queens. We cannot avoid the queen trade. We have to trade queens at all cost. Arjun का डांस देखा? अर्जुन डांस भी करता है क्या? Don't tell me Arjun is like is going to moonwalk now. That's my thing. वो भी छीन लेगा तो भाई फिर क्या बचेगा हमारे पास? Is video better? He's equal, man. He's equal. जानी बहन वीडी ग्रैंड प्री जीत गया और फिर हिकारू थर्ड वाला भी जीत जाए. हाँ, that would be awesome. That would be awesome. Why not castle? Castle because knight e6 is hanging. So I can either take directly or first. Yeah, directly मारना जरूरी है. I think if you take the queen first, then knight takes d8 would defend e6 again. You can moonwalk, of course, bhai. No one turned the ball more than him. True, bhai. I remember. I still can't forget. मैंने वीडियो देखी जहाँ पे वो बैट्समैन ऐसे खड़ा हुआ है कि भाई वो बॉल मतलब लेफ्ट से निकल जाएगी, मतलब चार बाय ना मिल जाए, and suddenly he's bowled. भाई crazy. Castling king side. Yeah, of course king side. Bhai, of course king side. But not on this move, bhai, because e6 is hanging. हाँ, chat. आज अर्जुन वर्सेस दानिया भी है at 12:30 AM. So I don't know कितने लोग इंटरेस्टेड हुए देखने हैं, बट मैं स्ट्रीम तो जरूर करूंगा. VD is tied first along with I think Fedoseev, Rapport right now, so he has to win, of course. Yeah, very weird game. Don't know what Shirov wants. Yeah, even I'm confused because he played a very drawish line and now he's thinking, so not clear. Okay, VD is thinking, of course, but Shirov also thought for a long while. अरे भाई, show us some moves on stream then. Some moves, chess moves की dance moves. एक वीडियो है भाई मेरी मूनवॉक करते हुए, जाके देख लो यार. अर्जुन गेम 12:30 बजे मजा आएगा. हाँ, मजा तो आएगा भाई. और बुलेट है भाई. और पता कैसा है वो बुलेट? कैसा है बेसिकली? दाने नैरोज की भाई. सो बेसिकली 30 minutes bullet. That's it. Timer है. Whoever will score more points wins. Yesterday Roundup defeated Botnik like 8.5, 7.5. So it's very close. 101 inches for Arjun versus Rock match was neck and neck till the end. Yeah, I saw us by 8.5, 7.5 था भाई. I was kind of thinking कि stream खरीदना चाहिए था, close था. But yeah, चलो आज तो करेंगे. What's the problem? Bishop g5 chat. There is queen h5 check and g6, queen g5, bishop f6 looks like, it's better for white because you unnecessarily weaken these dark squares. So we don't want to play g6 when white has a dark square bishop. So that's why I think just taking on d1 makes the most sense here. Yeah, a lot of fun. Queen d5 is not a bad move. I think it's totally possible. But I think again, white will go queen h5. And I'm worried about this move because now I can't castle anymore. g6, queen g4 threatening this pawn. I don't like this, honestly. I don't like this. So let's see. Yeah, I saw Ronak's fist. Arshit bhai, I was like almost scared bhai. कुछ मार ना दे किसी को भाई. खतरनाक fist थे भाई उसके. Chessbase India lied. Why? That's a compliment, honestly, because it's like saying you are Mike Tyson light. Yeah, I mean, of course. Bro, this is very drawish, bro. तो भाई कर लेते ना draw, bro. देखते ना भाई क्या होता है, bro. Iron moving ahead of 1680. What should I study? You have to analyze your own games, Tamne first. Where do the weaknesses lie? Yeah, Chessbase Shane Warne died. Yeah, very tragic.
I meant to compliment. Hey, thanks a lot, भाई. मैं भाई फिर. Yeah, भाई, exactly. Are you really drinking something from that mug? नहीं भाई, acting कर रहा है यार. This is my audition for Karan Johar movies. Coffee with Karan के लिए audition है. Coffee with Karan भाई. Okay, let's not go to Tyson then. Let's go to some other sports person who is not convicted of felony. Who else is there? Maybe like Virat Kohli. Let's go to Virat Kohli now. I'll take that back. मैं भूल गया था. I ain't stopping to move. सारे games roundup. Let's do a roundup, bhai. Let's do a roundup. So chat. Vidit Gujrathi is playing right now. Archit, bhai, thanks a lot, bhai. अरे 1001 rupees, bhai. Thanks a lot. भाई क्रेजी भाई डेली भाई जब भी मैं कुछ लंबी स्ट्रीम का क्रेजी सपोर्ट थैंक्स लॉट भाई अर्शित भाई ओपन द चैट भाई पर हो जाए चैट थैंक्स लॉट अर्शित भाई यार थैंक्स लॉट भाई रैपिड मैच प्लीज क्लोज कंपटीशन या रैपिड मैच विल फॉलो एज वेल आओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई यार पोजीशन दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हाइट इज अ pawn down but he has just enough compensation to capture this pawn so I think it might be a draw chat and Vidi if he wins he will take the sole lead again so we'll see a draw in this position. Thanks a lot Chit bhai yaar thanks a lot Tikku net worth number of streams equal to 1000 कुछ भी यार भाई यार तुझे 71st पहले सेंचुरी मारेगा है Vidi पहले टालासी जीतेगा अरे यार भाई स्टार्टिंग में मुझे आप फॉरनर लग रहे थे अरे क्या बात कर रहे हो मैं फॉरनर लग रहा हूँ क्या रियली इतना गोरा तो नहीं यार मैं क्या बात कर रहे हो मतलब if I go to some other country and say कि you know कम उसको तू तब पहले तूने कौन है पाना फ्रांस से फ्रेंच बोलूंगा तो चल जाएगा क्या can I impersonate somebody हाय जीएम टिकू हेलो भाई महानता जी क्या हाल है कितने महान है आप वेलकम he took on g5 he played bishop g5 I'm surprised by this chat I'm really surprised by this is he trying to unnecessarily complicate matters he played g6 what why did he play this but this looks risky this looks very risky to me now does he want to castle but then why to save his queen I don't know man this is not the way to go fight for a win it can only end in are you kidding me really Vidi is playing with fire why is playing with fire like he could have just taken the equal position there but this is very risky bhai sure rapid championship that's tomorrow right tomorrow is Saturday कल है वो पढ़ने लग रहे हैं उसमें खुश नहीं भाई I can impersonate somebody how did your hair turn grey बस भाई genetics है भाई थोड़ा ज्यादा हो गया भाई ज्यादा करना चाहिए लाइफ में यार chat honestly now queen g4 and I think white is better because white can play bishop g5 bishop h6 and looks better for white yeah man Sankar bhai yeah I totally feel you that's kind of tragic Vidi going all out he's aiming for a win then a draw yeah but I hope so he can find out that he can find a win here because honestly if let's say white wants to draw he can simply play a random move yeah I mean bishop e3 like how will or white can also take on d8 to be honest I don't know how Vidi will win that one either so yeah not sure how this is actually going for a win दाढ़ी आती है रखना पसंद नहीं है यार जैसा मैं एक्सपेरिमेंट ऋषभ पंत 96 ये क्या है भाई आज दाल खिचड़ी पनीर टिक्का मसाला गार्लिक नान और पहाड़ी चिकन ओ माय गॉड आज लगता है वो डेट घर पे आ गया नाइस Microsoft banned Windows and video games made by Xbox in Russia. Don't you think it's so unfair of West over these companies? Gamer boy, it's not about West influence, it's about human life. As simple as that. I don't know if banning video games is the correct way or not. All I know is what's happening is wrong. Paneer with tikku masala. I don't know if you'll want to have it though. Really insane prep plus 0.5 for black on depth 57. भाई ये depth 57 कहाँ देख ली भाई तुमने? Where did you see depth 57? इतना depth में कहाँ चले गए भाई? Big Bazaar sold. Hello टिकिया. What? टिकिया? भाई ये टिकिया कौन है भाई? लीचेस में दिखा रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? -0.5? I don't think so भाई. I really doubt that. That is not happening. Not really chat. Not possible. I mean, that is literally not possible. Let me confirm this. ये रितेश ने मजा ले रहा है मुझे लग रहा है. Let me confirm this chat. What Ritesh bhai is saying.
कहाँ भाई, दिखा तो रहा है अभी तो, लेकिन डेप्थ 35 है, हो जान दो भाई डेप्थ को ऊपर थोड़ा। टिकिया यू, अरे अच्छा चैनल का नाम टिकिया रख दूं मैं, क्या बोलते हो? आई एम बैक एडवाइजर, अरे वेलकम वेलकम। अच्छा 1-0 था क्या? अरे यार ये तो, इसमें क्या 1-0 भाई, इवैल्यूएशन में खेल रहे हो। ऑफ कोर्स आई नो दिस इज नॉट -1, दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। माय लीला इज सेइंग -0.7 एट डेप्थ 60। ये आप लीला किसको बुला रहे हो भाई, अपनी लीला को? कौन है आपकी लीला? व्हाट डू यू थिंक ऑफ कश्मीर फाइल्स? आई हैव नॉट सीन इट येट। टिक्कू की टिकिया रखो। पेड प्रमोशन क्यों नहीं करते आप भाई? कोई पे करने वाला भी तो होना चाहिए ना इसके लिए। अनीश गेम, लेट्स हैव अ लुक भाई। ओ अभी तो ओपनिंग ही है चैट, आई थिंक स्टिल द ओपनिंग। वी सॉ इट टिल b5, white played a for Anish took. Yeah, going to be very drawish because एक pawn है queen side पे, they will exchange these pawns, similar structure. So I predict an easy draw in the Anish game. It's going to be a draw for sure. White is trying to push of course, but it will be a draw 99.9%. Harikrishna's game is very complicated. He's black, but I think it does not really matter. He needs 3-on-3 to win or qualify, which is not going to happen here. Only Vidit has a chance, and he has gone for a risky setup here. Maybe he's trying to win here, but that's very risky. Is it must-win situation Vidit today? No, Ashpa, it's not. Even a draw would be, kind of enough to kind of hold on. But it also depends on this game, what happens here. But to be honest, I think a draw will happen in this game, Fedoseev against Rapport, because Fedoseev is a pawn down, but he will take this pawn back, and it will be a dead draw because symmetrical structure. चैट में से कितने लोगों को पता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कितने को नहीं पता भाई? ये से नो लिखो। ड्यूड, मैं बहुत बार बोलता हूँ व्हाट डज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से बोलता हूँ, किसी को चैट को मतलब ही पता है कि नहीं पता है? आई जस्ट वांट टू मेक श्योर। मतलब इन चेस टर्म्स में क्या मतलब है इसका? या सो बेसिकली चैट, इट बेसिकली मींस कि मतलब जो पॉन स्ट्रक्चर है ना, सारे पॉन्स एक दूसरे के सामने है, देयर इज नो इम्बैलेंस। जैसे ये पॉन यहाँ होता तो देयर इज एन इम्बैलेंस बिकॉज पॉन थोड़े से हटके, ये पॉन यहाँ होता तो व्हाइट हैज एक्स्ट्रा पॉन ऑन द क्वीन साइड, ब्लैक हैज एक्स्ट्रा पॉन ऑन द किंग साइड, सो ऑन। सो ये वंस दिस पॉन इज कैप्चर्ड तो ये पूरा सिमेट्रिकल पॉन स्ट्रक्चर है, एंड मटेरियल भी टेक्निकली टू बिशप नाइट है, सो कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, and that's why it's going to be a draw here, I expect. So Fedoseev will not blunder this. It will be a draw for sure. So I think the only game that remains, if that will be a draw, that means Rapport goes to 2.5 out of 4. If Vidit draws, he matches Rapport with 2.5. If he wins, he goes half a point ahead, and if he loses, then he's half a point behind. भाई chat is pro. नहीं यार अनुज भाई, the thing is कि मतलब chess के terms में I just wanted to make sure कि मतलब people like they kind of make, like I just want to make sure, yeah. Leela versus Alpha Zero, which is best? Alpha Zero is probably better, but we don't have access to it. Slav Exchange, yeah, that's a good example. Shane 1 RIP, yeah, Hardik bhai, very sad news. This looks like either Vidit playing is immortal or this will backfire badly. Yeah, that's actually true, Divyam bhai, but still I think draw is the most likely result. But yeah, white has a good move, Queen G4, trying to avoid the queen trade. So chat, question for you. Let's say white goes queen g4, assume करते हैं, ठीक है? So white के पास immediately attacking pieces कितने हैं? Options are 1 only the queen, या फिर 2 या 3. कितने attacking pieces है white के पास? बताओ chat. How many attacking pieces does white have? Let's say he goes queen g4 या queen g3 या whatever it is. Yeah, Shinwon died from what we heard. That's very tragic. Yeah, so most people are saying 2, but there's also the h pawn actually, white. So there are actually 3. So I think white has 3 attacking pieces. Of course, he could have more later on, but I think after, let's say, queen somewhere, I think he will also have the h pawn as an attack. So also the bishop, so it's technically 3, which you can kind of play in this game. So that's why I was a bit surprised when Vidit kind of went for this. Hopefully, he has seen this at home, yeah? If you've seen this at home, then it makes sense to play this. If you have not seen it, then probably not. Yeah, 3. Wait, no, 0. Yeah, it's right now 0, but number of pieces will come into the attack immediately, yeah? So bishop in one move, clearly, and the pawn also in one move. Technically 2 pawns, but yeah, and the queen is already into the attacks. h5 will be brutal, exactly. And this pawn will become really weak, and the only option black has to kind of capture on e5.
But once you capture an e5, that also opens up this bishop again. Even b3, bishop b2 will be very strong then. So yeah, black is kind of stuck. Right pawn is not a piece. Yeah, but pawn is a piece. Piece is a pawn. No, every pawn is a piece, but not every piece is a pawn. Bhai, बड़े शब्द. Rook d1 भी तो है. हाँ, rook d1 भी है, but it will take more time because it cannot attack the king. कहाँ जाओगे यार? Where do you go? You have to play rook e1, rook e3, rook g3. 3 move लगेंगे. That's too far. What's the chance he accepts queen trade? I think Shirov is not in the mood to fight. He definitely went for a very drawing variation, but unfortunately now that Vidit has castled, it's kind of very human to simply avoid it. Like even I like endgames and avoiding the queen trade, but I would totally consider queen g4, queen g3 and other moves because this really looks good for white. Yeah, look at this position. I mean, the engine says queen g4. Let's look at queen g3 also because this is also interesting. The pawn is attacked, and now knight d4 for black is an interesting idea. And yeah, so black has some counterplay here. But white also has a lot of play, so man, this will be very difficult to watch. Hopefully, Vidit has seen this at home. That's very important. Who would you play as white or black? I would love to play white, bhai. I would simply, not even go like, even if just play b3 here, I think it's perfectly fine. The bishop can go to b2 or a3, and I am not risking anything here as white because I have the better minor piece clearly. But again, if the queens are traded off, the things can change. So let's not put Vidit out of the game yet. Let's see. For example, let's say queen trade ho gaya, the bishop goes to e3, we can put the knight on d5, play c5, c4. There are some chances of Vidit, of course, look at game mein, but yeah, win ke chances bahut kam hai. And Vidit could have avoided all this by taking on d1, but he did not take on d1 and played bishop g5 and went for this line. Let's see what happens, chat. Who will be the next world champion from India? That's the $1 million question. Well, not $1 million, probably like a $10,000 question. But I think it has to be one out of Vidit, Nihal or Arjun. I think in तीनों में से एक होने के chances बहुत ज़्यादा हैं. I am nobody to decide this. I mean, if Ronak or Gukesh is watching this, I'm really sorry, bhai. Just expressing my opinion. But it could be anybody. There are so many youngsters. इतने सारे हैं कि भाई मैं याद भी नाम ना रख पाऊँ सबके. But they do get $1 million. Yeah, they do. But it's not the कौन बंदा है वो नहीं है, वो बंदा कर पाएगा कि नहीं. प्रग ये देखो, exactly my point. प्रग. So ये इतने सारे youngsters है कि भाई नाम याद रखने पे ही cancel हो जाऊंगा मैं literally. That's why it could be anybody. Divya could also be the one, of course, but she will be in the female world championship, of course. Where is Nihal these days? He was in France, but he's playing in France as of now, but I don't know where he is now. हेलो साहिल भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई. यो आयुष भाई, क्या हाल है? हाउ आर टिकू? आई एम जीएम ब्रो. भाई ये क्या भाई? आई एम जीएम ब्रो. ये क्या है? Anyway, chat, let's refresh this once. We'll focus on the Hari game as well, chat, but I think honestly Hari का chance हमने देखा is 0.03%, so it's kind of I think Hari has a 0.03% extra chance than anybody in the chart of qualifying. So if he pulls it off, it will be the biggest historical achievement in the past decade if he achieves that, but very unlikely. But yeah, he's playing against Vitiguov as black here, and Vitiguov is, of course, has a normal position. I think black could try for d5 at the correct moment. Right now, queen d7 feels logical to connect your rooks. And black does have a weakness on a6, but yeah, it's pretty much even Stevens as of now. And in the Anish Giri game, who is almost qualified, oh, that's interesting. So he took on d5. I thought he would not, but he took on d5, and now ed5 played by Tabatabaei, and now probably a5 looks very logical. But let's see. Let's go to the Vidit game. Rooting for Harika as future world champion for great potential. True. Of course, Harika, Hampi, both. Sahil to be next world champion. कुछ भी. भाई आओ रशिया चलें. भाई क्यों भाई, ऐसा क्या इमरजेंसी है भाई रशिया जाने की? आई थिंक फ्लाइट्स वैसे ही बंद है रशिया की. आई थिंक देखते क्या होता है. Anish Giri is playing amazing chess. He scored 5 draws in 3 games. Nice. Yeah, bhai, that is true. अरे चैत्री भाई, thanks a lot for the 100 rupees भाई. Thanks a lot. 101 भाई. हर कोई शगुन के साथ भेज रहा है भाई. Thanks a lot यार. Thanks a lot. Thanks a lot भाई. If you were the chess pieces, what would you like to be? I guess the king. Because I can simply relax and watch Netflix for a long while.
until you know the other pieces fight it out. लास्ट में निकलना पड़ेगा मुझे, सब लोग फाइट करके निकलेंगे। होगा क्या सेंटर में जाने के D5 पे चलते हैं। So I'll tell you what I would be like a king, यार इमेजिन करो। मैं यहाँ बैठा हूँगा भाई, चिल कर रहा हूँगा, मेरी रानी मेरे लिए फाइट करेगी, मेरे रुक मेरे लिए फाइट करेंगे, नाइट मेरे लिए फाइट करेंगे। सो लेट मी स्ट्रीम फ्रॉम हियर टुडे चैट। मैं यहीं से स्ट्रीम करूंगा। आई एम वीडीज किंग। लेट्स गो चैट। आज वीडी को डिफेंड करेंगे भाई। हाँ क्या हाल है भाई चैट? अरे भी शेनवान, या मैन दैट्स सैड न्यूज। हाँ बस वीडियो किंग ना हो, क्यों भाई? आपका वर्ल्ड चैंपियन बनने का ड्रीम नहीं था क्या भाई? हर किसी का ड्रीम होता है यार, बट आई थिंक वर्ल्ड चैंपियन एक ही बनता है भाई। वो ड्रीम तो भाई लिटरली वर्ल्ड नंबर 2 भी सोच रहा है। Would you bet your money on as Magnus opponent? Not really. Hello साहिल भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया दर्श भाई, तुम बताओ। This is a very good idea. Yeah, it's a good idea भाई, it's a very good idea. I think पूरा सपोर्ट बीडी किंग के लिए भाई। किंग से किंग को चेक दो ना। कॉपी पेस्ट किंग के वेट, अरे नहीं अरे हाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं भाई। दैट्स अ गुड सजेशन। दैट इज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड। यहाँ करते हैं, रुको भाई पहले अपने को बड़ा करते हैं, फिर करते हैं कॉपी और पेस्ट। हाँ हमें गायब होने की जरूरत नहीं है चैट। दैट्स द ब्यूटी। मेरे से दो है भाई। मेरे जुड़वा भाई, ओ जुड़वा भाई आ जा यार। हाँ आ गया भाई, आ गया जुड़वा भाई आ गया। सो नाउ वी कैन प्लेस हिम हियर। दैट्स ऑसम, दैट लुक्स रियली कूल। चलो भाई चैट, आज वीडियो किंग को भाई खुद डिफेंड करेंगे हम। लेट्स गो। यो मनीष भाई क्या हाल है? Was it the basic valuation of this position long term? Is it clear draw? Honestly, it should be a draw long term, because the position is very simplistic, and top level pe I think people can kind of figure it out how to draw this. But yeah, white has a very strong minor piece in terms of the bishop. But yeah, I mean VD should be able to draw this, but it depends on what white plays. If white plays queen g4, the game goes on. I am Sahil भाई, अब एकदम क्रिश्चियन बटरफ्लाई लग रही हो। ये क्या है भाई? क्रिश्चियन ग्रे बोलते भाई, कुछ फील आती भाई। भाई ऐसे कर, पीस के लिए कर दो, आंख खराब हो जाएगी। अरे नहीं इमेजिन करो मैं यहाँ पे एक पे कस्पारों की फोटो लगा दूं रुक पे, यहाँ कस्पारों की फोटो, यहाँ पे कार्लसन की फोटो, यहाँ पे आनंद सर की फोटो, यहाँ पे भाई किसी की फोटो, कितना मजा आ जाएगा भाई। वो छोटा टिकू क्या कर रहा है नीचे? अरे भाई किंग को सपोर्ट कर रहा है भाई। Put Dubov on White's king. अरे नहीं यार। अरे हाँ, Dubov on White's king, good session. VD is 27, his age rating is 27. So that's cool, no? When his age is 29, he'll be 29. हम VD के किंग नहीं है भाई, we are trying to defend this king. हम वहां पे डिफेंस के लिए बैठे भाई। अगर किसी को VD के किंग तक पहुंचना है तो हमारे ऊपर से चल के जाना होगा भाई। जीतेंगे हम। छोटा टिक्कू भी आराम कर रहा है। ये क्या भाई? अर्जुन का नेक्स्ट राउंड कौन सा है? आज शाम को भाई बुलेट चैंपियनशिप अगेंस्ट डैनियल नाड्सकी हम स्ट्रीम करेंगे भाई। हुल्टिंग सर को सलाम ठोकना है। ये क्या है भाई? आप किंग तो हो गए, बट आपसे कोई मेट ना। अरे नहीं हाँ भाई, H2 पे कराकिन में लगाओ, वीडियो फटाफट मेट कर देगा। नहीं यार। हाँ अनीश इनैक्यूरेसी मूव कर दिया, क्या बात कर रहे हो तुम? अनीश भी इनैक्यूरेसी करता है क्या? Not really, ठीक तो है भाई। क्या है? Bishop g5, takes, all looks good, yeah. Knight e4, then queen e5 looks pretty awesome. You can go d6, develop the bishop next. So looks pretty okay for me, at least from my point of view. The only question is what will happen here now. How can chess be solved? If engines become 100x stronger, maybe then. Just heard of Shane Wan. Yeah man, that's very tragic. That's really tragic. Favorite female pop star? I don't know man. There are a lot whom I admire, but not really somebody I'm crazed about, so not really sure. अनीश के भी किंग बन गए? अरे हाँ भाई, हम तो हर किसी के किंग बन गए भाई। हरिकृष्णा के भी किंग बन गए। अनीश के भी किंग बन गए भाई। हर किसी के किंग को डिफेंड कर रहा हूँ भाई। आज तो मैंने अपने सर पे वो मोल लिया भाई कि किंग को डिफेंड करना। आज तो भाई इंपॉर्टेंट दिन है। 1-0, अच्छा। Checkers is solved, right? Yeah, bhai, it's solved. Can Midi move rook to next to queen? Yeah, but what's the point of playing a move like rook e8 or rook c8? It makes no sense. Both are closed files.
I think this rook needs to be on f8 and this rook needs to be on d8. So I think those are the squares, or at least this rook on d8. So I don't think c8 and e8 are the squares to put the rooks on. छोटा टिक्कू सो रहा है. VD losing? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं यार. Just sort of Shinwan, yeah man, that's tragic man. Reporter, आयन टिक्कू क्या करता है? GM टिक्कू का किंग बनता हो? ऐसा कुछ नहीं यार. किंग किसी के भी बनो, लेकिन यू विल ऑलवेज स्टे माय क्वीन. अरे वाह वाह, ये क्या नियम भाई, पहली बार देखा कुछ चैट में यार. आप अगर डिफेंस करोगे तो VD का डिफेंस मिनिस्टर जाइंस फर्स्ट. भाई देखो, डिफेंस मिनिस्टर की तो बात ही मत करो भाई. डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का जो टाइटल था भाई, पूरा का पूरा टेंट हो चुका है. समय स्ट्रीमिंग, रियली क्या बात कर रहे हो तुम? ओहो नाइस, समय स्ट्रीमिंग भाई. भाई चेस में कभी कभी लोग अनऑर्थोडॉक्स चेस खेलते हैं, जैसे SCG4. हाउ टू काउंटर दैट? सेंटर में खेलना. इफ समबडी इज प्लेइंग चेस ऑन द साइड ऑफ द बोर्ड, तो हम सेंटर में खेलेंगे भाई. जस्ट ओके. अरे मतलब सॉल्व कैसे मूव्स डिफाइन हो जाएंगे जीतने के लिए? एग्जैक्टली भाई, यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू प्लेस व्हाइट टू विन द गेम, और इट विल बी लाइक यू नो फोर्स ड्रॉ फॉर ब्लैक. तो ब्लैक वाले रख सकते हैं फिर. रेड समय कुछ भी. रुक f5 एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाइट टू प्ले. पहले व्हाइट को तो खेलने दो भाई. छोटा टिक्कू कट ना जाए भाई. नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा. आज VD जीतेगा भाई. थैंक यू फॉर टेलिंग. ठीक है कोई बात नहीं भाई. भाई तुम्हारी क्रश की फोटो क्वीन पे डाल दो यार. पूरा यहाँ पे हमने सर्कस नहीं बनाना भाई. खाली मैं इनफ हूँ, खाली मैं इनफ हूँ. If VD's move, then now who is winning? If VD move होती तब भी I think equally है. Minister of acting like a yeah, I can neither confirm nor deny that statement. Yeah, by the way, chat, Queen G4 played by White, and now Shirov is not trading queens. एक मौका था VD के पास, ने खो दिया, and now Queen takes E6 will be an issue. Shane Won died due to heart attack. I know Tampa भाई, that's really unfortunate. One live stream से कितना भाई पैसा? I don't know man, because YouTube से it's all depends on super chat, so I don't know भाई how to answer that. क्राइम ट्वीट कर चाहता है कि पुतिन उसे मिनिस्टर डिफेंस बना दे. यार देखो, उसको पॉलिटिक्स में करियर करना है तो भाई जाके बनाए भाई. ही इज टोटली वेलकम देयर. समय रेड भाई, समय स्ट्रीमिंग, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ रेड देयर. वाचिंग इंस्टेंटली डाउन. अरे वाचिंग हाथ का मेल है रे, मतलब वाचिंग सेशन लेना चाहिए भाई. ऐसे हाथ का मेल नहीं है, बट स्टिल. By the way, chat, Queen G4 played now, and now VD has to think what to do. Will he play Queen D5, try to defend both these pawns? Will he play something else? I mean, it looks not so easy for VD now. White is pushing. Knight takes E5 would not be straight, I feel, because Knight takes E5 के बाद there is Queen takes E6 check, and then you have to play Knight F7 and Queen takes E4, and White is basically a pawn up, and with the stronger minor piece. VD ने ऐसा क्यों किया? I do not know भाई. I think Queen D5 is the only move for black here probably. कोई move मिल भी नहीं रही. Oh my god, this is like worse than I imagined. This is worse than I imagined, chat. This is worse than I imagined भाई. आज पाकिस्तान क्या खेल है? पाकिस्तान का क्या है भाई? Rook C4. I mean Rook F5. Yeah, but Queen takes C4 man. This does not look easy. Does not look easy. Which top players do you think have already passed their peaks and will never almost become world championship? I think Grishchuk is one of them surely. Grishchuk के अलावा इस tournament में से I think we can speak the same of Shirov for example, Andreikin for example, Shankland for example. But I mean I'm nobody judge I think, because in the end anybody could come back. But yeah, I think world championship terms में in their lifetimes I think only Caruana, maybe like you know. Firuzcha, then you have maybe Nepo still has a chance, maybe he still has a chance, but yeah, matlab most people cannot really defeat Carlsen. That's a simple fact. So अपने पीक पे है या नहीं does not matter. They have to defeat Carlsen, so that becomes an issue there. उनका पीक भी enough है Carlsen को हराने के लिए. That's the problem. Ivanchuk bro, Ivanchuk always भाई. Ivanchuk का I think if there's one person on the planet who can consistently defeat Carlsen is Ivanchuk. If Knight E5, then Queen E6. First of all, I win back the pawn. Then Knight is attacked, so you have to play Knight F7, and now Queen takes E4. And Black has 5 pawns, and White has 6. And he has a stronger minor piece, so White is almost winning here. So that's why VD played the move Queen D5, only move by the way.
but still white does feel I feel white is clearly better. And if white finds the best moves, like for example bishop h6 and so on, VD might struggle here, man. Okay Champ TV, that's very sad. Views से कुछ मिलता नहीं, views से मिलता है भाई, but it's almost zero भाई views से. It's like I think 5000 व्यू का it's 100 rupees. तुम खुद लगा लो. Every piece of white eyeing to make you, बच के रहना GM टिक्कू भाई. अरे बचेंगे भाई, कोई पीस हमें छू नहीं सकता यार. I think I should remove myself from here. हटा दूं क्या? ऐसा ना हो कि भाई ऐसा ना हो कि चलो थोड़ी देर रखते भाई वीडियो किंग के पास. Shirov played bishop h6 immediately, chat, and now VD has to think, does he take the pawn? Does he play rook f8? Does he play rook f5? So many options, and rook a d1 is incoming. फालतू में पंगे लिए VD ने भाई, अच्छा खासा ड्रॉ मिल रहा था भाई, ले ड्रॉ, फालतू में टफ फाइट के लिए गया है. नाउ ही स्ट्रगलिंग नाउ. आई होप ही डज नॉट लूज दिस. अगर हार गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. लेट्स गो टू Rapport Fedoseev game. Yeah, this looks like a draw to me. This is most likely a draw. Let's go to this game again. RIP Shenwan by 2. When I go to a okay, भाई कितना okay, भाई इतने controversial statements. कभी VD इतना गॉड लेवल खेलता है, फिर नेक्स्ट मैच में क्या हो जाता है. YKNZ में भी ऐसा हुआ था. That is true. I think that happens to many players. Once you lose one game, you start losing more than one. But I think इस गेम में तो यार it was kind of unnecessary because बहुत simple solution था Queen D1. But I don't know exactly क्या हुआ. Maybe he was trying to win. But as long as he can find the next like 5 good moves, I think he'll be absolutely fine. But अगले 5 move बहुत important है. Yo Himash भाई, give update as this game भाई, update भाई. बस ये VD under slight pressure. Anish Giri is of course playing as black against Tabatabaei. He will of course most likely hold a draw here. And then Harikrishna is of course as well. He's also black as well, but he has almost no chance to qualify. So I think Vidit की chance ही है. So let's focus on this game. है क्या कर रहा हूँ मैं? VD losing, not really, not losing, but worse for sure. टिक्कू भाई तीखा कम डालना भैया. अरे तीखा कम डालेंगे रुचि, डोंट वरी. वैसे आई डू लाइक स्पाइसी थिंग्स. 2 टिक्कू क्यों है भाई? वो छोटा टिक्कू है भाई. टिक्की में टीका. अरे हरिकृष्ण चांसेस आर नो. ही हैज अ 0.03% चांस. भाई हमने वो चेस बाय नंबर्स में देखा स्ट्रिप पे. 0.03% chance, and that basically starts with winning the next 3 games. So it's almost impossible. Net name, little Tikku, exactly. Why Tikku bhai is on the board on Black King? Because he's trying to defend the king, bhai. Is it just really, what is the best move here, bhai? Yeah, there is a chance for sure. I think one move could be simply rook f8. One is to take on 5, try to attack the queen so bishop cannot take the rook. So white will play queen h4, try to prepare some attack here, and then you play rook f d8, and white will play queen f6. Then you play rook d7, preventing mate, and then the game goes on. You threaten knight g4, so white goes h3, and now knight to c6, preparing queen to f5 or queen to e5, and VD is fine in this variation, and I think this is already equal, but he has to find these 4-5 moves here, so hopefully he can find them. Anik bhai, thanks for the kind words. I really doubt if that's true, but thanks a lot, bhai. That little Tikku is distracting me. Oh my god, Champ TV. What does that say about you? Nice. I am eating अरे ये क्या भाई? ये RIP शेनवान भाई से भाई. कल तो दिल ही टूट गया VD को हारते हुए देख के भाई. कल अरे टूट तो गया यार भाई. COB का ऑप्शन लाइव वेन्यू में होगा लाइक IPL. क्या बात कर रहे हो? सही में क्या बात कर रहे हो तुम? कहां पे होगा यार ऑप्शन उसका? Anish is not losing by, he's equal. भाई शायद आजकल प्रॉपनेट खेल रहे हैं, कभी आप भी आ जाओ भाई. कोई बुलाएगा तो मैं खेलूंगा यार. कोई बुलाता ही नहीं है भाई. हम इंतजार कर करके रोक दिए भाई. पोस्टपोन टू 12th, set it live. Oh, तो 12th को पोस्टपोन कर लिया क्या? इंटरेस्टिंग. Nice. That's nice. I think they're planning it for CSL as well. That's why they might have postponed it. ताकि वो CSL में आगे जाके कर सके. Can VD take that center pawn? VD can. He can and he should take this pawn, I feel. If he plays something like, rook f8, then, rook a d1 moves become very strong. Also queen h4 ideas. So I think he should take this pawn. Ray Samay, he is live. Ruchi, come on. I mean, just keep watching
20,000 होती है उसको, हम क्या रेड करेंगे भाई, हम कौन होते रेड करने वाले? Is VD winning as I came now? No, he's not winning by. He has an equal position right now. And to be honest, I think if I was VD, I would be a little bit worried because I don't like this bishop on h6. मेरे king मुझे like मैं खुद वहां बैठा हूँ, मुझे nervousness हो रही है, मेरे को bishop मेरे पास दिख रहा है, so I don't like it at all. But hopefully he will find a solution to this. And auction they thought will be on Zoom, but they got a brand and it will be in person. Tanya Sagar hosting, and all teams will come and bid. Oh, that is so cool, bhai, because I think they're preparing for CSL 2 as well, and also the Indian chess league, because वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कुछ. So it might be fun to watch this. It's like a test version, yeah. No, COB में होगा ऐसा, and they will also test the format for CSL. So कल को CSL में भी हो जाए, so that way they already have a precedent, yeah. फर्स्ट टाइम करने में कुछ गलतियां हो सकती है ना, इसलिए नॉट क्वीन टेक c5 because queen takes c5 then bishop takes f8 and white wins in exchange. पहले knight takes c5, queen h4 and then rook moves. तब तो निखिल कामत सबसे महंगा बिकेगा भाई, निखिल कामत बिकेगा नहीं भाई। उस पे बैन लग चुका है भाई, वो बंदा बिक नहीं सकता भाई, वो गलत जगह बिक गया ऑलरेडी। गैरी आ रहा है समय के साथ, अरे नाइस। Who is that Sigma King? That is me भाई। मैं विली की किंग की पूरी जान लेके डिफेंड कर रहा हूं भाई, पूरा का पूरा जान लगा दिया भाई अब, क्योंकि ये बिशप मेरी तरफ, मेरे को अटैक करेगा, तू है मेरे को अटैक करेगा, अब छोड़ेंगे नहीं भाई, तू देख तेरा। I used to dislike your channel a couple of months back. ऐसा क्या हो गया भाई चैनल पे डिसलाइक के लिए? लेट मी नो, कुछ आइडिया लग जाए तो। लव योर कमेंट्री, थैंक्स अ लॉट भाई। Lil lag, it's not Lil lag bhai, it's Lil Tiku, very important. These super GM know all the moves, they can't just tell us upcoming 5 moves he will be playing. अरे भाई ये क्या है? Rook f5 then queen takes e5. Yeah, if you play rook f5, unfortunately you do attack this pawn, but then white has, you know, rook a d1 or rook a d1 looks strong as well. Queen takes e5. And now he has the d file, he has the weak king, so I think I personally would not be comfortable sitting on g8 in this position when my pieces are kind of, you know, weird. e4 is anyway weak, so it will be lost. समय आपकी वॉचिंग खा रहा है, ऐसा नहीं होता यार, it doesn't matter. VD ग्रिश्चुक जैसा ड्रॉ ले लेता, या I don't know why he did not go for the equal variation भाई। COB क्या है, क्या बात कर रहे हो? एक तरह से समय को रेड करने को बोल रहे हैं, आपको COB नहीं पता क्या है? Oh my god, Ruchi. COB is obviously by chess on board. भाई slightly bad, बोलो worse, तुमके डर लग रहा है। देखो, he is worse by, unfortunately he is worse, and the only way to kind of try to equalize immediately is knight takes e5, and now he's thinking a lot. So let's see what happens. Let's go to the game of Harikrishna for a second. Yeah, this is a dead draw, man. This is a dead draw. No way anybody's winning this. Black has more space in the center. White has one weakness on a6, so it should be pretty much balanced. And in the terms of Tabatabaei against Anish Giri, Tabatabaei trying to push with some tactics, but some pseudo attacking moves, but I think there's no chance here, and it will also end in a draw. So I think आज बहुत draw होने वाले हैं. But one important game is Fedoseev against Rapport, because it decides what will happen in VD's group. So I think this might also end in a draw. If this ends in a draw, then VD draws is very important. VD cannot afford to lose. So let's see what happens, chat. Did you see Ashwarya vlog? कौन ऐश्वर्या राय की बात कर रहे हो क्या? What super GMs are you more comfortable with white? Yeah, I think so. Black's position is a bit shaky for sure, because again, all these weak dark squares. Which tournament is समय playing? भाई समय के टूर्नामेंट है। पहले आएगा भाई बुलेट इनविटेशनल, फिर आएगा भाई COB, फिर भाई उसने वर्ल्ड चैंपियन भी तो बनना है, WGM टाइटल लेना क्या? CSL आप खेलोगे भाई, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं, बट आई थिंक यू नेवर नो, कराखन तो खेलेगा नहीं इस साल, क्या पता एक्सपर्ट खाली हो जाए। ऐश्वर्या मोहन राज, ओके, आई थोड़ा ऐश्वर्या राय ने डाला यार, मैंने कहा ये कैसे हो गया भाई। बॉटल लेफ्ट में फिर से क्यों आ रहे हो आयुष भाई? आज मैंने डिसाइड किया, आज मैं वितिक को खुद डिफेंड करूंगा भाई, बिकॉज ही नीड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ द बिशप ऑन h6, सो आई एम डिफेंडिंग हिम माई सेल्फ ऑल्सो, पूरा एफर्ट के साथ। If knight takes, then rook d1, but I take the queen, right? Knight takes attacks the queen, unfortunately. By knight takes rook d1, then knight takes d4, and I win the game. Let's see what happens, though. अभी कुछ पता नहीं है.
कम ऑन भाई, फ्लिप तो कर लो। अरे फ्लिप कर दिया भाई। You just need to do a standard special, then register for COB7 and destroy everyone. That is true. That is true. I think if anybody is registering people for stand-ups, please contact me on, please let me an email. भाई या मैं खुद डालता हूँ email, भी बता दो मुझे। एक stand-up करना है, फिर COB ज्वाइन करना है, and then of course I win with every COB there is। मजा आएगा। ऐसे आइडिया अच्छा नहीं है, अच्छा यार। मतलब स्क्रिप्ट लिख लो पहले अच्छी से, किसी से लिखवा लो स्क्रिप्ट, बाद में एक स्पेशल कर लो, ऑन पेपर कॉमेडियन बन जाओ एंड खेल लो, फिर बढ़िया भाई। भाई कश्मीरी में कमेंट्री करो यार, कश्मीरी में करूंगा तो भाई जो 300 की वॉचिंग में 10 की हो जाएगी। 9 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट वीकेंड। अरे वीकेंड 9 बजे नहीं होता है, वीकेंड होता है शाम को 4 बजे फ्राइडे को। Can black afford to be exchanged down? No, why he can't. But I think we will save the rook. First of all, we capture on e5. The queen moves somewhere, and then we move the rook. That's important. The king on b1 looks a bit old. You mean this king? Yeah, maybe. The b1 square is this one, by the way. गेम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में भाई। 90 से क्या होगा भाई? 95 से क्वीन फाइनली थोड़ी शी विल आल्सो फील सम फियर यार, थोड़ा ज्यादा आजाद पंछी की तरह घूम रही है, थोड़ा डराते हैं इसको 95 खेल के। एंड वन शी मूव्स टू h4, देन वी गो rook f d8 एंड सो ऑन, एंड वी काइंड ऑफ होल्ड ऑन टू द गेम। हेलो संकेत भाई, क्या हाल है? मेरा 10:30 तक ऑफिस है, सो ओके इंटरेस्टिंग। 10:30 तक कौन सा ऑफिस होता है वैसे? ये मैंने नया सुना है। थोड़ी देर पहले बोर्ड फ्लिप किया हुआ था। अच्छा हाँ, अरे हाँ भाई, ये तो मैं सोचा ही नहीं। अगर मैं बोर्ड फ्लिप करूं, फ्लिप द बोर्ड, तो मैं b1 पे आ गया। ओह माय गॉड, आई एम प्लेइंग ऑन एन एम्प्टी स्क्वायर, होपफुली आई डोंट फ्लिप देन। इंपॉर्टेंट। 10:30 ऑफिस WTF। या आज अर्जुन का मैच प्लीज। आज करूंगा भाई, आज करूंगा, ऑफकोर्स नहीं करूंगा, आज तो अर्जुन का मैच है भाई, आज करना ही है। अरे यूके का 5 बजे, ओहो नाइस। b1 पे क्या कर रहे हो भाई? मैं b1 पे नहीं भाई, मैं g8 पे हूँ। कैन आई सी योर लिटिल टिको? व्हाट द हेल इज दिस भाई, ये क्या है? कैन आई सी योर लिटिल? यू कैन सी इट, इट्स ऑलरेडी ऑन स्ट्रीम, यू कैन सी इट ऑन स्ट्रीम भाई। पूरा बोलता हुआ, नाचता हुआ, खिलखिलाता हुआ लिटिल टिको। एनीवेज, बाय द वे चैट, लेट्स गो टू द गेम ऑफ अनिश गिरी वंस। कुछ नहीं हुआ है भाई, हरिकृष्णा वंस। या बाय द वे, रूक e8 played by black now. And queen e8, bishop d2 looks very much equal. Rook b8, c5, whatever it is. Let's go to the game of Vidit again. I think यही interesting game है आज के दिन में। तभी तो मैंने पूछा था भाई, एम्प्टी स्क्वायर पे अपनी वीडियो चलाकर बैठे थे। अच्छा, किसी और से अपने जोक्स लिखवाना इक्वल टू मैच में इंजन यूज करना। क्या बात कर रहे हो तुम? जो बड़े बड़े कॉमेडियन होते हैं, द गाइज लाइक, मतलब यू नो द यूएस टॉक शो, स्टीवन कॉलबर्ट, ट्रेवर नोआ, ये सब की स्क्रिप्ट लिखी जाती है भाई। सो समबडी एल्स राइट्स द स्क्रिप्ट। सो क्या वो मतलब इंजन यूज कर रहे हैं क्या? हाँ, कोलैब में सीबीआई करेंगे भाई, करेंगे भाई, सीबीआई कोलैब फॉर श्योर करेंगे। जब उनका करेंगे भाई फॉर श्योर। वीडियो किंग गायब हो गया भाई, हम है भाई वीडियो किंग। आज हम खेलेंगे भाई उस g8 पे बैठ के। Say Vidit to not play any move as I'm going. ये क्या है रोनाल्डो भाई? मेरा ऑफिस तो 10 से है रात के। ओ माय गॉड। Who is पंताली धारिया? She is the head of Illuminati. MVL game, यार क्या करोगे MVL game का यार? MVL game is irrelevant, but I'll show you of course. MVL game में क्या चल रहा है भाई? Opening theory है नाइट ऑफ की MVL is the only guy who plays the Sicilian like completely always भाई Sicilian खेलता है वो। So yeah, shout out to him for playing the night of continuously and continuously supporting us. Let's go to the game of Vidit again. किंग मत बनो, पता नहीं पिट जाओगे। अरे नहीं भाई, आज विडी जीतेगा भाई। Come on विडी, come on, आज तेरा किंग भाई बनेगा। Exactly. Dil Nihal withdraw from the Bullet Championship? Yes he did भाई। कल रेस्ट डे, हाँ कल रेस्ट डे है भाई, कल रेस्ट डे है, बट कल रैपिड चैंपियनशिप होगी। सो इट्स काइंड ऑफ नॉट अ रेस्ट डे एनी मोर, बिकॉज कल वो है रैपिड चैंपियनशिप, एंड वो तो हम कवर करेंगे। आई डोंट नो इफ वीडियो विल प्ले दिस टाइम, बट बाकी लोग खेलेंगे। अर्जुन विल प्ले इट ऑफ कोर्स। हाउ टू बी ग्रैंडमास्टर इन चेस? देयर आर 2 ways. You can of course play good chess, try to defeat 3 GMs and so on in 3 tournaments each, or you can take the Sergei Karakin path and buy it off. Okay, Nihal playing sub. I know, I saw somewhere कि वो बेलग्रेड में था, तो I guess yeah, I assumed. कब से है वो? कब से है यार? कब से स्टार्ट है वो?
Why FIDE ethics committee might do correction from candidates? I hope so they do. I hope so they do. If FIDE then you will get beaten. अरे नहीं भाई, निहाल को स्ट्रीम पे बुलाएंगे कभी यार, कभी तो बुलाएंगे। निखिल कामत बन जाओ। अरे निखिल कामत नहीं बनना भाई, वो बिलियनियर है भाई, बनना मुश्किल है। 6 मार्च से, वाओ, सीओबी के दिन, सॉरी बुलेट इनविटेशन के दिन से। Buying a GM is very enticing, not gonna lie. Yeah, it sounds enticing, but until the world gets to know, and then Kraken is just he's just a cheat purely. And he bought the youngest ever, yeah. He bought the youngest ever GM title apparently. Apparently, not facts. And he would have gotten so many sponsorships, so much money because of it. ऐसे बिशप आ गया, डर सा लग रहा है क्या? अरे हाँ भाई, पूरा दिल दहल रहा है मेरा यार। See, I'm shaking, I'm literally shaking भाई, I'm literally shaking like crazy भाई, डर लग रहा है यार। Today is not my birthday, interesting. TOB is comedy is on board. It's the tournament that brought Soumya on the scene of the streaming world. एक नजर भाई अनिश गिरी की तरफ, लेट्स गो। ये नजर में कुछ हिल नहीं रहा यार। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये पीस 5 घंटे से ही बैठे हैं। कुछ खेलो भाई, कुछ खेलो, कोई तो कुछ खेलो भाई। कोई तो कुछ खेलो। बिशप को भगाओ यहां से, अरे भाग बे। भाग भाई। कमेंट 5 बजे करते हैं, आपको 12 बजे दिखता है। चैट सुपर स्लो चल रहा है भाई, तुम ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। उधर ही हो गया है, आपने पीछे हो गए स्ट्रीम में भाई, प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाओ यार। लिटिल टिक्कू सिग्मा मेल, ये वीडियो किंग को इतना गंदा कपड़ा क्यों पहना है? अरे भाई कपड़ा नहीं है भाई। 18+ क्या 18 में बोला क्या भाई? सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू से। Why is someone playing bullet to prep for COB? Bullet to prep for COB? What? Bullet chess prep for COB? That makes no sense whatsoever. COB bullet chess तो है ही नहीं। I guess उसने गलती से लिख दिया होगा भाई। बुलेट चेस मेडिटेशन की बात कर रहा होगा वो। भाई इसका किंग स्ट्रीम कर रहा है। Chat many people asking, he can really stream while playing a chess game. Yes, he can. That's evidence. Exactly. Vidi hired NM भाई, कब तक पुतले के पीस खेलेंगे? 95, Queen G5, Rook A D8. But why Rook A D8? Why not something else? Why not Rook F5 now, attacking the Queen? That makes more sense, right? Bullet samosa. Bullet invitation is on 6th भाई, परसों है, परसों रात को, परसों 7 से 8 है। वो भी स्ट्रीम करेंगे यार, मतलब आई थिंक विल स्ट्रीम द सेकंड हाफ ऑफ कोर्स। तो उस दिन भाई 2 गेम होंगे, ये भी होगा वो भी होगा। टिक्कू वन वर अबाउट फीडीज मिरेकल मूव भाई, मिरेकल मूव 2 दिन पहले खेली थी। नाउ ही हैज टू कम विद अनदर वन। रोनाल्डो भाई इतने बड़े समोसे फैन, आपको पेप्सी तो पसंद नहीं है। हाउ डू यू लाइक समोसा बाय द वे? यू पुट द पेप्सी डाउन, या ऐसे करके तो समोसे का कैसे प्यार है भाई? कल ऑक्शन नहीं है, कोई कह रहा है कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया ऑक्शन। बाय द वे कल ऑक्शन नहीं है शायद। बाय द वे ही प्लेड नाइट टू E5, ही टुक ऑन E5, बेस्ट मूव। गुड। तालियां बजती रहनी चाहिए वीडियो के लिए भाई, तालियां बजती रहनी चाहिए। दैट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। समोसा भाई, किसी को समोसे का बैकग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे? द बैकग्राउंड लुक्स वियर्ड। बैकग्राउंड के बिना होना चाहिए मुझे, मैं चेंज करता हूँ यार कल परसों में। पेप्सी कोला, पेप्सी नहीं कोला था ये क्या यार? मोमोज और बर्गर खाया है भाई? खाया भाई नहीं, ये क्या है यार? आज चैट लगता है पी हुई आ रही कुछ लोग। ही प्लेड ऑडियंस, टुडे इज माय बर्थडे, टिकवा इंटरेस्टिंग भाई। उसने ये नहीं बोला टुडे इज बर्थडे, उसने बोला टुडे इज नॉट माय बर्थडे आदित्य भाई। ही सेड टुडे इज नॉट माय बर्थडे। भाई जलेबी डाल देना चेंज करते वक्त। दैट्स ट्रू। I just imagine now, GM Sahil Tikku at the age of 60,
Okay, so by the way, chat, Shirov is still thinking right now. And I think probably the queen has to go to h4. He would also like to go to g3. I think that also seems like a reasonable square. But then there is rook f5. And I think black can double up at some point. Also play rook h5. So let's see what happens. भाई आप चश्मे के समोसे खाओ. ये क्या है भाई? कुछ नया ही है. Shane won died, I know, भाई. Shane won died. That's really unfortunate, भाई. That's really unfortunate. क्या कर सकते हैं भाई? That's really sad. आपके पीछे व्हाइट साड़ी में कौन है? अतुबे आपकी गर्लफ्रेंड होगी. यहाँ बहुत आती है आजकल वो. Being an active player in this history is the most believable thing in that paragraph. That's true, भाई. For the first time in the history, the king is live only on this channel. Exactly, chat. For the first time in the history of chess, the king is live. He's alive. He's come into life just to defeat white, भाई. It's very important. Somebody talking about you on stream. क्या बोला कुंटा भाई उस समय ने? Damn roasted. Yes, of course. Hi and bye. Welcome Ronaldo भाई. क्या हाल है? भाई चश्मी रसगुल्ले में डलता है. अच्छा वो कह रहे हो? मैंने चश्मी मैंने ये सोचा भाई चश्मे. RIP legend. Yeah man, that's really sad. Come on, put radio on. Queen blunder करने का Shirov. No, come on, let's go. किसी ने वो असैसिन्स देखा है क्या नेटफ्लिक्स पे? मैंने वो नहीं देखा है. मैंने रिसेंटली सूट से कुछ एपिसोड देखे, लेकिन आई लाइक इट. वीडी किंग वॉक एक्सपेक्टेड. यार किंग वॉक करने के लिए ज्यादा रास्ते हैं नहीं. यहाँ पे कुछ जंगली कुत्ते हैं, यहाँ पे कुछ मिट्टी विट्टी है, रोड टूट चुकी है, यहाँ बारिश हो रही है. सो आई डोंट थिंक ही हैज मेनी पाथ्स टू गो टू राइट नाउ. वर्कआउट घर पे होम वर्कआउट करना पड़ेगा भाई यूट्यूब खोल के. टिक्कू भाई मुंबई आओ, कभी आएंगे भाई. आप वीडियो के लिए छुपा नहीं रहा भाई. सपोर्ट रीइंफोर्समेंट है भाई, रीइंफोर्समेंट. This is all reinforcement chat. Tiku has just replaced all the your mom jokes with your. No, I hope not. I hope not. He would play Queen D1. That would be a very bad move for white. वो वीडियो के फेवर में भाई. अच्छा चाशनी. चाशनी. हाँ, that makes sense. चश्मी नहीं भाई, वही तो. Suit is great. Yeah, that's great. That's true. Shirov ने Queen F3 खेला chat. So I would, if he actually plays Queen F3, I would literally, sell my channel literally for 1 rupee. If he plays Queen F3, chat, I will sell my channel for 1 rupee. Confirmed. confirmed भाई, confirmed. अच्छा वो मैंने खेला. sorry. वो मैंने खेला भाई. मैं हैरो बनाने की कोशिश करता, मैंने खेल दिया. sorry. हाँ नहीं खेला. भाई क्या पता चला कि शेन वॉन डाइड भाई. वेरी ट्रैजिक. If Queen F3, Sergey is a good guy. If Queen F3, I will literally say Sergey is the best guy on the planet. Oh, he played Queen H4. By the way, he played Queen H4. Very important. And now BD should play Rook F D8. Get the rook out of this attack. भाई सब बैटल भी करेंगे यार. क्या जल्दी है यार? पहले यहाँ देश की इज्जत दाव पे लगी है. पहले वो ठीक करें. Don't sell for 1 rupee. Just quarantine yourself. दीपक कलाल. भाई उससे पहले मर ना जाऊं. ओके बोलना नहीं चाहिए मरना जाऊं भाई. बोलूं ना, क्योंकि आजकल भाई काफी लोग मर रहे हैं. सर आपसे 8th रैंक पे कैसे आ गए G8 की तरफ? बस यार आज मैंने कहा वीडियो को डिफेंड करना है तो डिफेंड करना है भाई. बस बोल दिया एक बार, जबान दे दी तो जबान दे दी भाई. Why not Rook F5? Oh, he played Rook F D8. Rook F5 कर क्या रहा है? That's the problem. It's not doing much. For example, if you play Rook F5, yeah, because Rook H5 is nothing because I can play Queen F4, so there's no threat. I can just play Rook A D1, and yeah, there's back rank issues. Rook D8 आने वाला है, so I think we should not play like this. So I think better is just to play Rook F D8 and control the D1 square. Yo, Pascal भाई क्या हाल है? Rapport game, हाँ chat. By the way, आज chat. Ironically enough, Harikrishna is already out. उसके probability of qualifying is 0.03, so it's already out. I think Anish Giri of course also has a draw game. He will also draw. But apart from the VD game, most important game is Rapport against Fedoseev. And right now, it's probably headed to a draw. So that means Fedoseev will come to 2 points out of 3 and Rapport will go to 2.5. And that means it's all about Vidit now. If he wins, he takes half a point lead. If he draws, then of course he matches Rapport. If he loses, तो पीछे रह जाएगा भाई. So let's see what happens. He's playing the best moves, by the way. Queen H4, Rook F D8, Queen F6, going for mate, chat. Chat, question for you. What would you play here as black? Black to play. देखते कौन कौन से moves chat में भाई. चलो
let's figure out the noobs chat. Let's go भाई, कौन कौन noob है chat में? Let's go. What would you play here as black chat? Come on. भाई हाथी के बीच में क्या कर रहे हैं आप इन एजी गेम? भाई हाथी के बीच में नहीं है भाई, हम विदित किंग है भाई. या रूक D7 chat is, भाई chat काफी strong है by the way. I think rook D7 खेलना चाहिए exactly, and that's what he played. Rook D7 now and defends the mate, and next move is knight to C6 and then queen to E5. And I feel black is clearly doing fine. He's not worse anymore. But of course, he played some good moves and took some risks. But the thing is, it's still not better for black. So I don't know why he took these risks. Let's see what happens. Waha beta Vivek ji. There's no surprise. Vivek namak hi nikla bhai noob. Knight F7 followed by queen G7. Awesome Vivek bhai. Awesome. So by the way, rook F8 played, and white plays the move H3 here, trying to cover up knight G4, picking up the bishop. And now Vidi should play knight to C6 or knight to C4, followed up by queen to E5, and simply trade queens, and he will be fine. Yo, chat, let's go. Is knight F3 worth it? No. Yo, exactly, rook D7, exactly. Queen D7 में इशू है क्या? हाँ यार, मैं उसी का इंतजार कर रहा था भाई. कोई ना कोई तो queen D7 बोलेगा. मैं उसी का इंतजार कर रहा था. Queen D7 में actually queen E5 मर रहा है भाई. मैं उसी का इंतजार कर रहा था actually. So that was the mistake there. So now we have this position, and we should obviously move the knight somewhere. And he has nothing else. By the way, rook F7 would be not so great because rook F7, queen H4, and white is again better. So I hope so he can try to, simply play knight C4, knight C6, and try to quit trade queens. Vidi is a pawn up, but this pawn is weak. ये pawn जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा. Whenever the queens are traded off, this pawn will be lost. This is not a permanent pawn here. शिरोव को समझना चाहिए और यंग जनरेशन को जीतने देना चाहिए. पिज़ाज आंटी का मैसेज है चैट में. थैंक यू पिज़ाज आंटी. इज दिस ड्रॉइश? इट इज नॉट भाई. देयर इज नो गारंटी व्हाट विल हैपन हियर. ब्रो येलो ब्रो, व्हाट्स योर येलो ब्रो? माय येलो इज 2201 ब्रो फिडे. यो अरे भाई क्या हाल है? जेन भाई शिरोव प्लेइंग 4 आने का अटैक नहीं है भाई. डिसेंट अटैक है भाई. डार्क स्पेस वीक है. 2 टिक्कू क्यों आ रहे स्क्रीन पे भाई? आज मैंने पूरा प्रण किया है. आज वीडियो किंग को मैं अकेला बचाएगा भाई. अकेला वीडियो किंग को अकेला रोकना है भाई. मैं वीडियो किंग के साथ खड़ा हूं. आज हम जीतेंगे भाई. कैंसल फॉर अज्यूमिंग जेंडर. नाइस. व्हाट अबाउट रुक सैक मूविंग टू F3 एंड G2 एंड नाइट टेक्स? तुम्हें क्या लगता है भाई, अगर तुम यहाँ रुक यहाँ रख दोगे वो जरूरी मारेगा? वो बेवकूफ थोड़ी है भाई. लेट्स से रुक F7, क्वीन H4, रुक F3. वो चेस कल थोड़ी स्टार्ट किया था. वो खेलेगा रुक D1 फॉलोड बाय रुक D8 एंड यू विल रिजाइन. इट्स ऑल रिजाइनेबल. सो लेट्स वेट. Will you stream Arjun? I will stream Arjun's match. Yes, it's at 12:30 AM tonight. I will stream it. अगर ये मैच जल्दी खत्म हो गया तो I will end the stream and start again at 12:25. If it goes on long, then we'll continue the stream as well. वीडियो इनको बचाने की बजाय वाइट इनको मारो. अरे हम ऐसा नहीं है भाई. हम ओपोनेंट की मारते नहीं. हम अपनी We will not put anybody down, chat. We will not put anybody down. We will raise ourselves up. Okay, anyways. That up हो गया. VD for win. Yes, chat. VD for win. You have been banned from ever having Domino's again for calling pizzas and auntie. World War 3 होगा न्यूज में बोल रहे हैं. क्या बात कर रहे हो तुम? निहाल हैज कोविड. भाई ये क्या आज हो क्या रहा है भाई? निहाल हैज कोविड. शेन वॉन डाइड. वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो रही है भाई. आज क्या है भाई? आज निहाल, सरीन, कोविड. क्या बात कर रहे हो तुम? सही बताओ कहां दिखा भाई तुम्हें? अफवाहें मत फैलाओ यार. अफवाहें मत फैलाओ. So much 18+ talk. VD लॉस. समय हैकिंग. ओके. निहाल इज प्रैंक. भाई ऐसे प्रैंक मत करो यार. ऐसे प्रैंक मत करो. और वर्ल्ड वॉर 3 कहां से आ गया यार? लेट्स नॉट डू वर्ल्ड वॉर 3. प्लीज पुटिन बाय. Please don't put in your weird things here. Please put in by. So World War 3 भाई देखते हैं क्या आएगा सर्च करने पे. Holy fuck भाई, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है इट इज क्लियर वर्ल्ड वॉर 3 कैन ओनली बी न्यूक्लियर. भाई इस करियाकम को लेट के कोई पीटो भाई. क्या आदमी है यार ये. मतलब ये इसको सपोर्ट कर रहा है क्या? इज ही सपोर्टिंग दिस गाय? रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है एक दिन पहले इट इज क्लियर वर्ल्ड वॉर 3 कैन बी ओनली बी न्यूक्लियर. ओके एनीवेज भाई मेरी फट रही है भाई. मेरी तो फट रही है भाई थोड़ी सी. आई हैव टू से
When you exhaust your Hindi midway through your sentence, भाई हिंदी क्या, यहाँ पे तो मैं अपना नाम तक भूलने वाला हूँ. Rapport -7, भाई उसकी क्या है? Why is it lagging? कराकन क्या किया जाए भाई? भाई उसको बस, भाई कराकन को ना, आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज ही शुड बी बैंड. ही शुड बी क्लियरली बैंड. मतलब यहाँ पे भाई वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस हो रहे हैं और ये बंदा लिटरली मतलब ये काम कर रहा है. मैं आपके लिए बंकर रेडी है 2000 पर डे विद फूड फैसिलिटी. आई विल मेल यू एड्रेस सून. अरिंदम भाई ये कौन सा बंकर है भाई 2000 रुपए पर डे? भाई वहां पे बाहर बंकर बेचते वो लोग भाई करोड़ों में प्राइस होता है. ये 2000 पर डे कौन सा बंकर है? What we referring to his tweet or something else? No, just his general opinion. Yeah, मतलब he supports this war like crazy. मतलब इतना he goes like back and he doubles down on this war again and again. And then you know this might turn nuclear. So yeah, he should at least now he should realize what the fuck is he saying. How to world WW3? I don't know, man. I mean, I don't know. उसको उल्टा करने का 3 को WWE बनाने का I guess. और कोई सोचा मुझे पता नहीं है. मैं आज यू विल नॉट बिलीव दिस, मुझे आज ही यूट्यूब पे वीडियो सजेस्ट हुआ लाइक हाउ विल लाइक वर्ल्ड वॉर 3 गो. एंड उसमें दिखाता है वो लाइक मतलब एनिमेशंस लाइक ऐसे वो दिखाता है कि ये अटैक करेगा, ये अटैक होगा, लाइक 1 दिन बाद ये होगा, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद. एंड इट शोज कि मतलब कितने महीने तक न्यूक्लियर विंटर चलेगा. भाई क्रेजी है. सो होपफुली कराकिन एंड पुतिन कैन बोथ मेंड देयर वेज. छोटा टिक्कू क्यों लगाया? आज अपन डिफेंड करेगा वीडी के किंग को भाई. आज वीडियो किंग तक कोई नहीं पहुंच सकता भाई. आज तो डिफेंड करना ही है. डेली डोज ऑफ कराकिन डिस. WWE रॉयल रंबल ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ नेटो कंट्रीज. एग्जैक्टली. वीडी ब्लंडर, क्या बात कर रहे हो तुम? झील पटेली यार अपने थॉट्स को झील की तरह बहने ना दे भाई. भाई थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा थामे भाई. ऐसे हम हार्ट अटैक आ जाएगा. सॉरी ऐसे बोलना नहीं चाहिए हार्ट अटैक आ जाएगा वैसे. छोड़ यार. RIP शेनवॉन यार. हाँ लगता नहीं था 2012 न्यूक्लियर वॉर की फॉर्म में आएगा ये. भाई मुझे कुछ नहीं पता यार. एंड इट्स काइंड ऑफ वियर्ड. Anish Giri, big advantage, of course, a scam. I read that Sergei Shipov was always one of this Kraken. What Shipov also said the same कि मतलब it's good that this war is happening, but जितना डबल डाउन Kraken ने करा ना उतना तो किसी ने नहीं करा भाई. मतलब आई थिंक इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुतिन ने नहीं करी जितनी आई थिंक Kraken ने ट्वीट कर ली है. सो आई थिंक दैट्स सुपर वियर्ड. बाय द वे दे बोथ हैव 52 मिनट्स हियर, सो वेरी इंटरेस्टिंग यार, वेरी इंटरेस्टिंग यार. 10 स्टैंडर्ड में हार्दिक ये क्या है भाई? कम ऑन ऐसा ही मत करो अनीशा. भाई एनजेड कब आ रहे हो आप? एनजेड में हो क्या झील पटेल भाई? सरगेई ट्वीट, अरे ये मत बोलो उसने कुछ ट्वीट किया है. प्लीज डोंट टेल मी सरगेई ट्वीटेड समथिंग. प्लीज चैट, डोंट डू दिस. डोंट डिस्ट्रॉय माय मेंटल पीस. प्लीज भाई, प्लीज टेल मी सरगेई डिड नॉट ट्वीट एनीथिंग. प्लीज चैट, प्लीज टेल मी सरगेई डिड नॉट ट्वीट एनीथिंग. अभी की अभी बोलो भाई. मुझे प्रूफ चाहिए चैट. रुको भाई. I need evidence. Thank God. ट्वीट नहीं किया भाई. Thank God for that one. Yeah, calm down भाई. काम का कैसे काम रहे यार? मेरी ही बारी में स्कैम क्यों लगता है? अरे एग्जैक्टली. सरगेई रशियन कंगना भाई. कंगना टीवी शो कर रही है अभी. So let's not compare him with Kangana right now. We don't want like we don't want a TV show Karyakin, yeah. Jacking cars with Karyakin, I don't know. My offer 100 per day with amenities like gym, 3 time food, water and Netflix. Nice. 100 क्या भाई? 100 बिलियन तो नहीं बोल रहे हो? Dubov and RTMF tweet. Okay, उनके ट्वीट कुछ नहीं करना मुझे. Art of Ending देख के आया हूँ. क्या हुआ Art of Ending भाई? Rook F7 is possible, but it's like it's going in the wrong direction. यहाँ पे White is the one attacking here. So White will play Queen H4 and what else do you do now? So I think हमें D file पे control maintain करके रखना है. Yeah, we have to control this file. We cannot allow Rook a D1. अगर Rook a D1 आ गया तो हमारे लग जाएंगे भाई. King to F7. शाबाश स्वदेश भाई. शाबाश स्वदेश भाई. हमारा एक बिगिनर कोर्स है. आप प्लीज को ले. मैं आपको सिर्फ 69 रुपीज में दूंगा. आप प्लीज वो कोर्स ले. आपके लिए बहुत जरूरी है. Dubov does not have Twitter. Okay, good news. During Russian foreign affairs minister talk every bit of and left. I saw that video just by.
आज लेट हो गए, एक बार रिकैप कर दो कृष्णा भाई। क्या मतलब यार, रिकैप मतलब यार, अरे मस्त चल रहा है, डोंट वरी भाई। हाँ लिटरली टिक्कू सैक्रिफाइस भाई, ही वांट्स मी टू प्ले माई सेल्फ टू F7 एंड सैक्रिफाइस माई सेल्फ। भाई मजाक है क्या भाई, मेरी भी वही इज्जत है भाई, कम ऑन। मुझे दे दो, मुझे चाहिए भाई। ये क्या है? बिगनर कोर्स भाई। चैट बाय द वे, कितने लोग चैट में है जिनको लाइक पीसेस मूव करना नहीं आता या नोटेशन नहीं आती? कितने लोग ऐसे चैट में बताओ? आइडिया बिहाइंड नाइट h3 to prevent knight g4 because considering how strong this bishop is, it's definitely in black's favor to exchange these pieces. So h3 kind of avoids knight g4. किंग एस के बाद टिक्कू भाई को क्वीन ले ले। अरे ये क्या है भाई? Not me anymore. Yeah, Anisha bought the beginner course. No one, right? I don't think so. I don't know notation by heart. भाई बाय हार्ट नहीं याद करनी होती भाई, बाय हार्ट याद करनी होती है। ये क्या अश्लील बातें कर रहे हो भाई? ये क्या अश्लील बातें भाई? What the fuck was that? Anyways. I am भाई, सो अनिश नायक भाई को तोड़ दिया। अरे पेलू भाई, क्वीन टू d4. I understand your threat there. You want to play knight f3 check, but unfortunately there's queen e6 check and you will basically lose a pawn. So let's go to this pawn position. I am also भाई, queen takes d7. मुझे दे दो 69 में कोर्स। queen takes d7. चलो I'll do one thing भाई, I'll actually do this, ठीक है? मैंने प्रॉमिस किया। किसी को अगर बिगनर कोर्स चाहिए, जेन्युइनली बिगनर कोर्स चाहिए, हु डज एक्चुअली वांट्स टू लर्न चेस एंड वांट्स द बिगनर कोर्स, जो सो बंदा पहला मेल मुझे करेगा ना अपने ईमेल एड्रेस पे chessassist20@gmail.com, I'll give that guy the beginner course in 69 rupees confirm। एक बंदे को, बिकॉज मैंने बोला भाई जवान का पक्का हूं। I can do notations but at your speed। अरे कौन भाई, वीडियोस आनी चाहिए, स्पीड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। प्लीज स्लो मोड करते हैं, स्लो मोड भी करते भाई। सेटअप टूर भाई, सेटअप टूर दिया है एक्चुअली, ऑन स्ट्रीम दिया है, आई थिंक ऑन स्ट्रीम दिया है। हाँ नहीं चाहिए, अब है ना भाई, अब है ना पवन भाई, सीखने वीखने का मूड नहीं है भाई। एक पवन भाई है जो इतना औसम है, एक पवन भाई है जो भाई ही इज लाइक भाई नहीं चाहिए भाई। नाइट टू f7 ऑसम, इतनी ब्यूटी मूव्स चैट आज दे रही है भाई। नाइट टू f7 गेटिंग मेटेड इन वन, ऑसम 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 भाई। हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। Is rook d1 a threat from white if knight c5 is played? Yeah, so if you play knight c4 and rook d1, I will obviously, play queen e5 and trade queens still, so I'm absolutely fine actually. So I will not take on d1 of course, because that will lead to mate on g7, so that's important. Let's see what happens. rook to e7, शाबाश। हमारी चैट का इतना बढ़ कैसे रहा है भाई? एक्चुअली मेल आवे क्या भाई, किसी बंदे का मेल आवे क्या भाई? सो ठीक है भाई। What is wrong with rook f7? Rook f7 chat, there is queen h4 and there's nothing really wrong, but you give control away of the d files, so you don't gain anything out of it. Honestly, we want to trade queens. हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है क्वीन ट्रेड करना, राइट? क्वीन ट्रेड करने के लिए हम कैसे करेंगे? We want to get the queen here or here. So that's why knight c6 and then queen e5 makes a lot of sense. Rook e8 is possible, yeah, but it's not doing anything. The e6 pawn is defended right now, and we want to trade queens. भाई queen trade करनी है हमें। बाप आप किंग के पास क्यों हो? By the chat, I am on g8 as well today. ये मैं भी हूँ इधर। आज मैंने कसम खाई है कि वीडी को हम जितवा के रहेंगे, because he has to qualify for the candidates, at least give him a good chance. So आज मैं खुद बैठा हूँ g8 पे भाई सपोर्ट करने के लिए। आज वीडी नहीं हार सकता भाई, आज कुछ भी हो जाए, जीतेगा ड्रॉ करेगा, आज हारेगा नहीं भाई, कुछ भी हो जाए। मेल मैंने ही किया है एक, हाँ मुझे आई थिंक 2-3 मेल लगा एक्चुअली। हाँ आपका भी है झील भाई। क्वीन फॉर 2 रुक्स, नहीं भाई यहाँ पे तुरुक नहीं करना, बिकॉज ब्लैक किंग इज वेरी वीक। वी डोंट वांट द 2 रुक्स फॉर द क्वीन, वी नीड द क्वीन हियर। क्वीन g8, नाइस। c5 is too slow man, too slow. White is now threatening rook a d1 chat. He's threatening rook a d1 and he wants to give the 2 rook for the queen. That's also one more benefit of h3 now. The king is not getting backrank mated. And let's say chat, let's say black plays a5, ठीक है? इस लाइक मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? Now white plays rook a d1, so you have to trade now, no other option. Queen takes d1, rook takes d1, rook takes d1,
king h2, and now the threat is queen g7 mate and queen takes e5, so you're completely lost. So I think, oh, he plays knight c4. Awesome. VD bhai finds the only move again. I think VD को only move ही देना चाहिए. When he has the only move, he finds it. Yeah, I mean mostly rook f6 हो या a4 हो या he finds the only moves, but he cannot find sometimes तो 2-3 ऑप्शन होते हैं तो. ये मैंने ही मेल किया, पढ़ूंगा भाई. अब अगर rook d1 आया तो queen e5. If rook d1 will be played and then queen e5. And the thing is, beauty is queen is hanging, so rook takes d7 leads to queen takes f6. And if queen takes queen, then knight takes e5 and knight defends the rook. So we are again safe. So yeah, all cool. बाल बचे भाई. Draw है, but white has tempo on his side, I feel. Yeah, I think white is surely, tiny bit better, but I think because black has an extra pawn, it will take some time for white to capture this pawn. Black will till then develop and should be fine, although this bishop is stronger than the knight, so clearly black has to be careful. Can I get personal question? Yeah, bhai, yeah, I seriously, bhai, honestly, Djokovic, bhai, I seriously don't have time right now, unfortunately. एलेक्सी के रुक्स मस्त घास खा रहे हैं भाई, अभी बहुत कुछ खाएंगे वो तो रानी भी चबा जाए कच्चा, अगर क्वीन ई 5 नहीं होता इसके पास तो. रैपोर्ट्स गेम, अरे हाँ भाई, रैपोर्ट की गेम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कितना देखो, चेस इज सो ब्यूटीफुल यार. White could have taken this pawn for the past 10 moves or so. Look at this position, ठीक है. यहां से लेके अब तक he could have taken on a7 any time, but वो मार ही नहीं रहा, वो प्यादा मार ही नहीं रहा. He is trying to gain an advantage out of this. मारा नहीं. He literally played rook a6, but वो pawn नहीं मार रहा है. He's like, मुझे edge चाहिए भाई. So yeah, let's go to the game of Vidit again. Two face cams. It's not face cams, chat. I am personally there on G8 trying to defend VD's king. It's really important right now. We want to defeat VD's king. RIP Shenwa, untrue bhai, RIP Shenwa. Yeah, sad news. आज विदित का ये लोग 5000 से ज्यादा है. आज विदित की देखो चैट किसी को वीडी की रेटिंग पता है? कैन एनीबडी इन द चैट लेट मी नो वीडीज रेटिंग. बताओ चैट, कितनी रेटिंग है वीडी की? वीडी फॉर विन, एग्जैक्टली भाई. थोड़ी देर के लिए फैसल के रुक्स के पास बैठ गए थे, दैट इज ट्रू. या 2727 एग्जैक्टली. तो यूजुअली व्हेन इज अर्जुन स्ट्रीम शेड्यूल, इट्स 12:30 भाई, 12:30 होगा. अगर मतलब ये स्ट्रीम पहले खत्म हो गई तो आई विल शेड्यूल वन मोर फॉर 12:30. अगर ये स्ट्रीम लंबी चली तो यही कंटिन्यू करेंगे. सो 2727 है, ठीक है. एंड आज वीडियो किंग की रेटिंग अलोन इज 2201. सो इमेजिन करो, डिवाइड करो 2727 डिवाइड 16. सो उतनी रेटिंग होती है एक पीस की रफली. एंड आज वीडियो किंग की रेटिंग अलोन इज 2201. सो आज तो वीडियो किंग इज लाइक अनबीटेबल, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल यार. सो आज तो वीडियो पक्का एटलीस्ट ड्रॉ या विन तो करेगा. आज मेट नहीं होता वीडियो किंग. डिफेंड करने में एक्सपर्ट हो तो G8 को नहीं, यूक्रेन को जाओ भाई. जो मैं कर सकता हूं वही करूंगा ना यार. अरे वो ब्लैक किंग ने क्या खाया था आज? खाया कुछ नहीं है भाई. आज उसके बाद क्रेजी है भाई. योर मैथ इज ब्लोइंग माय माइंड. सौरभ भाई, ऑफ कोर्स भाई, कॉलेज में पढ़ाई तुम करते नहीं थे तो करते नहीं हो इसलिए. मैम विजिटिंग हैज बीन 27, इट रिमेंस कंसिस्टेंट. दैट्स ट्रू. Why Nihal not in Bullet Championship? I don't know. I think he's playing some OTB chess in Serbia right now. That's why he's not playing the online chess. Tikku ka samosa. अरे Tikku का samosa चल रहा है. Lil Tikku on the board भाई. Black King looking old. भाई ये क्या है भाई? बेचारा वीडियो किंग को भी ओल्ड बना दिया भाई. बढ़िया है. भाई ऑक्शन रियल लाइफ में हुआ क्या यार? हाँ शायद रियल में होने वाला वो. हरी इज डाउन टू 2710. यार देखो, हरी जितना भी डाउन हो भाई, it does not matter because he cannot qualify. His game is not as important in this tournament anymore, unfortunately. So it's all about Vidit and Rapport right now. What is your winning losing streak in classical chess? I think ज़्यादा नहीं है. I think I did go like around, I think 30 games or so without losing. That has happened before, but ऐसा कोई crazy streak नहीं मारी मैंने. Bro, show your 7 years older photo.
Have you watched Ball of Century? अच्छा Bali of Century क्या है भाई? I have seen it भाई. Is rook f8 possible? No भाई, rook f8 is not possible. Rook f8 with queen takes f8 unfortunately. झूठा भाई, झूठा नहीं हो भाई, ऐसा हो चुका है भाई. आई थिंक 25-30 गेम में विदाउट लॉस गया था. ब्लैक इतना स्मार्ट है कि उसको स्टार्टिंग में ही डब्ल्यू मिल गया. कैन वी गो नाइट c2 आफ्टर रुक d1? हाँ, you mean knight d2? Not really भाई. If rook d1, knight d2, just rook takes g2 because the bishop defends d2 actually. Rook f8 not possible. Rook f8, just queen takes f8 and it's mate. Best move for black. Rook g7 followed by flight ticket to India. नहीं भाई, I don't think so. I don't think so. ये चेस बेस कितना satisfying सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए भाई. satisfying तो है, but it's not meant for satisfaction. It's actually meant for playing chess. You were just 90 games short of being Manchester. Yes, just 90 games. Just like somebody in the chat was just 1000 rating away from Carlsen's record. Were you aggressive? Were you मतलब अभी जिंदा हूँ भाई मैं. Were you मतलब are you? दोबारा पूछो अभी ना भाई. Are you पूरे पूछो. You can see my text. Yes, I can see your text and DP as well. What about f4? Nothing but f4 भाई. घटिया move है. F4 kind of blocks your bishop in and f4 में I will just play queen f5 and black will be absolutely fine. I will have a pass pawn as well now. Can a rook down give any advantage? No. Queen f5 में problem है chat. Chat, can you help me know difference? So, okay, I'll tell you. First of all, if queen f5, okay, पहले तो white to let's say rook d1 and now queen to f5. The issue here is after white takes, the knight does not defend the rook. So knight e5 में क्या है? If you take the rook d1, queen e5 takes, the knight defends the rook actually. That's why it's important. So you cannot play queen f5 there. And also queen e5 cuts off the queen from this diagonal, so queen cannot go back. प्री बोर्ड की तैयारी से ज्यादा विदित गेम की टेंशन होती है. अरे प्री बोर्ड क्या है रे? क्या है प्री बोर्ड? है क्या प्री बोर्ड भाई? क्या हो जाएगा प्री बोर्ड फेल हो जाओगे तो? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भाई. Have you ever used SCID versus PCI? SCID क्या है यार? Losing streak अभी नहीं बता सकते. Continuity. नहीं भाई, I think my last classical game I did lose, but उससे पहली वाला है 1, so it's only 1 game loss भाई अभी continuity में. तू टूर्नामेंट कब खेलेगा यार? मैं कैसे खेलूं भाई? I'm confused. I want to play the Gujarati Open, but टाइम ही नहीं है भाई. स्ट्रीमिंग पूरा हफ्ता छोड़ना पड़ेगा यार. And then you know it's like मतलब because स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ तो प्रैक्टिस करने का टाइम भी कम है. तो भाई कोशिश कर रहा हूँ मैं. Let's see. I am from 2050. COVID disappeared in 2020. Russia and Ukraine signed it decided to become a GM in 2023 rated 2678. अरे महाऋषि भाई, आपके महाऋषि सारे शब्द सही हो भाई. भगवान करे आपके शब्द सही हो भाई. आपके मुंह में घी, शक्कर, डोनट, आइसक्रीम सब कुछ. Looks like the king is telling his pieces the advantages and disadvantages of the moves. हाँ exactly. Okay, let's do one thing भाई. Let's do one thing. Okay भाई देखो, queen on d5. Next move come to e5. Very important. ठीक है, जल्दी से आ जाओ भाई. टाइम वेस्ट नहीं करने का. मेरे को थोड़ा डर लग रहा है भाई. दिल में धक-धक हो रहा है भाई यहाँ पे. जल्दी से आ जाना queen e5 पे. इसको भगाओ यहाँ से. कल मुही यहाँ पे सामने बैठी हुई है मेरी. इसको देखो. अबे निकल यहाँ से. निकल 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 बे निकल. तंग कर रही है भाई ये बहुत. Okay, let's go back. What about e5? e5 looks really bad because we want to trade queens by. We have to trade queens at all cost. e5 just kind of blocks the pathway back for the queen and the knight both. Career wise, should I pick commerce or science? Man, depends on what you want to do in life. Very hard to say. Do only title players or anyone above rating and play nationals? Anybody can play chat if you come in top 4 in your state. अगर state के top 4 में नहीं हो, then you can re-rating on 2000. Checkmate incoming, no checkmate by. SCID PC is a free chess-based software, of course, not as good as chess-based, but it's good enough. I have never used it by, so I have no clue. But I would say that chess-based is pretty awesome. It's the standard of the entire chess community, so I would recommend going for chess-based. Shirov was 42 minutes और सोच ले. Yeah, that is true. Kali 42, huh? Nice. Rook f7 chart is not good enough, man. First of all, it's white to play. So white will play rook d1, so you can't really play rook f7. That's very obvious. Please enable spam mode. भाई क्या करोगे? अच्छा मान लो मैं spam allow कर दूं तो क्या करोगे? What will you do with spam? क्या करोगे spam के साथ? बताओ. What will you do with spam? By the rook d1 plate.
छोड़ दो 1 वीक, खेल लो भाई यार. आई वुड लव टू प्ले, आई वांट टू प्ले एंड मोस्ट लाइकली आई विल प्ले अंशुमान, बट द इशू इज कि खाली खेलने की बात नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है. सो इट्स लाइक मतलब रेटिंग घटवानी नहीं है. So it will take a lot of time, but most likely I will play. Of course, I'll play most likely. Spam करेंगे obviously. चलो chat. I'll do one thing. जो spammers chat में है, I will give you exactly 30 seconds to spam as much as you want to. उसके बाद मैं slow mode लगा रहा हूँ. 1 महीने तक कोई spam नहीं करना चाहिए, ठीक है? Go chat. Enjoy. 30 seconds. By the way, Rook D1 played now. Queen E5 आएगा बहुत जल्दी, I think. I will spam my friend's girlfriend. ये क्या है भाई? ये भाई, ओ भाई कितना भाई, ये क्या है भाई, क्रेजी. करो भाई, लो करो, निकाल लो भाई, अपनी एनर्जी निकाल लो. आज शाम को किसी को कोई, आज शाम को नींद अच्छी आएगी. कर लो भाई, कर लो. 30 सेकंड ऑनली भाई, 30 सेकंड ऑनली, ठीक है? 30 सेकंड ऑनली भाई. क्वीन D1 इज लॉस्ट बाय द वे. शाबाश 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 बेटा, शाबाश शाबाश. हो गया भाई. 10 सेकंड्स टू गो. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and chat, the time is done, the time is done. हो गया, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया. डन भाई, डन. रुक जा. रुक गए भाई, नाइस. अभी भी कर रहे हो? बस भाई, बस हो गया, बस 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 भाई, बस हो गया, निकल गया निकल गया निकल गया भाई. Anyway chat, so now Queen E5 played. Oh, he played very quickly भाई. Played and Queen takes E5 played. Queen trade हो गया है. चैट, मेरे G8 पे आने का मकसद पूरा हुआ. द किंग इज सेफ. नो चेकमेट फॉर वीडीज किंग नाउ. ऑसम. एवरी मॉड्स विक्ट्री. लगता है अर्षित भाई ट्राइंग फॉर सीओबी. अर्षित भाई आप भी स्टार्टअप डाल सकते हो. क्वीन E5 जैसे कैलकुलेटेड मूव्स इमीडिएटली क्यों नहीं खेलता? इमीडिएटली खेल तो दिया भाई, तो खेल तो दिया. क्वीन E5 95, Bishop to F4. Wow. Let's refresh. And chat now. The only move VD has is Rook takes D1. बाकी सब कुछ lost है, of course. Let's go Rook takes D1. How about King to A1? Okay, King to A1, not really possible. Sahil, please play Gujrathi so I can defeat you. I will try my best. I'll try my best. F हो गया. यूक्रेन प्रेसिडेंट अक्यूज एक्शन न्यूक्लियर 1 न्यूक्लियर प्लांट फायर्ड. क्या बात कर रहे भाई? नाउ इट्स अ ड्रॉ मोस्ट लाइकली. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट भाई. आई एम नॉट श्योर क्या वेरिएशन है पोजीशन की. बहुत क्रेजी है बिकॉज व्हाइट हैज द बेटर माइनर पीस अगेंस्ट द वर्स्ट नाइट. सो कुछ भी हो सकता है भाई. प्ले प्रॉप नाइट विद समय. आई वुड लव टू भाई, बट एक बार समय ने बुलाया था, बट उस टाइम पे मेरा इंस्टॉल नहीं था. सो फिर वो गया भाई. अब जो भी है चांस गया. 2678 गॉड एक्सचेंज पर्सन. अरे भाई ये क्या भाई, क्या लेम जोक है भाई. क्यों बेचारे के पीछे पड़े हो चेस लवर? हाँ भाई, क्यों पीछे पड़े हो भाई? क्यों क्यों भाई, क्यों? मैसेज डिलीट हो रहे हैं आज. अरे कुछ डिलीट नहीं हो रहा यार. कैन वीडी विन दिस वन? ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन वीडी विनिंग दिस. इफ ही हैड 2 moves here he might, like you would love to play Rook D5 here, but then you're losing a piece. So Shirov एक मूव आ गया. वीडियो एक एक्स्ट्रा मूव होती ना, एक एक्स्ट्रा मूव, तो वीडियो वुड बी लाइक इवन बेटर, बट नाउ वीडियो इज डेफिनेटली स्लाइटली वर्स. अगर आप चेस प्लेयर नहीं होते तो क्या होते लाइफ में, ये तो भाई यार भगवान जानता है भाई, भगवान जानता है. मेरे को तो पता नहीं. Looks holdable. Yeah, it looks holdable, but it will only be holdable if you can trade these 2 pieces with only the rooks on the board. With the bishop here, I'm not really sure. White can put a lot of pressure, bhai. Knight C4 maybe I think is the only move. Attacking B2 and now Rook to D7. And the question is, you take on B2. He probably takes on C7. You play Knight C4 back. He plays Bishop E5. Bishop is not possible actually. That's really helpful. There is no Bishop E5. वरना तो नानी आ सकती थी. So Bishop G5 I guess. Now I don't know, what do you do? What do you do now? Knight to B6 is the beauty. And if Bishop F6, there is Knight to D5. Ooh, that's the idea. So VD probably holds this. Yeah, VD can hold this, chat. So Knight C4. Let's go VD by only move.
If you got a chance to be a Johnny Bhaiya, will you be chess player or Johnny Bhaiya क्या है भाई? What is Johnny Bhaiya? मुझे पता नहीं है. What about Rook a D8 before this move happened? Rook a D8. I mean, isn't it hanging? भाई ये CO भी नहीं चल रहा है भाई. साहिल समय once mentioned that you are also a great musician. ऋषभ भाई वो उसने मजाक किया था because I think मैंने कोई पोएम डाली थी. एक पोएम डाली थी मैंने, शायद उसे तभी मजाक किया होगा. I am from World War III by MUDI. Sahil became a GM in 23 and ready 2687. I became a model in this channel via a poll on 4th March 2022. Hey, nice one, Maharishi bhai. Nice. I like what you did there. Nice one, yeah, nice one. Well done, bhai, well done. But only for, preventing nuclear war, by the way. Poem वाले भी होते हैं क्या? हाँ भैया, poem डाली थी मैंने. By the way, knight c4 played by black. Yeah, he plays the best move again. Curious question. आप अकेले स्ट्रीम करते वक्त ईयरफोन क्यों लगाते हो? Because कई बार क्या होता है यार कि मतलब पुतिन कॉल कर सकता है या यूक्रेन का प्रेसिडेंट कॉल कर सकता है. They might have some questions to ask me. Also because I like to hear the music you guys are hearing, so मजा आता है सुन के. Background music, अच्छा म्यूजिक है. भाई 2022, अच्छा 2022 चला है भाई. 2022 लिखा उसने. अच्छा 2020 लिखा है उसने. ओ फिर तो गलती हो गई भाई, फिर तो गलती हो गई यार. I can't make you mod. मैंने mod बना भी दिया था भाई, पैर पे कुल्हाड़ी मार दी उन्होंने. आपको पता है क्या शिरोव 19 में वर्ल्ड नंबर 2 था? पता है भाई. He was so strong with some crazy opening ideas. बताओ टिक्कू भाई क्या गड़बड़ किया है जो मैसेज डिलीट करते पढ़ रहे हैं? भाई मैंने कुछ डिलीट नहीं किया भाई. हरिकृष्णा गेम. लेट्स गो टू हरिकृष्णा's game. Honestly, I think if anybody can lose this, it's probably Harikrishna. So I think this will probably end in some sort of draw. So I expect a draw here. And in the game of Anish Giri, oh bhai, dead draw. Like this is dead draw bhai. Completely drawn. Same side pawns, no weaknesses. Dono ke rook active, queens active, dead draw. So also a draw chat. We go to Rapport against Fedoseev. And Fedoseev is putting pressure, yeah. So he is trying to put some pressure, but most likely it's a draw. Let's go to the game of Vidit Gujrathi. Vidit Gujrathi, welcome back. Let's go. सीवे का 250 है भाई. स्ट्रीम अभी स्टार्ट करा होगा, वो बढ़ जाएगी भाई, बढ़ जाएगी. ओवीडी का हाल ठीक है भाई, कॉम्प्रोमाइज कर लें फिलहाल सोफर. ओके, और लुक्स गुड. हाँ भाई, वीडियो गेम में कोई विन का चांस? भाई कोई चांस नहीं है यार. मुश्किल लग रहा है मुझे, मुश्किल. आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो 2.5 कदम का पीस है ना, ये फालतू में भागे नहीं पड़ता यार. बिशप के सामने नंगा नहीं, कपड़े फाट जाता है ना. ये कच्चे भाई, कच्चा भी बेरली पहन रहा है, कच्चा भी लूज है इस नाइट का भाई. ये बिशप देखो कितना स्ट्रॉन्ग है. आई डोंट लाइक दिस नाइट ऑन C4. नाइट C4 में क्या कर रहा है? ये क्या था भाई वैसे? हाँ, द किंग ही इज 20. थैंक्स फॉर प्रोटेक्टिंग वीडियोस किंग. ऑफ कोर्स हितेश भाई. भाई छोटा टिक्कू G8 पे क्यों है? अरे भाई वीडियो किंग को प्रोटेक्शन देने के लिए भाई. किंग G8 ने कौन सा कच्चा पहना है? पता नहीं भाई, आई कांट सी. VD has chances of draw. Yes, if he draws, he will still have chances to qualify. I love to watch it. Thank you, Sanjay bhai. AG game will be draw. Le Artsol yellow. I will probably be a piece of next. Why? Wo Artsol? Oh, BC played now. What? What a stupid move, B3. Now 96 draw. Dead draw, chat. Dead draw now. VD has a draw in hand, chat. This is the draw now by force because no chance. No chance. Dead draw, chat. Dead draw. I can bet not my life, but I can bet anything on it. This is going to be draw now. मेरा protection काम आया भाई. Shirov had to go rook d7. He actually played the move b3. Now knight d6 defends the e4 pawn. मारना पड़ेगा. White will be slightly active. Black will go rook c8. And this should be an easy draw now. Very easy draw now. Okay, very easy नहीं बोलना चाहिए, but yeah, it's easy. It's just easy. Check Mamedyarov क्या बोल रहा है? Mamedyarov. Okay. Rook b2 apparently is a mistake.
Wow, but maybe rook b2 is a like a transmission error. It makes no sense. What is rook b2? Ah, okay, this was attacked. But still weird. Anyways, Mamedyarov words. Let's go to the game of Vidit again. Don't play b3 unless your name is Mr. Beast. True bhai. Let's go. आज ड्रॉ हो गया तो वीडी का चांस में कोई टाटा स्टील में तो कोई चांस नहीं है, उसको लिए टाइम मशीन इन्वेंट करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे चांस मेंटेन रहेगा. आफ्टर बिशप d6 there is rook d8. Yeah, true, there's rook d8 bhai. You're actually correct, and then VD is even better actually. So he's even better actually. You are correct there. I actually thought, yeah, even this is not so bad. I think this should also be a draw. Takes and king f7, but you're right. Actually, rook d8 is there. So let's go knight d6 bhai. VD, come on, let's go. Virat का 100th match था. Okay, interesting. Can you hold on to a draw against Shirov? Most likely yes, bhai. Most likely yes. It's a rook endgame. Very simple. No complications here. Knight d7 is very safe for black, I think. AG will qualify for sure. AG is confirmed to qualify. There's no doubt AG is qualifying, chat. He will of course qualify for Pool B. Harikrishna has almost zero chances. He has to win this game, which is not happening here, of course. So I think this will be a draw most likely. Anish is also going to draw today. And finally, we have Fedoseev, who will also most likely draw. So a lot of draws today, including Vidit's game most likely. Let's see what happens. Sahil saying dead draw, VD king sacrifice. भाई मैं ही हूँ किंग, आज सैक्रिफाइस नहीं होगा भाई, मैं ही बैठा हूँ वहां पे. Yeah, it's the only move actually. Yes, he played it. Awesome. Chat, anything senseless? Sahil, oh अच्छा, interesting लगा भाई. ये क्या है भाई? ऐसा नहीं है. हाँ आतिश भाई, he passed away. That was a tragic news. E5 makes no sense because if you play E5, I can simply move my bishop to C1, or even like somewhere here, maybe at 6, even G3 actually looks better. The knight has to move, and now I take on E5, so that would be really bad. So knight is his best move played, and now white has to play rook to D4. Threat takes and rook takes E4. Now I play king to F7, bishop takes D6, c takes D6, rook takes D6, and now I guess simply king F6 should be okay. Bring the king to E5, and to be honest, yeah, white's rook is active for sure, but black is also very active. Now rook to D8, rook takes A6, rook D1 check, king H2, rook D2, and it should be a dead draw, chat. For example, king G3, rook takes C2, rook B5, rook takes A2, rook takes B5, and we'll have this endgame very soon. Rook D4 played by white now. आज काफी जल्दी खत्म होगा यार, nice. Why can't white take with the bishop and win a pawn? If he takes the bishop, he will win a pawn for sure in the next move. But if he directly takes, I can pin the knight bishop actually. And now I will capture back. For example, rook d4. Now c takes d6, rook takes e4, king f7. And this is a better pawn structure for black clearly. No isolated pawns, and black has the open file now. So only black can win this one. So it's definitely better for black. That's why he plays rook d4 first. Taki now, if you play rook d8 now, let's say you play rook d8 now he can play c4 and he is not forced to capture. So hopefully Vidi will not blunder this. And if you just play king f7, then he now takes, pawn takes, and plays rook takes d6. He wants to capture this pawn, not the pawn on e4, because it's doubled right now. Anyway, let's go to this position. Let's see what happens. Nihal is the same hotel as Vidi. I don't know why that's important. Why? ऐसा क्या काम करेंगे उस same hotel में जो उनको जरूरत है? What do you think of Adiban's form? He finished 20th in Nationals. Not great times for him. Yeah, not great form for sure, but I'm sure he's the beast for a reason. He'll come back strongly. He'll need some prep. He got married last year at the end and must have been kind of, busy with other things. And as he mentioned, he's also making a course, yeah. So, what काम चाहिए थी इसको? भाई विन का चांस नहीं है क्योंकि आप वहां बैठ गए. बोर्ड गॉट जिंक्स्ड. भाई मैंने वीडियो गेम को डिफेंड किया भाई. वीडियो गेम को डिफेंड करा है मैंने. 18 प्लस कुछ नहीं है भाई. भाई सर निकालो बाहर. भाई सर निकालो. सब घर पे 18 प्लस नहीं होती भाई. बेसिकली Engine says h5 lamao. Okay, h5 is okay. I mean, it's not a bad move, but king s7 is very normal. It makes a lot of sense. There is one white queen and all that's called with black pawns. What is this called? One kind queen. पता नहीं भाई क्या होगा. Alex Mark. I don't know exactly what that is called. Why is your face on Vidi's king? Bhai, it's me. Today I decided to defend Vidi's king, chat, and I have defended Vidi's king like crazy. And now he is absolutely safe. तो पूरी मेहनत के बाद जाके वीडियो किंग बचा है भाई. मुझे G8 पे बैठना पड़ा literally. So crazy.
E3 also possible, but I would not play E3 chat because we want the bishop. We want the black to bishop to give itself up for the D6 knight and this pawn. हम चाहते हैं ये bishop, तो इसलिए we will allow him to capture on D6. A4 possible. A4 for white, yeah, it is possible, but black will not do anything. He will just wait. He will just play king f7 and then go king f6 and threaten e5. So it will not change much in terms of the position here. White can capture, of course, but that will only give black an open file. So a4 would not make much sense here. It will not change the position actually. Why not king f5? Awesome, why? Because it's illegal. Butter chicken tikku masala for chat today. अरे भाई butter chicken tikku masala क्या करोगे खाके यार? क्या कर लो ये खाके भाई? Put beast chat face on white king. नहीं नहीं भाई. Not only Harikrishna, Anish Giri as well, chat. देखो, Harikrishna and Anish. I'm defending all the Indians kings today. भाई पूरा जान लगा दी कि आज कोई ना हारे. आज पूरी जान लगा दी भाई, कोई किंग ना हारे भाई. Very important. Yeah, knight f5. But knight f5 basically allows rook d7 chart. I'm worried about such moves. We don't want these moves, yeah. We don't want to some threats on our king. That's very, very dangerous. So I think we just try to exchange this bishop for the knight. हमें exchange चाहिए. We want him to capture. Genius Tikku, thanks a lot, bye. Yeah, king f7 now is a very good move. I think that will be very logical. And with rises, this is a draw now because this is very clear. भाई तुम मस्त काम कर रहे हो, भगवान तुम्हें सब्सक्राइबर्स दे. Thanks a lot, भाई. Thanks a lot. क्या एजी कैंडिडेट जीतेगा? पॉसिबल है भाई. अगर लास्ट टाइम ही वाज ऑलमोस्ट देयर, ही ऑलमोस्ट वन. Nihal and Vidit same hotel, and I am sure Hoyo is not Oyo. Okay, king f7 now, good move. Rook c8. Yeah, also possible, but I would just play king f7 because at some point white might attack the e6 pawn after capturing on d6. So ये pawn defend करना ही है. जो पहले अर्जेंट काम है उसको करते हैं, पहले किंग f7 खेलते हैं. बाकी नाच गाना तो बाद में हो सकता है यार, वो तो बात की बात है. पहले काम कर लो, बाद में नाच गाना. Delayed gratification. Rook d8 would be also possible, but white has c4 and he tries to go c5, and that will again be better for white, slightly better. So it can be avoided. I think that might be best. Just returned, happy to see Vidit drawing. Yeah, let's hope so, bhai. But draw क्या कर रहा है Vidit? क्या कर रहा है भाई? What is he actually drawing? I hope he's drawing something like a chicken or something like a house. Yeah, मतलब. What about rook b1? Okay, rook to b1. Interesting. Possible. I think Arjun will be playing in Candidates 2-3 next year. Yeah, it is totally possible. But actually, Candidates is too far away. I think पहले उसको Grand Prix और events तो खेलने दो. Like he has done really well, but what we have seen is कई बार बहुत सारे लोग ऐसे जोश में आते हैं and then they kind of plateau for a little bit. So let's see how far he goes. PJ अरे भाई क्या करे यार, हम भी गरीब लोग PJ मारने पड़ते कई बार. I hope Shirov will blunder in this endgame. It's highly unlikely, why? It's highly unlikely. NM PJ Tikku. Oh, by the way, he plays king f7. He played the move king f7. Very logical. C5. Awesome, bhai. Free knight देने के लिए तैयार है Mr. No. No, Mr. No C5. No C5. किंगसन गया तो आप भी शिफ्ट होगे क्या? अरे हाँ भाई, मुझे शिफ्ट होना चैट. Let's shift. Time to shift chat. Let's move ourselves along with the king. I am coming, chat. मैं आ रहा हूँ. I am coming. Let's go. Now black king is defended by Sahil. It is defended by obvious. Arjun will reach 2730 by Tadasli 2023. अरे he might even reach higher. Who knows? King Kong incoming. Yes, roundup में chat. Harikrishna will draw his game most likely. Anish Giri will also draw his game. Dead drawn position. Rapport will also draw his game against Fedoseev. So it's too many draws today, and most likely Vidit will also draw against Shirov. अरे भाई, अरे हर चीज 18+ नहीं होती मेरे भाई. Anyway, let's see what Shirov plays. Rook a4 for black. Rook a4 for black. Awesome. उड़ के भाई सीधा सुपरमैन की तरह रुक जाएगा भाई, सीधा यहाँ से पॉन के ऊपर छलांग मार के rook a4. Awesome. What about rook e8, e5? But rook e8 he will just capture on d6, so that doesn't change much. Vidit's king now took charge. I took charge. भाई मैं ही उसको उठा के लाया हूँ, मैंने मोटिवेट करा. चल कल आगे चल king f7 पे. Everyone will draw, but what क्या? But कुछ नहीं भाई. But तो कुछ भी नहीं है.
आपसे बचने के लिए उसने किंग चला था उससे हमसे नहीं बचने के लिए भाई, हमारी मोटिवेशन सुनिए उसने। लेट्स से रैपोर्ट इज सपोर्टिंग पुतिन एंड डिस्क्वालीफाई हिम। ऐसे नहीं होता भाई ऐसे नहीं होता, उसका एविडेंस नहीं है भाई। अर्जुन कौन सी टूर्नामेंट खेलेगा? अर्जुन आई थिंक विल बी प्लेइंग द बुलेट चैंपियनशिप नाइट एट 12:30। उसके बाद ही माइट बी प्लेइंग द रैपिड चैंपियनशिप टुमारो एंड देन ही ऑफ कोर्स प्ले सम मोटिवेट टूर्नामेंट। पता नहीं कौन सा खेलेगा वो। मैं रैप में बहुत करता हूं, बहुत से रैप करता हूं, क्या पहली बार करता हूं, ऑसम फर्स्ट बोलता हूं मैं। आपके ही जोक मारा ड्रॉ मतलब, अरे भाई छी 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 छी। I still feel Arjun lacks experience for candidates. Nihal seems more likely than Arjun. Yeah, right now actually even Nihal I'm not sure because candidates के लिए तो यार बहुत difficult है, as you saw already. Yeah, you have to play such strong tournaments. वहाँ पे first आना पड़ता है. It's not easy at all. Like मतलब Aronian could not even Anish Giri is not guaranteed, so it's very difficult. Like के लिए thumbs up नहीं, heart नहीं. अरे भाई heart ही बढ़िया भाई. Can VD win Tata Steel? Breathe. Yes, he can. Will you stream Bullet Championship? I will, bhai. I will stream Arjun's game. What if Bishop takes knight now also, then pawn be lost? Yeah, but VD is pawn up. So if he loses his pawn, it's not a big deal now. एक pawn ही जाएगा बस. Anish is guaranteed for sure he will qualify. It's not guaranteed, man, because after all, अभी Grand Prix 3 pending है. And also, Hikaru and Aronian have like 13 and 10 points. Even if Anish wins this event, wins the pool and loses later on, he could get like 7 points. It's not guaranteed at all. Yeah, but once you, I think White will take on d6 now, so there is no time for King e5. White will take on d6 right now. Even if Arjun qualifies, he mostly will perform well in candidates. Tata Steel Master next time will give more insight and experience. Yeah, we'll get to know more. Yeah, exactly. क्या होगा exactly कि वहाँ पे how well he plays. Sir, please tell me name. आकाश भाई, मेरा नाम साहिल है यार. And मैं वीडियो किंग का डिफेंडर हूँ आज. भाई वीडियो गेम कब से चल रहा है भाई? क्लासिकल गेम है, ऑफ कोर्स लंबा चलेगा. बुलेट चैंपियनशिप आज रात को 12:30 बजे है अर्जुन की. वीडी इज पॉन हब. ये कहां से आया? ओके चैट, देखते हैं. देखो, हमारे पास वाइट के पास रुक है, ठीक है. हमारे पास है रुक, उसके पास है बिशप, हमारे पास है नाइट, ठीक है. और हमारे पास है 150 करोड़ लोग, उसके पास है 5 करोड़ लोग. सो क्लियरली वी विल विन और एटलीस्ट ड्रॉ. देयर इज नो चांस. आप बुलेट चैंपियनशिप नहीं खेल रहे आज भाई. आज वो क्वालिफायर्स नहीं है, मैंने क्वालिफायर्स खेले थे. आज तो फाइनल वो है, मतलब मेन इवेंट है, उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ ऑफ कोर्स. Have you noticed this? When Vidit wins a game, the next day watching increases, and when he loses, the next day watching goes down. I might be wrong though. That's not true, भाई. I think आज समय स्ट्रीम कर रहा था. That might be one reason. It's not because Vidit lost. I think Vidit को सपोर्ट करते हैं लोग. There's no doubt. Are you a okay? मनस भाई अपने ड्रीम्स बता रहे हैं कि भाई मतलब मुझे बनना है. क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो? I cannot guide you, मनस भाई. आपको किसी और को ढूंढना पड़ेगा. Are there any winning chances of Vidit here? To be honest, no. I think he can easily draw this, but there are no winning chances unless white somehow over pushes. But that's also unimaginable. How white can even push here is just a dead draw. Once white captures on d6, it's a draw then. So it's in white's hand. Does he want to play h4, win the king, and keep it going on, or does he want to capture and take back the pawn and take some risk? But I don't think he will take the risk. कल रोनो का क्या ही मैच था, मजा आया था. बस आपकी स्ट्रीम कमी थी. वही तो भाई, आज करेंगे स्ट्रीम. और आज तो बहुत क्रेजी है बिकॉज डैनियल नैरोदिस्की के साथ मैच है यार. एंड नर्स की तो पता है कितना स्ट्रांग है. सो बहुत डिफिकल्ट रहेगा यार अर्जुन के लिए. जितना भी स्ट्रांग हो अर्जुन, इट्स नॉट इजी टू डिफीट नैरोदिस्की. Did Fedoseev win or lose? I think Fedoseev will draw today. I think उसकी गेम ड्रॉ चल रही है. Let's have a brief look. Yeah, it's roughly balanced. One weak pawn each, so should be draw. Let's go to Vidit's game. साहिल इज अ बॉर्न स्टार. ये क्या भाई, बॉर्न स्टार क्या होता है? उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है मुझे यार. प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है उसकी. कल वे वाले मैच में कौन जीता? देखो विकास भाई, कल मैं आई कैन टेल यू वन थिंग कि कल विदित और रैपोर्ट में से ही कोई जीता है कल. मतलब उसके अलावा कोई नहीं जीता.
प्लीज गॉड घोड़ा नाला, ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस मानसी? Dan is a great teacher. His speedruns are very good. Yeah, they are good, but hopefully his chess is not so good tonight. I hope so. पीजे भाई, पीजे आपसे ही सीखा है हमने. कुछ भी मतलब कुछ भी फेंकेगा रूशल चैट में. मतलब जब बुलेट से खेलेगा, ए हरा दिया. जब बुलेट में हारेगा, ए आपसे ही सीखा है हमने, इसलिए हार गया मैं. भाई हर चीज में पेल रहा है भाई रूशल भाई. Daniel wrote a book at 14. Amazing. Yeah, of course. He's awesome, bhai. And I loved his book. I've seen a couple of his books. They're awesome, yeah. Arjun, next classical tournament, I am not really sure about this. Kaun sa rahega, but we'll see it very soon, which one he plays. But I'm not sure about this yet. It might be Reykjavik. I think all, upcoming players love to play Reykjavik because Carlsen played that when he defeated Kasparov. So maybe he will play that one. पूछ लो स्टेफन से. अरे स्टेफन क्या भाई? स्टेफन तो भाई एको चेंबर की बातें कर रहा है भाई. स्टेफन से क्या पूछूं? मुझे पता है ना. निहाल क्या बुलेट चैंपियनशिप में इंडियन अपार्ट फ्रॉम अर्जुन प्लेइंग? आई थिंक निहाल एजुकेशन अर्जुन इज प्लेइंग एंड रौनक इज प्लेइंग. भाई दो इंडियंस आर प्लेइंग. दानिया हैज प्रोबब्ली द बेस्ट कमेंटेड डुओ योर व्यूज. या मोस्ट लाइकली भाई, मोस्ट लाइकली लाइक इंस्ट्रक्टिव वे में फॉर श्योर. धमालू वर्सेस धमालू भाई, धमालू. इवन मैग्नस फियर्स डैनियल व्हेन दे प्लेड ऑन लीचेस. Yeah, I think there are few people who play very bullet very well. For example, it's Nalski, Hikaru, Magnus, Firuzcha, and all these guys. Sad news, Shane Warne passed away. Yeah, Agrim bhai, we heard that a few hours back. I think a couple of hours back. Firmly believe he would have be Adiban with level if he kept playing OTB. Do you mean not Adiban? Like you will be with level? Yeah, but I think he had a couple of bad OTB tournaments, I think, last year. That's why he did not play too much. Can Carlsen convert this into win? Carlsen can convert anything into a win. But to be honest, the issue here is white के हाथ में सब कुछ है. White के हाथ में सब कुछ. And if he captures on d6, I don't think Carlsen or Stockfish, anybody can convert this. So I think, yeah, it's probably a forced draw after this one. I don't see how anybody can win this actually. So it's in White's hands. Can White try to somehow push in some other way instead of giving up the bishop? Or will he just take the bishop and take the pawn? Let's see what happens. गोकुल भाई, आपकी गर्लफ्रेंड को पिला दे क्या? हो जाए, क्या बोलते हो? Do you love chess? I love chess. I love chess a lot भाई. निहाल कैसे भूल गए बुलेट? निहाल का हाँ, बट निहाल भी है भाई. निहाल भी, of course निहाल भी है. अच्छा, you meant Daniel. True. Arjun will be a good candidate in next Tata Steel because I hope till that time he will be 2700. That will be awesome. But I think whether he'll be qualified for the candidates is a big deal because यहाँ पे बहुत सारे 2700 players will not be able to qualify for the candidates. So let's see what happens. But Magnus couldn't win a +3 position against IM. Okay, that was, I mean, he must have underestimated the IM. Of course, he must be playing on autopilot. That's why he drew that game. Against some strong player, he will not do that. Arjun will play in Bangladesh Open. ये fact है क्या मानस भाई? Are you sure? Are you sure he's playing that one? Interesting. Andrew Tang is pretty awesome, but I think recently he's kind of suffered a bit. But yeah, he's very strong, of course. Actually, surprisingly enough, even Nepo is very strong at bullet. Yeah, unless he plays C5. सोचो नेक्स्ट कैंडिडेट तक अर्जुन 2800 हरीजा होने लग जाएगा. डिपेंड्स भाई, नेक्स्ट कैंडिडेट से पहले तो अलीजा वर्सेस कार्लसन ना हो जाए भाई, क्या पता. Anish blundered. It's not even possible, Kilan bhai. It's not possible. Let me check. How can Anish blunder here? Anish has already drawn, bhai. He's already drawn. Anish has drawn, chat. He's already drawn. Yeah, 2 pawns each, as mentioned. Very easy. And now Harikrishna trying to complicate matters, but not really much. Opposite color bishops should be same color bishop, sorry. But still, symmetrical structure, yeah. And white has a weakness to attack on a6. So this pawn is the closest to queening, and that's why if this pawn falls, white can win very easily. So I think this will be a draw as well. So, and we go to Rapport against Fedoseev. Knight to a5, trying to attack this pawn, but black can go knight e5, trade the knights, and then capture on b3. So dead draw as well. Let's go to the game of Vidit now. Anish blundered, so draw. Hikaru bullet god OP, that is true. But I think आज मजा आएगा देखने में what happens in the bullet championship, because आधे घंटे का ही है and they will get to play roughly going by Rounup's games. They played like, I think it was 8.5
7.5. So it was like 16 games or so. So yeah, I think बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा सब देखना वो. आज हिकारू को पहला जाएगा भाई. हिकारू पता नहीं यार, हिकारू का मुझे पता नहीं. हिकारू को पहलना बहुत मुश्किल है भाई. आई थिंक 4 लोग भी लगा दो ना टॉप के, तब भी आसानी है. Actually, with Levon is good Bullet. Yeah, all top players are. I think all top players are. But I think some people have a proficiency in Bullet. Like अपने level से ज़्यादा अच्छा खेलते हैं. उस सब में I think Hikaru is there, Nihal is there, Penguin GM is there, Danya is there, and so on. This is a simple draw, Sahil bhai. हाँ, simple draw है. The only thing is, will White take on D6? That's why he's thinking, because that's why White knows कि once I take on D6, it's a draw. Do I take or do I fight on somehow? That's what he's calculating, yeah. हिकारू को कोई पेल देगा तो बोलेगा जेट लैग गई. ये तो है भाई, हिकारू के बहाने तो बहुत होते हैं भाई, ये तो है. हिकारू बहुत टाइट है, इसका क्या मतलब है यार? चेक अनीश एक्यूरेसी, अनीश एक्यूरेसी, अनीश एक्यूरेसी. ओ 98.5, ओ 99 एक्यूरेसी फॉर अनीश. क्रेजी. 99 फॉर अनीश, 98.5 फॉर तबातबाई. क्रेजी भाई. हु इज पेंगुइन जीएम? भाई बताओ भाई चैट, कौन है पेंगुइन जीएम? What about bishop e5? You could play it, man, but I could simply play king e7, and I think black is already better now because you can't. Yeah, he took on d6, chat. He took on d6. Only chance to take on d6 and capture on d6. So he took on d6, and now we will see a quick draw. Let's see how it progresses, chat. Let's see how it progresses. c6 tackled by Vidit now. Rook d6 played by White. Now we will see. I think probably rook c8 or king f6. Let's see what happens. I think king f6 first because you don't want rook d7 check later on. If you play like rook c8. Then you probably have rook a6, rook takes c2, rook a7, king f6, rook takes h7, rook takes a2. Now even this is a draw, I feel. Yeah, even this is a draw, but why take this stress? Why not king f6 directly? Let's see what happens, chat. Let's refresh this one. Rapport words, क्या बात कर रहे हो तुम भाई? Let me check. काहे का वर्स यार? ड्रॉ ही तो है यार, ड्रॉ ही तो है. भाई मेरा पीछे पढ़ो कह रहे हैं. Andrew Rasna Penguin GM. Penguin GM is Antarctica's only GM. He's representing his fellow penguins. Nice, nice. That was still okay. Anish should start courses on how to draw games easily. To be honest, man, it's not. I mean, bored हो गया यार draw joke से. Because f7 square is weak, your face is there. भाई 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 मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो भाई? मतलब मैं तो उसको डिफेंड कर रहा हूँ किंग को यार. तब तो भाई मैं उसे किंग के साथ चल रहा हूँ लाइफ में, और तुम मुझे रोस्ट कर रहे हैं हाथों को यार. जीएम टिक्कू, अरे थैंक्स भाई. Come on, come on. Sahil bhai, is c2 the worst square in Hari's game? Please check. C2 the worst square. Yeah, but I think the problem here is कि मतलब whatever black does, this pawn will always be weak, and white will always have counterplay with this. So I think this is just a draw. You capture, I go b4 and queen c4 takes. Yeah, I don't know this. Yeah, takes b4, queen c4, and white is clearly fine. There's no pressure on white. Bishop defends the pawn. There is pressure on a6. So I think Harikrishna can't win this. There's no chance. Let's go to Vidit's game now. Yo, like a boss, क्या हाल है? अनीश किंग को बहुत अनफिट कर रहा है यार. अच्छा तुम c2 उस तरह कह रहे थे. ओ जोक मिस्ड. अरे यार सॉरी. ओके नाउ इट्स फाइन. हाँ अब ठीक है. सॉरी भाई, मैं हरिकृष्णा किंग को छोड़ चुका हूं. सॉरी हरिकृष्णा भाई. चल चले दूसरे के घर ऐ मेरे हरिकृष्णा. बाय बाय भाई. सॉरी यार, आई हैव टू गो. आई कांट हेल्प यू हरिकृष्णा एनी मोर. आई हैव टू हेल्प वीडी राइट नाउ. लेट्स गो वीडी भाई, कुछ करो चमत्कार. हिम्मत हो तो आज बुलेट चैंपियनशिप में किंग पॉन एंड गेम में किसी इंडियन के किंग पे बैठ के दिखाना. RIP yours. भाई ये क्या है भाई यार, इतना बढ़िया गाना गाया मैंने. मतलब मुझे मुंबई बुला लिया भाई इंटरनेट वाले. फ्री की मुंबई की टिकट मिस कर दी मैंने. इमेजिन करो. वीडियो किंग पे विशी सर लगाओ. ये क्या है साहिल भाई? विंड डिगर. विंड डिगर क्या है भाई? ये पहली बार सुना है. दुनिया में हर कोई विंड डिगर नहीं है. कान से खून आने लग गया जाता है. गाया मत करो प्लीज सर जी.
भाई यार तुमने 20 स्टार स्ट्रीम नहीं देखी लगता भाई, वहां पे तो आता है, कुनवा नहीं आता खून तुम्हें है? वीडियो किंग पर मैग्नस को लगाओ, आपको लगाने से क्या ही होगा? तुम समझे नहीं भाई, मैग्नस वेला आदमी नहीं है। अगर वो यहाँ बैठेगा भी तो ही विल हैव 10 जॉब टू डू। मैं यहाँ हूँ, मैं पूरा अटेंशन से बैठा हूँ भाई, पूरा फोकस से बैठा हूँ यहाँ पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो किंग एफ6 चैट शुड बी प्लेड नाउ। हाउ इज रैपोर्ट डूइंग? रैपोर्ट इज डूइंग ओके, आई थिंक इट विल बी अ ड्रॉ नाउ इन दिस गेम, एंड दैट मीन्स वीडी को एटलीस्ट ड्रॉ चाहिए, विच ही विल मैनेज आई थिंक। हेलो अर्षित भाई, क्या हाल है? अगर किंग सैक हो जाए तो चेस असिस्ट भी सैक, ये भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। विदित भाई देखो भाई, पूरा सपोर्ट है भाई, मुझे सैक मत कर देना बस। कराकन लगा दो, वो बहुत वेला है भाई। कराकन यहाँ पे कोई धरने ही बैठ जाएगा, मैं नहीं चलता भाई, मैं नहीं चलता भाई, पहले वॉर लगाओ, पहले वॉर करो, पहले वॉर करो। किंग को भी नेटफ्लिक्स बंद करके खेलना पड़ रहा है। दैट इज ट्रू भाई, आई थिंक नेटफ्लिक्स का लोगो यहाँ पे G7 पे लगा देते हैं, that will be awesome. Let's try it भाई, let's try. नेटफ्लिक्स का लोगो का है यार, let me see. Let's see if it works. Let's see if it works, chat. Let's see. रुको, save as. Okay, looks good. Chat, जब तक के लिए my opponent, जब तक के लिए I'm thinking. So I think Vidit is thinking. Sorry, I think I will pass some time with Netflix. So let's watch some Netflix right now. चलो भाई चैट देखते हैं Netflix. Let's go भाई. मैं मूवी देख रहा हूँ तब तक। सॉरी, यहाँ होना चाहिए, आई थिंक यहाँ होना चाहिए F8 पे। Let's watch some Netflix chat. Let's go भाई। Pawn A5 is not required. Pawn A4 में I think Rook B6 आएगा, and the B5 pawn will be weak. And if you, for example, A5 now Rook B6. If you go B4, then sometimes Rook B7 and the H7 pawn is hanging. So let's not do this. Bhai, please stream Arjun versus Dania. I will stream it, bhai. I will stream it. I think it's at 12:15, right? 12:15 पे I will stream it, bhai. Sponsorship incoming, कुछ भी। दिक्कत भाई, क्या समीकरण है वीडियो क्वालिफाई करने का? भाई समीकरण मुझे पता नहीं भाई। चांसेस की टर्म्स में I think he has decent chances, but not great chances. Let's see. Has anyone won a tournament by drawing all games? Not really, ever. Why? Never has anybody won by drawing all games. मूवी अच्छी थी भाई, मजा नहीं आया, लेकिन let's delete it now. Netflix में फालतू का सब्सक्रिप्शन ले लिया यार, क्या फायदा हुआ? Can Vidi win because of e-pawn? He can. There is potential in the e-pawn if black goes wrong, white goes wrong, but it's highly unlikely white will go wrong here. White can just sit here forever. Or on C6, and I don't see how black can play any advancing moves. Should be a draw, chat. क्या तुम पास ये बताओ कि वीडी टाटा स्टील जीत पाएगा कि नहीं? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं टाटा स्टील कैंसिल ही करवा दूंगा भाई कुछ करके, भाई हद हो गई भाई। किंग C4, ओके, किंग टू C4 नॉट पॉसिबल। I have just solved 50% woodpecker, study a bit of rook and games from Devsky manual and Anish, and of course one chapter every day. Is it good chess routine? Yeah, decent enough, भाई, decent enough. बोले चेसों के टैक्सेस भी कर लो। भाई यंग हीरो का मैग्नस कार्लसन सुनो, मस्त है भाई। यंग हीरो कितने डिस कर रहे हैं भाई? आई थिंक कुछ इसने कार्लसन का समय का डिस करा है, कार्लसन का कुछ करा है, लेविया कुछ करा है भाई, कितने सारे डिस करता है बंदा। रुक पॉन एंड गेम्स आर ड्रॉन, यस इट इज अ ड्रॉ चैट। बस वीडियो प्रूव कर दे एक बार तो हम सब बस चैन से रहें। किंग E7 ऑल्सो पॉसिबल, बट आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेव दिस पॉन, सो H5 या फिर किंग F6 मेक्स मोर सेंस। तो if Vidi wins ABC pawns with king ignoring other pawns, he can win Magnus Fond. Yeah, but ये king यहाँ पहुंचने से पहले तक भाई, तब तक तो यूक्रेन की वॉर भी खत्म हो जाएगी भाई। I don't think this will happen भाई, this will not happen. Tikku to E7 भाई, Tikku will not move to E7. Tikku will move where the king will move भाई, very important. Dish नहीं किया है, अच्छा okay. Come on Vidi भाई, come on. Best move for Shirov is भाई, Shirov is white. अरे बढ़िया गाने बनाता है। ओके, हाँ मैं सुने नहीं है, देखने पड़ेंगे। Can someone make it to candidates in 2029? अरे भाई he can, बट उसके लिए उसको अपने सारे काम धाम दुनिया सब भाई पूरा मॉन्क बन के चेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड आई डोंट थिंक ही विल डू दैट और एनीबडी विल डू दैट। टिक्कू सैक कर दो वीडियो भाई मेरे को सैक मत कराओ भाई, मेरी भी इज्जत है भाई, कुछ अपनी भी भाई फीलिंग्स है भाई, हर्ट हो जाएंगे यार। एमिनम ने अपनी ये क्या है यार, तुम क्या बता रहे हो मनोज भाई, क्या है ये?
पता है शिरोव इज वाइट जोक था। ओ अच्छा जोक था क्या? यहाँ पर हम लोग खुल के इतनी मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। आई थिंक दिस इज द एडवांटेज ऑफ यू नॉट बीइंग आईएम और जीएम, वरना चेस की बातें ही होती है। आप जीएम बन जाओ तब ऐसे ही रहना भाई। ऑफ कोर्स भाई ऐसा ही रहूंगा भाई। पर्सनैलिटी होती है भाई और एनालिसिस होती है। रौनक बेट बॉटनिंग इसलिए या 8.5 7.5 वेरी क्लोज मैच। He can sacrifice everything except biryani. I think somewhere is moved for biryani. I don't know why I feel that way. लोग साड़ी में नाच के इतने इरिटेट क्यों करते हैं? ओके ये शादी था कि साड़ी था मुझे समझ नहीं आया। अर्जुन का मैच 12-15 होगा 90% if there is no tie breaks in the game. Yeah, it will happen at 12:15. I think tie breaks नहीं होगा, I think most likely. And Savara, I think I'll start streaming at 12:10 if this game ends. अगर ये लंबी चली, आई डोंट थिंक ये गेम चलेगी 12:15 तो आई थिंक दोबारा स्ट्रीम करनी पड़ेगी मुझे, उस टाइम करूंगा। Do you remember Hodor from GOT? I have not seen GOT until now, भाई। I have not seen GOT unfortunately, but देखेंगे GOT भी किसी ना किसी दिन। Okay, all looks good apart from VD's game. Come on VD भाई, कुछ चल दो यार, कुछ चल दो भाई। I hope Shirov resigns out of respect for Ghoda. Honestly, if Shirov loses this, that would be the most embarrassing loss for Shirov in the past, I don't know, decade or so, because this is just a dead draw, bhai. There is no chance for him losing this. Shirov को लालच देता हूँ समोसा का रिजाइन करके। मैं तो लालच भाई, रुको, मैं तो शुक्र लालच, रुको भाई। रुको, मैं शिरोव को लालच देगा भाई, रुको। So chat, I will give Shirov some लालच भाई, रुको। ए शिरोव के रुक, ए नूब रुक, तेरी बस की नहीं है भाई A6 मारना। अबे तेरी बस की ही नहीं है भाई, तू मार ही नहीं सकता मुझे। अबे कैसे मारेगा डरपोक, मार के दिखा बे, रुक। हिम्मत है तो तू मार के दिखा भाई, मान जाऊंगा भाई। तेरे में बॉल्स ही नहीं है भाई, तेरी बस की भाई, तू सपने में भी नहीं मार सकता मुझे भाई। मैं इतना स्ट्रॉन्ग पॉन हूं, तू कुछ नहीं करता भाई। मार के दिखा, हिम्मत है तो मार भाई, मार। चलो भाई, दे दिया भाई लालच इसको। डन। What's happening to the Black King? Just came. Black King is has some bodyguards right now. I am the bodyguard there. अर्जुन का कौन सा मैच? 12:15 भाई, बुलेट चैंपियनशिप है। Just makes you mad. We have lost साहिल। डिप्रेसिव कर रहे हो उसे लालच के नाम पर भाई, डिप्रेशन नहीं है। How are you even NM? Radicalization of a young innocent rook. Yeah, this is how you brainwash people, exactly. You are Mockingbird, it's a Grammy nominated song. I have heard Mockingbird, I have heard that song Mockingbird. Indian matches are the most rated thing for neighbors. That is true भाई। टिको भाई शादी में नाचेंगे if and only if पवन अर्चित और रिता सेठ। ये क्या है भाई, ये थोड़ी लॉजिक है, ऐसे थोड़ी बोलते ताकि भाई। That's kind of weird. निहाल का नेक्स्ट टूर्नामेंट आई थिंक इज इन बेलग्रेड। वो ओटीवी चेस खेल रहा है। ग्रैंड प्रिक्स के बाद कौन सा टूर्नामेंट स्ट्रीम करोगे? आई थिंक इसके बाद तो भाई कुछ ना कुछ सीओबी के आसपास ही करेंगे। सीओबी होगा, बुलेट एडिशन तो परसों है, वो तो एक दिन का है। सीओबी की भाई कुछ स्ट्रीम्स करेंगे भाई, प्रेडिक्शंस किसी को सिखाएंगे भी फॉर श्योर, तो मजा आएगा। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा वो भी है भाई, अगर या और कोई टूर्नामेंट अभी लेट मी चेक, और कौन से टूर्नामेंट आ रहे हैं भाई। मेल्ट वाटर भी आ रहे हैं, वैसे बहुत सारे मेल्ट वाटर है भाई। पानी बहुत मेल्ट करने का शौक है आजकल कार्लसन की टीम को, सो मेल्ट वाटर तो बहुत सारे आ रहे हैं। उसके अलावा टूर्नामेंट्स कौन कौन से हैं, लेट मी चेक। हाँ मेल्ट वाटर है, COB 6 है। हाँ अप्रैल में टूर्नामेंट्स नहीं है, मार्च में तो है भाई, मार्च में तो खूब है। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 29 भाई। ये चेस ऑक्शन का क्या सीन है भाई? मस्त सीन है भाई, ओटीपी होने वाला चेस ऑक्शन भी। आई थिंक समय ने किसी की स्ट्रीम पे बोला है, अपनी स्ट्रीम में कहीं पे कि मतलब ओटीपी होगा। पेयरिंग्स कहाँ है बुलेट चैंपियनशिप की? चेस कॉम पे है भाई, उसकी एक आर्टिकल था उसमें था, सो वहां पे था कि निहाल तो नहीं खेल रहा है बट अर्जुन इज प्लेइंग अगेंस्ट दानिया टुडे। कार्लसन तो पानी की तरह दारू पीता है स्ट्रीम पे भाई, फिर गालियां भी तो देता है, देखा था भाई मिडिल फिंगर दे रहा भाई प्लेयर्स को। ये भाई क्या अलग ही फेस था भाई, मतलब कार्लसन का वो। 29 + 21 इक्वल टू साहिल एज। भाई अपनी गर्लफ्रेंड की उम्र ऐड मत करो यार इसमें। बट दे सेड यू आर 39। हु सेड? अर्जुन का नेक्स्ट टूर्नामेंट पता नहीं भाई, आज तो खेलेगा वो बुलेट, पहले वो खेलने दो बेचारे को, फिर देखते हैं क्या होता है। बाय द वे व्हाई इज नॉट वीडी प्लेइंग भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है यार? 18 मिनट ही बचे हैं। कार्लसन कुछ भी करे गोट ही है, ये तो है यार, ये तो है भाई। कार्लसन ऐसा तो मस्त है। डैम यू सो यंग। क्यों तोज भाई, हाउ ओल्ड आर यू?
मैग्नस अलग ही लेवल पे गाली देता है, या भाई सच में भाई क्या ही पेल रहा था, मतलब एक बंदे को कहता है, मतलब लिटरली इवन इन द आई थिंक द banter bullets, he would constantly say, he goes to the end game. Doesn't he know I'm the greatest end game player of all time? Like, imagine like somebody saying, oh, he goes to the end game. Doesn't he know I'm the best end game player of all time? And it's actually might be true. Like, when have you heard that last time? Never. Sure, MVL's game is interesting. Really? Let me check. MVL. It is interesting. Yeah, it is interesting. Rook is an h6, very interesting position. Probably black should exchange queens with queen g4 or something, because white's king is definitely in the center. So if black exchanges queens, that's in black's favor. But yeah, it is complicated, but it is complicated for sure. Both have their own chances. White is probably trying to shift the rook somewhere here. Let's see what happens here. Let's go to the game of Vidit again, bhai. Vidit bhai, please खेल bhai. चेस ऑक्शन में क्या होगा भाई? प्लेयर्स बिकेंगे भाई, बिकेंगे प्लेयर्स भाई धनाधन। मैं 16 पर मेरे को लगा 35 प्लस हो तो अनएक्सपेक्टेड भाई, यार कितनी बेइज्जती एक दिन में करोगे भाई, कितनी बेइज्जती। If it was anyone apart from Magnus Carlsen gotten cancelled already, he called Andrew Tang. Oh, I don't think he would have gotten cancelled. I think it's like if he was like a professional streamer, yes, but I think it's all fine. It's not like he meant it. हेयर स्टाइल तो चुप चुप के वाले परेश रावल जैसी है आपकी भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? छी रुको भाई, चेंज करते हैं भाई, रुको स्पाइक्स मारते हैं भाई। ओके, इज इट बेटर नाउ? ए किरण, 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना तो बंदा उठता नहीं और जाता है। If you know, Sunny Deol did that movie, so that was the audition. Anyways, let's move on, bhai. When is Arjun's game? Tonight at 12:15. You look 29. The only thing is the gap between your teeth. अरे भाई तुम कितना भाई तोज भाई, कहाँ से सुपारी लेके आए हो मेरी भाई, बता दो कहाँ सुपारी किसने दी भाई, कौन था वो बंदा? अब छपरी टिकटॉकर ऐसा सामान की मिमिक्री भाई, कुछ भी। Chess of it's I don't know the exact date भाई साहिल नार भाई, I think it was mentioned as 11th or 12th, but exact date नहीं पता मुझे अभी। Sunny Deol trying to seduce, हाँ वैसे इंटरेस्टिंग है यार। Sunny Deol tries to seduce his wife or girlfriend at some point। कितना वीर होता होगा यार, उसकी आवाज ही ऐसी इतनी भारी है, मतलब क्रेजी होता होगा। आप तो 25 के लगते हो। थैंक्स अ लॉट भाई फॉर द काइंड वर्ड्स, अप्रिशिएट इट। आजकल भाई कितना ट्रेंड कर रहा है प्रॉप नाइट भाई, मतलब इट्स क्रेजी, मतलब हर जगह प्रॉप नाइट, मतलब प्रॉप नाइट ही प्रॉप नाइट है भाई हर जगह, मतलब क्रेजी है। वीडियो इज टेकिंग सो मच टाइम, आई डोंट नो व्हाई भाई, व्हाई इज टेकिंग सो मच टाइम। 25 उनके लैग हो गया स्ट्रीम। एक्चुअली इट्स नॉट मैग्नस, बस बुरी जगत का the guys he streams with are like that. Oh, interesting. I think Anisha would agree with you totally. Among Us 2.0 or what? Yeah, I don't know Aryan भाई, आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है बॉट ट्रेंड कर रहा है पता नहीं क्या हो गया मुझे। हाँ मैंने चेक कर लिया जी, I saw it. There are like 10 players, all 2600 plus. अब तक बेचारा OBS रो रहा था किंग के सामने खुद को जलाने के, आप सनी देओल सुन के मर ही गया। अरे यार Vidit भाई लगता है थक गया, he is tired of me being there. I should remove myself, I think, from that square. Time to remove myself क्या? I think chat. I think it's time. I think हमने काफी हेल्प कर ली वीडी किंग की। I think it's time to let the king free and आजाद पंची से छोड़ दे उसको। So let's move on chat. I think we can remove ourselves now. आजाद पंची है, जा भाई वीडी किंग, जा भाई अपनी जिंदगी जी ले भाई, जा। Let's play rock paper scissors till वीडी plays. भाई तुम्हें तो डिले मिलेगा, तुम्हारे लिए तो आसान है भाई। कौन सा मूव अच्छा रहेगा यहाँ पे भाई? ऐसा कुछ मूव रहे जिसमें मतलब पंप ज्यादा फ्री का नहीं दे। सो आई थिंक दिस एंड दिस लुक स्ट्रॉन्ग। Rook A7 is not that good because you want to play Rook C8. You want the Rook on the C file. So what's the point of Rook A7? I think H5 preventing Rook D7 check or King F6 preventing this check is important. For example, कुछ भी खेलोगे, let's say Rook C8 while we take this check, King here, take this, and white will win a pawn like this. Even this is a draw, of course, but why give a free pawn? So it's better
just to kind of play king f6 or h5 and not lose this pawn. होता है काफी लोग गैप, इट्स ओके नॉट टू बी ओके. आई नो भाई, आई हैव हैड इट फॉर मेनी इयर्स नाउ. What about king e7? Yeah, king e7 I think this does not solve the problem. I can go rook c6 again, just check it second. यहाँ आओगे तो I'll go here. मैं डांस करता रहूंगा भाई. So I think best is just to avoid this completely. Oh, he plays rook c8 directly. Wow. So he goes for this. Let's see what happens now, chat. He does not play king f6. Very interesting. Fall Guys, Prop Night, जो भी गेम ट्रेंडिंग होता है वो प्ले स्टोर पर क्यों नहीं होता? I don't know भाई. But the thing is like, I don't know chat, what's better? Like what's better? To play a trending game or to play a classic game? I'm very confused because trending game में ये है कि you can gain an audience like this, yeah. But then once that game goes away, then what do you do? Like I'm not sure. Yeah, this is a draw, but this is a draw. Wow, king looks a bit safer. हाँ, exactly. मैंने उसकी बहुत डिफेंस किया है. Now the king is safe, so I left him alone. And now it's all fine, भाई. Now it's all fine. Do you know ASSIOS उसने ही मैनस को बिगाड़ा है. Watching his streams you will understand. Oh, interesting. By the way, white took on a6 now. We'll have moves very fast. Rapport का क्या हुआ भाई? Rapport गेम देखते हैं. Oh, ow, completely drawn. खत्म भाई, completely drawn भाई, completely drawn. Let's go to the game of Vidit. King को भी थोड़ी प्राइवेसी मिल गई. हाँ भाई, हमने काफी प्राइवेसी इन्फिल्ट्रेट कर दी थी उसकी. नाउ हिज किंग इज वेरी ही सेफ बट होपफुली ही विल बी फोकस्ड स्टिल. मैंने फोकस मेंटेन करके रखा था उस किंग का. नाउ इट कैन बी डिस्ट्रैक्टेड. या सरगे ट्वीट ओएमजी पक्का स्कैम. आई एम श्योर ही हैज नॉट ट्वीटेड एनीथिंग. आई एम श्योर कुछ ट्वीट नहीं किया उसने भाई. इतनी गालियां खाने के बाद तो कुछ ट्वीट नहीं करेगा वो. फॉर श्योर ही विल नॉट ट्वीट एनीथिंग. लेट मी चेक. या कुछ ट्वीट नहीं करा भाई. बहुत गालियां खाई उसने, शायद उधर गया होगा शायद, क्या पता. As is the guy you see in the stream. Ah, interesting. Fake है, fake news. पता है भाई. Play COD, World at War, Modern Warfare, ये सब. अरे यार, but the thing is, I enjoy chess the most. And literally चैनल का नाम is chessassist, so it kind of makes no sense. भैया एक बार चेस में सब्स करो ना. अरे करते तो है भाई तोज भाई, जो गालियां देते हैं उन सब के लिए हम करते हैं भाई. अरे यार, स्कैम पकड़ा गया ऑफ कोर्स. Don't underestimate the Magnus of Karyakin. I think we need a rap battle between Karyakin and Sunny Deol. I think that will be a lot of fun. Hey, Karyakin, तू वॉर प्रमोट करता है, तू जानता नहीं है भाई. बड़ा मजा आएगा भाई. Dude, मैं 1258. Yes भाई, I do. समय ने स्टार्ट बुलेट प्रैक्टिस से किया था, फिर 2 मिनट बाद प्रॉप नाइट पर आ गया. Yeah, so just comparing itself. Samay, I think, had a watching of 3K during bullet chess, and now he has a watching of 11K. So very clear कि कौन सी गेम ट्रेंड हो रही है भाई. बंदा सेम है बट गेम डिफरेंट है. ओह क्या ही शब्द, बंदा सेम है गेम डिफरेंट. भाई कोड कर लेना कोई. अरे मेरी मम्मी COC टाइप का कुछ खेल रही थी उस दिन. अरे नाइस. COC क्या है वैसे? COD सुना है मैंने. COC क्या है? स्ट्रीम वॉचिंग 250. इतना क्या सोच रहा है वीडियो, मुझे भी नहीं पता. मारो यार, इतना दूर आ गए. इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड. ओह, ही वांट्स टू प्ले किंग f6 मे बी. किंग f6 ही वांट्स टू प्ले. क्लैश ऑफ कैंस. मैंने नाम भी नहीं सुना. बताओ भाई, सच में भाई मेरी उम्र लगता है 200 साल हो चुकी है. एल्डर रिंग्स बहुत चल रहा है आजकल. आई सॉ लडविग प्लेइंग इट. आजकल वो गेम बहुत ट्रेंड हो रही है. आप इतनी बार सर्गे सर्च करते होगे, आपकी सर्च हिस्ट्री में तो वही टॉपर होगा. अरे भाई, मेरी सर्च हिस्ट्री का मेरे सपनों में भी सर्गे ही आजकल भाई. हर जगह सर्गे ही सर्गे है. मेरे सपनों में जब सपने आते हैं ना, कोई एक्टर ऐसे बोलता है सर्गे, नाम तो सुना ही होगा. लाइक हर जगह सर्गे ही सर्गे है भाई. 8th पे छोड़ा था, काफी 18 था. इंटरेस्टिंग. टिक्कू चुग व्हाट्सअप भाई. चेसी खेलो, वो सब मत करो भाई. कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं करूंगा तो कैसे करूंगा. RIP सपने. हाउ मेनी मूव्स प्लेड इन लाउड? 28 मूव्स प्लेड चैट. 12 मूव और खेलने हैं. बट आई थिंक यहाँ पे उतना चक्कर नहीं है, बिकॉज आई थिंक 12 राउंड पहले गेम ड्रॉ हो जाएगी भाई. हमें रिक्वेस्ट एक बार सलमान की मिमिक्री. भाई सलमान की मिमिक्री कर सकते हैं यार, उसके लिए मुझे फुटपाथ पे जाना पड़ेगा. कहाँ है क्या कोई? अनफॉर्चुनेटली नो. अबे GR Martin wrote the lore partly for women ring. Okay, interesting. A lot of facts which I don't know. Trends are temporary, chess is permanent. Yeah, for 2000. 10 minutes remaining only.
अरे भाई बहुत टाइम है, 10 मिनट भाई, 10 मिनट बहुत टाइम है। 10 मिनट में तो आधे लड़की भाई 5 बार कर ले। 3 वर्सेस 1 पॉन साइड एक्सप्लेन करो। ये लग रहा है 3 वर्सेस 1 बट इट्स नॉट 3 वर्सेस 1 बिकॉज ये 2 पॉन जाने वाले हैं बहुत जल्दी, एटलीस्ट 2 पॉन जाएंगे। सो आई थिंक इट्स नॉट 3 वर्सेस 1 भाई, इट्स ऑल फाइट। I think Shirov has offered a draw. I don't think so he offered a draw because he is the one who's pushing technically in quotes. But let's see. Come on, let's go. By the way, Enrique and Gistuk have drawn. Interesting. आहा, क्या ही रेपिटेशन है भाई, रेपिटेशन तो देखो। चेक Here, ये चेक, क्या ही रेपिटेशन है भाई, क्रेजी रेपिटेशन, नाइस। लेट्स गो टू एनवीएल गेम में क्या चल रहा है, क्रेजी लाइंस, आई थिंक क्वीन से पॉन मारेंगे अब। लेट्स गो टू द गेम ऑफ तबातबाई, ऑलरेडी ड्रॉन। नेक्स्ट इज Vitiguov against Harikrishna, looks like a draw chat, dead draw here, nothing, no advantage for anybody, will be a draw as well, so Harikrishna will be out, 0.03% chance भी नहीं रहेगा after this game. Finally, we have Fedoseev against Rapport. Also, oh, wait a sec. ये प्यादा कैसे बच गया रे? What the hell just happened? Knight e3. Oh, takes. So white has an extra pawn now. Okay, still a draw, of course, but yeah, some chances for Fedoseev. Let's go to Vidit's game. Oh, he plays h5. He played the best move h5. Now let's see. Go. Vidit will have another 10 minutes. I think optimally think he has super power to lose the game like this too. He will not lose this by, even if he wanted to, he could not lose this game. ये गेम इतना ड्रॉ है कि मैं समय कोई बिठा दूं वो भी ड्रॉ कर लेगा भाई। लिटरली प्रखर विल ड्रॉ दिस ब्लाइंड फोल्ड, लिटरली मतलब नीतीश ठाकुर विल ड्रॉ दिस ब्लाइंड फोल्ड, इतना ड्रॉ है भाई। ओके, वो ज्यादा हो गया, नीतीश ठाकुर विल ड्रॉ दिस, बट बाकी लोग ड्रॉ कर लेंगे भाई। कैन आई प्ले इन सम बुलेट इनविटेशन अनफॉर्चुनेटली रिवांशी भाई, थोड़ा सा आई डोंट थिंक सो। वो किसका चैनल हैक हुआ था जिसपे एथेरियम लाइव चल रहा था? आई थिंक कुछ और था यार, करियप्पा समथिंग, करियप्पा था कोई। Rook c3, why Rook c2 भाई? Next move Rook c2 and it's a draw. Oh, by the way, a4 played. We will of course chat take on a4. Oh, we can't take on a4. First of all, we will play e3 chat. e3 first of all takes. Now we take on a4 of course. B takes a4 and now Rook takes e2 should be an easy draw. Rook e2 incoming, no defense. Rook a8, Rook e2, a5, Rook takes e3, a6, Rook a3, a7. And now chat, what would you play in this position? How can black draw this game chat? Vidit has by the way played e3. What can you play in this position chat? Black to play. How can he draw? How can Vidit draw in this position to reach this chat? Come on, very important. King e7 or King g7. Come on chat, come on. आपने ही हैक दिया भाई, मैंने कुछ हैगा वैगा नहीं है यहाँ पे। It was hard to go. Okay. Yeah, so King e7 would be a blunder chat. King e7 is a blunder. King g7 is a draw and there is no way for white to win this one. If the king comes here, we'll keep checking him from behind and then हम पीछे से अटैक करेंगे इस बार, very important. This is a dead draw. If the king goes to e7 of course, then this is the blunder. Rook h8 simply wins the rook, so that is the game. And white wins. So, by the way, Vidit has played the move Rook c8 takes, a4, e3 he has played, and now white is thinking dead draw भाई। आपसे नहीं लगता? हाँ समझ गया था। ये बुलेट कब से हो रहा है भाई? एक दिन का है, 7 से 8 6 तारीख को है भाई। लमाओ टिक्को थिंकिंग डर्टी भाई, आई एम ऑलवेज थिंकिंग डर्टी भाई, आई डोंट से इट ऑन स्ट्रीम। मेरे साथ हुआ था, so I learned this the hard way. Exactly शेफन भाई। आरफ पांडे जी कुछ अश्लील मैसेज लिख रहे हैं। आरफ पांडे जी, जो भी आपका इरेक्ट हुआ है ना, कल स्कूल जब जाओगे ना, टीचर पिटाई करके बिठा देगी तो सब समझ आ जाएगा आपको। ओम ब्लंडरम, रुक ब्लंडरम, कॉस्मोस में शिवो ब्लंडरम, स्पेस ब्लंडरम, करते ब्लंडरम, मिशन ब्लंडरम, न्यू मूवी। नाइस। अरे प्लीज explain why they haven't agreed to draw it. They will agree to draw soon. I think once VD captures both these pawns, it will be a draw very soon. Come on, let's go. NM means new master भाई, of course. और what else can it mean? और कोई definition है नहीं उसकी। Anish has drawn chat. Anish has drawn. Come on, VD. Oh, sorry. Shirov is playing. Oh, I am always thinking dirty. GM Sahil Tiku after becoming
कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ देव जी. Vidi has to defeat Rapport with white. Yeah, but the thing is, white से हराना आसान है ना, इतना मुश्किल नहीं है भाई. It's not that difficult. It's not like, oh my god, Rapport को white से हराने का है, ऐसे कैसे होगा रे? हो सकता है, it's possible. टीचर बैज है कि भाई उसको भी साथ बिठाएगी, लेकिन पिटाई से. आज जल्दी सोने को मिलेगा. क्या बात कर रहे हो भाई? आज 12:15 बजे अर्जुन का मैच है भाई, अगेंस्ट डैनियल एल्स की बुलेट मैच. आज तो देखना है भाई, आधा घंटा. आज सारे के सारे 12:15 के बीच में तैयार रहना भाई. Hello Sahil, the position difficult for black to play even draw as for Indian. Indian can literally go itself and shoot itself. Rin bhai, this is an easy draw. Like if you give this position to me, after especially black has played e3, I would draw this against Carlsen, against Stockfish, against anybody you want me to. So I'm sure Vidit will draw this. Rapport will also draw, chat. He has with Fedoseev has an extra pawn, but I think it will be a draw, of course. Magnus or Fabi? Magnus bhai. 12:45 बजे सोना है एग्जैक्टली भाई. एनएम की डेफिनेशन तो नेशनल मास्टर होती है ना. वो ऑफिशियल डेफिनेशन है भाई, बट अंदर की डेफिनेशन एक्चुअली न्यू मास्टर ही है. रैपोर्ट कुछ भी. रैपोर्ट गेम ड्रॉ होगी चैट. रैपोर्ट इज अ पॉन डाउन, but I think in this position with two bishops you can't even play f3 because of bishop c5 check and picking up the knight. It should be a draw most likely, but of course you never know what can happen with the extra pawn. Right now Shirov is thinking, of course. And chat, question for you, very important question for you. Let's say white captures a pawn, what does black play here? Yes, good boy Tikku, sahi choice. भाई रैपोर्ट गेम का क्या हुआ? अरे भाई गुड बॉय टिक्कू बोलते ही कैमरा खत्म की बैटरी खत्म हो गई यार. कैमरा लाइक्स अ बैड बॉय apparently. Yeah, e2 would be the move, chat, and VD would win this one. So I think fe3 is pretty much forced unless he wants to go king f1, but that does not improve the position in any way. Okay, let's change the battery, chat. Let's go. बैड बॉय कैमरा चाहता है, बैड बॉय उसको मिलेगा भाई. ही विल गेट अ बैड बॉय. लेट्स गो कैमरा जी, आपको बैड बॉय चाहिए, बैड बॉय ही मिलेगा. कैमरा ऑन होते हुए. ओके. विल वी मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड? मोस्ट लाइकली यस, आई एम होपिंग फॉर इट एट लीस्ट. अभी ही इज टाइड विद रैपोर्ट, सो देयर इज नो गारंटी ऑफ कोर्स, बट वी कैन होप सो. साहिल स्टक लाइक एवरीवन्स रेटिंग्स. भाई मेरी खुद की रेटिंग भी स्टक है भाई, खेल ही नहीं पा रहा मैं. Okay, let's go. Let me add the camera now. Let's go chat. Video input incoming. Okay. Camera coming in 3, 2, and 1. Chat. Welcome. I am back, chat. Let's go. Aadhaar card cam welcome करते हुए 2 सेकंड के लिए. And असली cam is back as well. Let's go chat. I am back. Centralization करते हैं भाई. ओ मेरा पिंपू. पिंपू क्या है भाई? Anyways, let's go chat. Chat, let's see what white plays. तुम किंग पे थे ना? अरे मैं किंग पे आता हूँ, फिर आता हूँ भाई. If you want me on the king, I'll be on the king. Just saying. Video in. Okay, on. I am back, chat. I am back on the king. हो गया भाई. What will you do if you wake up as Carlsen? I will first of all sell all my shares and transfer it to account name Sahil Tikku. हर स्ट्रीम में कैसे जाती है बैटरी? अरे बैटरी 3 घंटे 4 घंटे की होती है ना, 3 घंटे की होती है. 3 घंटे होते ही बैटरी बाय बाय. वी डोंट वांट यू ऑन द स्ट्रीम. किसको भेजू भाई? ये बोतल करेगी क्या स्ट्रीम? हेलो चैट, कैसे हो तुम? होप यू आर ऑल थर्स्टी. भाई क्या था भाई? छी तुम अरे भाई आशुतोष भाई अपनी फैंटेसीज ना चैट में फैलाएं. इज इट डेड ड्रॉ? हाँ भाई डेड ड्रॉ है. रियल और प्रणाली. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Okay, interesting. Bottle better. Double meaning क्या भाई? Come on भाई, ये what is Shirov thinking now? It's not like he has 10 different moves. I mean, दो ही move है, King F1 या फिर I mean takes, और क्या खेल देगा यहाँ पे? बस isn't it bad for black? No man, it's a dead draw भाई. So यहाँ पे he will take. I first of all capture on a4, of course. I capture on a4. Let's say he takes the pawn or the rook, whatever it is. Let's say pawn takes, rook takes c2. You can try king f1, of course, trying to save this pawn. But then I go rook a2, and the king is cut off on the back rank. So you can never really play king e1 because I will take g2. So it's just dead draw.
आपको स्पॉन्सर कब मिल रहा है पता नहीं भाई, कब वो सुनहरा दिन आएगा बट भाई चैट का सपोर्ट तो क्रेजी है ही, बट या वो सुनहरा दिन कब आएगा पता नहीं। छोटा छोटा टिक्कू तो आपकी कॉपी कर रहा है। अरे छोटा टिक्कू मेरा ही छोटा है ना भाई, कॉपी तो करेगा करेगा। आज तो सारे गेम्स ड्रॉ है। हाँ, सो फार ऑल गेम्स ड्रॉ। आपने कभी चेस के अलावा कुछ खेला है? खेला है भाई, फुटबॉल खेला है, बैडमिंटन खेला है, वीडियो गेम्स भी खेली है बहुत सारी, बट अभी नहीं खेल रहा भाई। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो भाई ये आप जो फैक्ट्स आप बोल रहे हैं पेपर में जाके लिखिए भाई, वहां पे तो लिख नहीं पाओगे, वहां तो भूल जाओगे, वहां फेल हो जाओगे, और यहाँ पे सारी नॉलेज झाड़ोगे आप। वहां पे लिख के आओगे e4 e5 knight f3 knight c6 bishop c4 a6 queen f3 h6 queen f7 mate. What about Rapport's game? It's going to be a draw, chat. Rapport's game will be draw. Bishop c3 f6 knight c6 bishop e4 knight a5 king f7 knight c4. Yeah, looks like white is trying to progress, but there is no way to progress. ये pawn कभी ना कभी मरेगा कुत्तों की मौत. So let's go to the game of FIDE again and refresh. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताओ भाई, तुम क्या भाई जानते नहीं है भाई? हाँ, मुझे नहीं समझा है। ऑब्वियसली आई नो इट भाई, आई नो द फॉर्मूला माइनस x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इसकी डिवाइड बाय 2a। अरे मतलब हम मैथ्स जीनियस थे भाई अपने जमाने में हम मैथ्स जीनियस है भाई। I have to say सारी वेरी टेक्निकल एंड सिंपल सी, आई लाइक हिज कमेंट्री एंड स्ट्रीम्स वेरी नाइस। थैंक्स फॉर विन भाई। व्हाट अबाउट वीडी गेम ड्रॉ? या ड्रॉ ही होगा भाई जीनियस टिक्कू देगा या नीलकंठ बानू के बाद हम ही आते हैं भाई नेक्स्ट। मेरा कल इंग्लिश का पेपर था तो भाई फेल हो गया यार। वाओ, यू रियली नो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? ऑफ कोर्स निशा, ऑफ कोर्स आई नो, आई मीन आई हैव स्टडीड इट। भाई लूडो के चैंपियन थे क्या आप? अरे लूडो में अलग चैंपियन थे हम, बट हमने फिर चेस खेलना सीरियसली कर दिया तो भाई लूडो खेलना छोड़ा पड़ा है। आई डू प्ले लूडो समटाइम्स, गिल्टी प्लेजर अगेंस्ट माय कजन सिस्टर, बट वंस अ ईयर चलता है वो। हाँ, कितने मूव्स हुए भाई? 29 मूव हो चुके हैं, 11 मूव पेंडिंग है, एंड इट्स ऑल अबाउट जस्ट प्लेइंग मूव्स नाउ। डेड ड्रॉ है भाई। छोटा टिक्कू जग गया अरे छोटा टिक्कू बड़ा भी होता है पता तुम्हें? ही एक्चुअली ग्रोस, ये देखो ही एक्चुअली ग्रोस भाई, ये देखो बड़ा हो रहा है छोटा टिक्कू, देख लिया तुमने? ही कैन एक्चुअली ग्रो इन साइज एज वेल। इंपॉर्टेंट टेलर फॉर्मूला क्या है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर भाई, ये क्या भाई? अब तुम इंटीग्रेशन पूछोगे भाई? श्रोडिंगर्स इक्वेशन भी बता दो भाई, कुछ भी इतना याद नहीं है भाई मुझे। That's why I use headphones. Nice. Oh, by the way, he took on e3 now. Let's play rook takes e2. Oh, he took on a4. Very good. B takes a4 and rook takes e2. Chat incoming. 18 minus. Come on. Let's go. क्या अश्लील बातें हो रही हैं भाई? कोई अश्लील बातें नहीं है भाई, अश्लील नहीं भाई, हम अश्लील में विश्वास करते हैं भाई, नॉट इन अश्लील। लेट्स गो चैट। Do you think Vidit can win against Rapport in white pieces? He can, bhai. I think he can. Why are you at the white king? I am the black king, bhai. भाई स्पेशल थ्योरी ऑफ फेवरेट बता दो भाई। इतना बोरिंग सवाल पूछते हैं टिक्कू भाई, फिर से छोटे हो गए। E equal to MC square भाई, बाकी तुम खुद फिगर आउट कर लो। Don't spam, discuss chess or something relevant or something funny. Yes भाई अरे इनको बोलो ड्रॉ के खत्म करे। अरे खत्म करो रे भैया, काहे सोच रहे हो इतना? Updates please bhai. Anish Giri has drawn his game, chat. That is finished. Mamedyarov has drawn his game. Anish has drawn his game. Grishchuk has drawn his game. And in terms of Harikrishna, he's still playing, but it's also a dead draw. Rook endgame, dead draw. Then you have Fedoseev, who's also going to be in a drawn position very soon. ये pawn free का मरने वाला है, बहुत जल्दी king आके मार लेगा, सो खा लेगा। Then you finally have VD, who also has a drawn position, but I think they're going to play on for a couple of moves at least. लिल टिक्कू रैप कब आएगा भाई? लिल टिक्कू से पूछ लो यार, उससे पूछ लो। VD score is 2 out of 3. If he draws, it will be 2.5, or 2 out of 3, it will be 2.5 out of 4. MVL भाई, MVL गेम देखते हैं एक बार। MVL game is the only game that's complicated right now. बाकी सब में draw ही लग रहा है। Yeah, anybody could win this. Black is objectively better because I mean white does not have any attack. But yeah, black will go wrong at any moment. Yeah, because black's king is kind of weak, so it can go wrong at any moment. कोई गलत check आ गई तो game over हो जाएगी. So let's move the MVL game and let's go to the game of Vidit again. What's Rapport score? Rapport score is also 2 out of 3. So दोनों draw करेंगे, both will go to 2.5 out of 3, and then
tomorrow's game will be very important, chat. Tomorrow's game will be really important again, because as far as I remember, tomorrow VD is playing against Rapport with the white pieces. So अगर आज दोनों draw करते हैं तो tomorrow basically decides the match, यार. If both draw today, tomorrow decides everything. Crazy रहेगा भाई कल. Black King races ये क्या है भाई? Why is it Rapport in score? It's the same as VD भाई. Not tomorrow, day after. Tomorrow is the rest day, bhai. Day after. Anyway, chat, let's see what happens now. Why is Shirov not playing? What is he thinking now? हाँ, tomorrow rest day है, कल rest day है. कल draw हो गया तो फिर भाई final draw में depend करेगा. VD will play against Fedoseev as black, and Rapport will play last round against. Oh, crazy भाई. Rapport का last round is with the white pieces against Alexei Shirov. Oh my god. So Rapport is going to win this one. अरे भाई विदित भाई को कल हराना पड़ेगा Rapport को भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है. क्रेजी. ब्लैक किंग की पायरेसी नहीं प्रिवेसी फिर चलेगी. अरे चली जाएगी भाई हटा दो. स्लो में हटाना है क्या? चलो हटा देते भाई. अब चैट बोल रहे तो हटाते भाई. लेट्स गो भाई, हटा देते. स्पैम मत करना भाई. लेकिन Rapport will easily win against Shirov. Yeah, that's going to be difficult, yeah. पेठाला भैया used to be world's top 10, but then he dances. पेठाला कौन है भाई? अच्छा, पेंटाला बोल रहे हो तुम. अरे पेंटाला है, पेठाला नहीं है भाई. क्या बोल रहे हो तुम? अरे यार ये क्या भाई तुम. स्पैम करने वालों को भाई टाइम आउट मिल सकता है भाई. अपने रिस्क पे स्पैम करे भाई. कम ऑन भाई, वाइट जी मारो. किसका इंतजार है? क्यों खेल रहे हैं? मुझे पता नहीं है क्यों खेल रहे हैं. आई डोंट नो क्यों खेल रहे हैं. वीडी हार जाएगा क्या फिर? अरे हारेगा नहीं. He can still win tomorrow against Rapport and all will be fine. या फिर फेदोसीव भाई कुछ चमत्कार कर लें और ये एंड गेम जीत जाए. That would be also very cool. Let's see what happens. VD for win is temporary, VD for loss is permanent. ये क्या भाई? Just join a roundup please. So far भाई Anish Giri has drawn his game. Mamedyarov has drawn his game. MVL is the only guy who might have a result today. And Harikrishna has also drawn his game, chat. Harikrishna has agreed to a draw. So that's one more draw. Harikrishna is out of the Grand Prix now. That's finished. So only VD has a chance now. Let's see what happens. Shirov is thinking of dinosaurs. By dinosaurs की spelling भी गलत है, उसका thought process भी. Tell your GF name please. क्या करोगे नाम जान के यार? तुम क्या कर लोगे? इसलिए मैं बोलता हूँ साड़ी में मत नाचो भाई. साड़ी में कौन नाचता यार? Come on. Is Anish first in his group? Yes, he's first by. Don't underestimate Vidit. He can also qualify. He can, but he's half a point behind. No, like Vidit and Rapport are in 2 points. Fedoseev is 1.5. So it's like it's automatically less likely he will. GM शिकारा कौन है भाई? GM शिकारा ड्रू भाई. शिकारा शिकार नहीं कर पाया. हरिकृष्णा ड्रॉन डाला. ये क्या है भाई? कम ऑन भाई चल दे यार. ये शिरोव क्यों लेट गया? क्या मुझे लगा शिरोव बोर्ड पे लेट चुका है भाई. वो लेट चुका है और सो गया भाई. मुझे लग रहा है बैठ अपना पिल्लो लेके भाई. चलना यार, खत्म तो हो गई, ड्रॉ हो गई भाई. वीडी यस्टरडे गेम और नाच भाई. वीडी कल की गेम में हार गया था यार. टिक्कू भाई फेवरेट वर्ड्स. कम ऑन लेट्स गो. कम ऑन लेट्स गो बेबी. कम ऑन भाई. कम ऑन लेट्स गो हर जगह अप्लाई होता है. चाहे तुम काम कर रहे हो, चाहे तुम पेपर दे रहे हो, चाहे तुम डेट पे हो, हर जगह काम आता है. फिर ये मैच ड्रॉ बहुत टाइम पहले हो जाता अगर कल फ्री डे नहीं होता तो. वो भी पॉसिबल है, बट आई थिंक दे माइट हैव स्टिल प्लेड. बट आई डोंट नो व्हाट शिरोव इज थिंकिंग. इट्स नॉट लाइक ही हैज लाइक अ मिलियन चॉइसेस. ऐसे मार ले, कुछ होना तो है नहीं. What if Rapport and VD ended with the same score? Then they will have a one-on-one match against each other. यार बहुत क्रेजी मैच रहेगा भाई. कल हिकारू ने सराना को ही क्या ही पेला था भाई. हिकारू हर किसी को पेलता है भाई. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. लव यू भाई, कीप इट अप. थैंक्स फॉर लक भाई. रैपोर्ट को निहाल ने हराया था यार. रैपोर्ट को देखो, ऑनलाइन चेस इज डिफरेंट भाई, एंड दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट. दिस OTB क्लासिकल चेस जहां पे रैपोर्ट इज ऑफ कोर्स अ मच स्ट्रॉन्गर प्लेयर. We have seen VD also struggle in online chess, like in short time controls. Yeah, मतलब जब blitz में
but he's played really well in classical, so that's the thing. हाँ, शिरो सोच रहा है यार किस तरह मैं गेम हारूं कि शक ना हो कि मैंने थ्रो कर दी गेम. दैट वुड बी वन थिंग ही माइट बी थिंकिंग. किस तरह मैं गेम थ्रो करूं, कौन सा ब्लंडर करूं मैं कि मतलब किसी शक ना हो. दैट इज पॉसिबल. वीडी का फैन हो सकता है भाई. आज के गेम्स में इतना मजा नहीं आया. एवरी गेम इज गोना बी अ ड्रॉ. या आज कुछ शार्प था ही नहीं एक्चुअली. इवन आई एग्री विद दैट. आज एक्चुअली काफी ड्रॉन गेम्स थी बिकॉज नोबडी हैड एनी एज. द ओनली गेम जहां पे कुछ हल्का फुल्का भी हो रहा है दैट इज द एमवीएल गेम, and that is totally non-consequential to us because it's a separate pool. So I agree with you. आज games उतनी exciting नहीं थी, but results are equally important though. ये draw कैसे? White is pawn up. Yeah, मैं will talk about, but the thing is, rook end games are always drawn, and that's why I suggest going for our course because वहाँ पे rook end games cover करी है हमने. Rook end games are usually drawn. देखा कितना मैंने मस्त स्मूथ डाल दिया कोर्स के अंदर. So basically चैट यहाँ पे rook end games when your opponent has a rook behind the passed pawn, they are usually drawn even with the pawn up because there's no way for the white to come ahead. मतलब rook हमेशा अपने pawn के आगे ही अटका रहेगा. There's no way to queen. That's why it's drawn. आज draw देता. Shirov is thinking of chess's commentary. Nice. भाई पर आपको सब इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं for beating Magnus. निहाल ने किया था किसी को L फर्क नहीं पड़ा था. Kaushik bhai, that's why I say life is unfair. The thing is, it's all about luck. It's all about luck. Not all about it, but I think you have to first put in the hard work, achieve the results, and the luck has to be on your side. उस दिन सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर दिया, उसमें पढ़ा होगा कि 16 साल का लड़का है, कार्लसन को हरा दिया. That was the age where Sachin actually started playing cricket for India. So he might have thought, ठीक है भाई कर दे ट्वीट. So it's all about luck. Being at the right place at the right time is very important. Nihal ne basically कहता हाँ, but it wasn't much different than let's say the Airthings Masters. Yeah, I mean Blitz Rapid is both kind of similar. अर्जुन के दाम में टाइमिंग it's at 12:15 chat. 12:15 से 12:45 होगा आज रात को. I used to think rook end games were drawn, but I saw a bullet stream. भाई वो bullet stream I think I've already hidden that bullet stream. मैं already इसको private या unlisted कर चुका हूँ. So अब किसी को वो उसको मिलेगी नहीं. So please भाई don't mention it anymore. वो भाई एक राज है जो आई थिंक छुपा रहना चाहिए. Why are you at king? Because I am supporting the VD king भाई, पूरा defending him. Also Nihal did an official event. That's also true, but I think it was still a big thing, yeah. Rook a4, rook c2, rook c4 isn't white some chances. Rook a4, rook c2, rook c4. But यहाँ पे chat I will play rook e2 first. Now it's up to you. You can give up this pawn or you can play a move like e4. And now I will play rook b2. So b4 only move. And now I play king f6 and I'll put my king on e5. And how do you progress here? There's no way for white to progress. You can't push this pawn. I will capture. You can't push this pawn. You can't push this pawn. And it's a dead draw. Even though white is pawn up, it's a dead draw. Please भाई क्या करना है सुरेंद्र भाई? Please किस बात का है? ऐसा लग रहा है छोटा टिक्को has elephant ears. It's not yours. No hate, but I guess Prag would have struggled against Magnus if it had been an OTB game. Yeah, he would have struggled for sure. In fact, he did struggle against Carlsen in OTB game in the Tata tournament. Nihal tournament में भी हराया था, वो भी IM ने भी हराया मैग्नस को. Yeah, that is true. But the thing is, किस्मत की बात है यार. किस्मत की बात है कि उस टाइम पे सचिन भाई ट्विटर पे थे, उन्होंने पढ़ लिया कुछ आर्टिकल, उन्होंने शेयर कर दिया. एंड सचिन नोज अ बिट ऑफ चेस. सो वही किस्मत की बात है भाई. शिरोव वॉशरूम गया है. अरे भाई उसको बोलो बाद में कर ले भाई सब गंदे काम. या rook a4 played now. Let's check on c2. Do you think full-time streamer is a sustainable profession or is it just a hobby thing that we do? It is sustainable. I think you need like 100k subs for that though. Until then it's not really possible. And not just subs, उतने views भी comparable होने चाहिए. ऐसा नहीं 100k subs है and views 2000 है. So you need like at least I would say let's say you stream or put a video, I think your views on the stream or the video should be like 30 to 50k at least. Then you can probably earn enough. By the way, rook c2 played and now rook the f4 check. Oh, beauty move by Shirov. I completely missed this. Oh, bhai, beauty move. The idea is after, like king somewhere, let's refresh this chat. This is a nice move by Shirov, yeah. Very nice move by Shirov. So rook f4, king e7, now rook f2, and the idea is if you play chat rook c3, then he goes rook to b2, rook behind the passed pawn. Even this is a draw, but yeah, at least it's like matlab there are some winning chances of white here. It's not like crystal clear it's a draw.
because white has the rook behind the passed pawn. That's always better for white. So, but it should still be a draw, of course. It is still a draw, chat. Rook f4, king e7, and now rook f2 he'll play, of course. But yeah, very clever idea by Shirov. At least a good, interesting idea to kind of, at least threaten black. Yeah, interesting. I think Danya has upper hand in bullet than Arjun. That's true, bhai. But I think Arjun has drastically improved. Danya might not, have a good day today, and maybe Arjun can defeat him. We'll know very soon at 12:15 p.m. AM today. Jeeta to Magnus ही भाई, Magnus जीतता ही हर बार. How are his chances, Tikku bhai? Bhai, this is looking like a draw to me. Draw is decent for Vidit. It's not the best, but probably it's okay. अब आप king नहीं रहे. अरे मैं king नहीं रहा. Sorry भाई. I am the king, chat. I am the king. Do you use engines to guess moves? Sometimes, if it's a tactical position, yes, but this is very simple, bhai. This is actually elementary. इसके लिए engine क्या मतलब? I could defend this against stockfish if I wanted to. इसलिए शिरोव इतनी देर तक सोच रहा था. हाँ. Oh, he plays b4. Chat, question for you. What do you play now? Very important move. What do you play? F bomb brought. मैंने F बोला क्या? Sorry यार, I forgot. Chat, what should we play? Come on, chat. What should we play her? Yes, rook to b2 is very important. Rook behind the passed pawn. Always a good move, chat. Always a good move. Check is also possible, yes, but just rook b2 makes more sense. I think. ओहो विजर्डरी वाइटी, क्या हाल है भाई? लॉन्ग टाइम भाई. विजर्डरी वाइटी मुझे याद है हमारे यहाँ पे 400 सबसे थे. लॉन्ग टाइम. क्या हाल है? ऑफ कोर्स भाई, आई डोंट फॉरगेट एनीवन. Rook check, yes, but rook check then also king f2 and it's only helping white to bring the king into the center. Yeah, we don't want that. वो king जितना पीछे रहे उतना better है. It's right now cut off on the back rank. White will have to probably come via this path, and that's more complicated. So let the king be on g1 and let's play rook b2. साले मैं स्कोल्ड होके भी ऐसे जीत गया और ड्रंक होके भी ऐसे जीत रहा था. क्या ही आदमी है. Any dogs? Andrew Trang news. Yeah, I mean, Carlsen is Carlsen for a reason, bhai. There's a reason why he's the GOAT, most likely. Like Kasparov says he's the GOAT. He's just kind of a legendary player now, literally. जैसे म्यू होता है, म्यूटू होता है, वैसी पोकेमॉन है, वैसी वो कार्लसन में है. remember me चल रहा है. टायर तुझे कब करोगे भाई? I think next week करेंगे. Unless if VD qualifies, let's say he qualifies for this, then we have the tie breaks, then we will not do Title Tuesday. But if he doesn't qualify, फिर Title Tuesday करेंगे भाई. साहिल, रशिया यूक्रेन में कौन किसका? अरे भाई ये क्या है? टेल मी, कब से सब्सक्राइबर हूं मैं आपका? अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, हर किसकी याद थोड़ी है मुझे. बाद चैट, लेट्स सी भाई. कम ऑन वीडी भाई, लेट्स गो रुक b2. व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसी से वो कंटिन्यू करोगे क्या लिटिल टिक्कू भाई? डिपेंड्स यार. आई थिंक इफ दिस, ओ बाय द वे, रुक b2 played, I think this game will end by 11, like in 12 minutes or so, and the next stream will happen at 12:10. So 1 घंटा 10 मिनट है. So मैं stream end कर दूंगा और मैं एक और schedule कर दूंगा. I think that will make sense. कार्लसन नंबर 1 है. हाँ भाई. इसके बाद कौन सा मैच है भाई? इसके बाद अर्जुन का मैच है, बुलेट मैच अगेंस्ट डैनियल नारुल्स्की. नारुल्स्की कमेंटेटर भी है और प्लेयर भी है. नाइस. And chat, I have screwed up. I have played this. Okay, h4 played by white now. Yeah, but what's wrong? Just e5, king d6. I don't see any issues for black here. कोई stress ही नहीं है. Yeah, Arjun is playing. By Arjun is playing Bullet Championship. I am watching since you had 15k. Oh, Jyoti, nice. Speed Chess Championship. Speed नहीं, Bullet Chess Championship है भाई. आज से, I think कल से start हुई. कल रौनक ने खेला था. आज अर्जुन खेल रहा है. डैनियल नारियल दित्सकी भाई. नारियल नहीं है भाई, वो उसका जूस इतना टेस्टी नहीं होगा भाई. एनीवेज, लेट्स गो भाई. भाई चल क्यों नहीं रहे यार ये लोग? इतना स्लो खेल रहे थे कुछ खोने के लिए. विल दानिया कमेंटेड ऑन हिज ओन गेम्स? आई होप नॉट. आई एम वाचिंग सिंस 21. ओके, नॉट लॉन्ग अगो देन. रोलक जीता या हारा? रोलक आई थिंक जीता था. 8.5, 7.5. आई थिंक ही वन. 21.8k. नाइस. 21.8k तो अभी है. मैं 8k से देख रहा हूं. अरे मेरा वो मतलब नहीं था बे लक्ष्य भाई. छी यार भाई, कितनी गंदी सोच है लक्ष्य भाई की यार. छी यार, छी 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 भाई. छी 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 भाई, कितनी गंदी सोच है लक्ष्य भाई. भाई डू यू टॉक टू योर पेरेंट्स विद दैट माउथ? छी 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 छी. आई एम वॉचिंग सिंस 35k. ओहो, पीछे से आया भैया. वेलकम.
Have you played Dania before? I have not played him, भाई. अनीश इंस्टा पर अनीशा ये क्या है भाई? अनीशा इंस्टा पर हो क्या? ये क्या है सचिन भाई? यहाँ पे ये स्टॉकिंग कर रहे हैं भाई हमारी चैट में. भाई मेरे से यार एक छोटी सी विक्स नहीं खुल रही है. खुल गई, थैंक गॉड. मॉड प्लीज रिमूव इनकमिंग. नहीं भाई, सिम्स इन द चैट. एग्जैक्टली. डोंट वरी यार. जो कौन था भाई वो? सचिन जी भाई, डोंट वरी. उसका कहना ऑलरेडी कार्लसन है भाई. अनलेस यू आर मैग्नस कार्लसन, देयर इज नो पॉइंट. ओह, इट माइट बी कार्लसन इन अ फेक अकाउंट. सचिन के नाम से. मैग्नस ने देखा होगा. हु इज द मोस्ट फेमस गाय इन इंडिया? सचिन. ओह, इसका नाम रखते हैं. लेट्स वो अनीशा नाउ. चेस असिम. ये क्या है भाई? चेस असिम. विक्स की गोली लो यार. मुझे लिटरली विक्स की स्पॉन्सरशिप चाहिए भाई. विक्स भाई कुछ नहीं करना आपको, बस ये विक्स वाले ना, ये वाले भिजवा दो भाई. बस हफ्ते के कम से कम 100. इतना ही चाहिए भाई बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे. पैसा भी नहीं लेंगे, बस ये भिजवा दो यार, और कुछ नहीं चाहिए. आई एम नॉट वॉचिंग योर स्ट्रीम. भाई 3 साल जलेबी नहीं खाई, माँ कसम. तो भाई खा लो ना यार. अमित भाई, हाँ भाई बहुत फनी भाई. हाउ मेनी मूव्स फॉर इंक्रीमेंट? नो मूव्स भाई, बिकॉज ये उससे पहले खत्म हो जाएगा. बाय द वे, E5 played, now rook C4. Yeah, what the hell is this, Shirov bhai? King F6, he will play E4 and he'll play this forever bhai. Oh my god. ये तो ड्रॉ होगा. अभी स्ट्रीम एंड कर दो अर्जुन के लिए आना. हाँ, आई एंड द स्ट्रीम एट 11 रिगार्डलेस, बिकॉज ये डेड ड्रॉ है. देयर इज नो वे आई कैन प्रोग्रेस हियर, बिकॉज जब भी प्रेस करेगा तो विल कैप्चर ऑन G2. सो दिस विल बी अ ड्रॉ चैट. Right now, I don't think anyone has vibe that he hadn't featured other Magnus. Okay, why are they even playing? Because he can see an extra pawn on B4. He's like pawn. I don't know exactly why they're playing, man. AG क्या सीन है? अरे मस्त सीन है AG का. भाई वो कौन सा गाना है? उसे वो रोमांटिक सा बैकग्राउंड म्यूजिक है ना. आई थिंक वो मुझे ऐड करना चाहिए. आई थिंक आई शुड हैव इट रेडी. कुछ भी ऐसा कुछ वियर्ड होना भाई, रोमांटिक गाना पीछे हो जाता. टिंग 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 कुछ गाना है, वो भूल गया मैं. This is a dead draw. Yeah, it is. Shirov testing with its patience. Exactly. AG score, bhai. AG score is, I think he's on 3 out of 4 now. I am 19 lol. Yeah, she's 24. So, bhai, Sachin bhai, unfortunately, आपका कोटिंग would not work. So, भाई अपनी उम्र की ढूंढे. AG, OG, लोजी, सुनो जी. वाह बेटा, इतना फनी गाना, इतना फनी. बुलेट चैंपियनशिप चेस.com लाइव पर है. हाँ, उधर होगा भाई. मैं भी स्ट्रीम करूंगा, इधर भी देख सकते हो, बट लाइव फुटेज शायद नहीं होगी मेरे पास. ओके, एक और बंदा मुझे बैन करने को मिल चुका है चैट. ओके, आई फाउंड अ गाइड टू बैन. काफी लोग किसको बैन करें. ओ सचिन इज अ बेबी. बेबी. शिरोव खाली बेकार है. वीडी के साथ ही डिनर करके आएगा लगता है यार. मुझे पता नहीं. आई नो व्हाट्स हैपनिंग चैट. आई नो व्हाट्स हैपनिंग. आई थिंक हैप्पी आवर का टाइम स्टार्ट होने में भी 6 मिनट है. फिर इज लाइक भाई अब मैं हैप्पी आवर में होके आऊंगा. पहले गेम थोड़ी लंबी खींच देते हैं भाई. यहाँ एसटी यहीं दिखेंगे, वहां तो स्केड्यूल देख रहा था. ओह नाइस यार. टॉप में कौन चल रहा है? टॉप में भाई आई थिंक वीडी चल रहा है अभी. मुझे इग्नोर नहीं यार. आप ट्विच में क्या स्ट्रीम करते हो भाई? भाई ट्विच में तो एनीवेज जस्टिस वो सभी करा के नारे. भाई क्या जस्टिस? उस बंदे को भाई लिटरली मतलब बैन कर दोगे ना तो उस दिन मैं पार्टी थ्रो करूंगा भाई. लिटरली जिस दिन इसको कैंडिडेट से बाहर फेंक देंगे ना, आई विल लिटरली थ्रो पार्टी दैट डे. नॉट इवन किडिंग. उस दिन मैं 10 चेस का मेंबरशिप दूंगा भाई, जिस दिन वो बैन होगा तो. अर्जुन की जाने 12-15 भाई, वो मैं स्ट्रीम करूंगा. 12-15 को अलग से स्ट्रीम करूंगा. Is it considered unethical, impolite to drag a dread-down game? I don't think so. I think it's logical for White to play on. He's an extra pawn, at least for a little while, yeah. For a few moves. I don't think it's evil. I think he's just kind of lame. नहीं, मुझे खाना चाहिए, membership नहीं. क्या खाओगे निशा, बताओ क्या खाओगे? Is it a clear draw now? Yeah, dead draw भाई, dead draw. अरे भाई इतना hectic streaming, hats off भाई, thanks a lot भाई. Is this position to draw on? Yes. आपकी स्ट्रीम इज जस्ट अ फुल पैकेज, एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज. थैंक्स अ लॉट फॉर द काइंड वर्ड्स पंकज भाई. इतना बढ़िया पैकेज है तो किसी लड़की को पसंद क्यों नहीं आ रहा है भाई? प्लीज
I have a petition to raise against you girls. What's wrong? डोनट दे दो भाई. डोनट दे नहीं सकता यार, दोनों मेरे हैं. What's the best move for VD? I think probably just king f6 makes sense here. Trying to go to f5 looks very logical. Was Fischer married? I don't think so. विदित भाई क्या सोच रहे हैं भाई, मुझे पता नहीं यार. या अनिशा, या आई नो नॉट सके करा कि नॉट ओनली जिगाल को कहां से आ गया भाई. आपका स्ट्रीम के मजा आ गया. अरे थैंक्स लॉट भाई. करा को ट्वीट भाई, उसको तुम खाली कैंडिडेट से बैन कर दो बस. ट्विटर तो हम हैंडल कर लेंगे भाई. शिरोव इज एन ओल्ड मैन, ही विल गेट टायर्ड एंड ब्लंडर. भाई कैसे भाई, एक्स्ट्रा पॉन है शिरोव के पास. अगर वो ये ब्लंडर करेगा तब भी ड्रॉ है, फिर साथ में यही ब्लंडर करेगा तब भी ड्रॉ है, फिर साथ में यही ब्लंडर और फिर जीत जाएगा. बट स्टिल ही विल नॉट विन द 3 पॉन्स. 30 सेकंड मॉड स्पैम मोड अगेन. नहीं आज नहीं भाई, आज नहीं. आज के मैं एनर्जी निकाल दी है. अगर और निकालनी है तो यू नो व्हाट टू डू. बट आज का हमारा सारा सब कुछ निकल चुका है भाई. आई वांट टू लिव इन अ फ्यूचर वेयर वॉर्स आर फॉट ऑन योर चेस बोर्ड. अग्रीड एसी भाई. I think best move of black is rook c2. Yeah, you can definitely play rook c2 by. I suggest you play that, but please don't motivate me to play that one. अरे अरुणा कुमार पट्टर 100 रुपीज पे थैंक्स अ लॉट विक्स के लिए. थैंक्स अ लॉट अरुण कुमार भाई. थैंक्स अ लॉट. Yeah, you paycheck. Thanks a lot, Kumar. Thanks a lot, यार. Thanks a lot, भाई. अनीशा जी आप तो आंटी हो भाई. यार सचिन भाई, ये तो लिटरली आपने अब तुम नेक्स्ट लेवल शिट पे लेके जा रहे हो भाई. बैन होने से तुम एक कदम दूर भाई, एक कदम दूर बैन होने से. एक तो वीडियो ने ओपनिंग में चांस दिया, अब उसी को परेशान कर रहा है. एग्जैक्टली. किंग e6, या किंग e6 ऑल्सो पॉसिबल, किंग f6 पॉसिबल. बस कुछ भी खेलो यार, डजंट मैटर. I think there is so many transformation. I don't think so यार. Oh, by the way, king d6 played by VD, e4, rook b1 check, king f2, and now he played rook b2 check. Chat is going to be a draw chat. Draw. ये game draw. शिरोव किंग ब्लंडर करेगा. अरे नहीं भाई, अब चेक पे चेक करेंगे भाई. ये किंग इतने अजीब क्यों दिख रहा है. रुको भाई, मुझे आगे चलना है किंग के साथ. आगे चलते जाना है, चलते रहो. Are you like to know people are offering a draw after every move? No, you're not, bhai. You can offer a couple of times, but after this, oh, by the way, king f3, rook b3 check, king e2, rook b2 check. What will Shirov do now? Will he play king d3 and go for the win? Many people tweeting to ban Karakin. I think it's not their fault. A certain stupid place war. Nisha, but he's promoting it. Imagine if there was somebody in your workplace, school or college who constantly was trying to, motivate people to, kill somebody. Just imagine, that guy deserves to be suspended for sure. School ho, college ho, or workplace ho. It's still a draw chat. King d3, I think still a draw. By the way, very important chat, after king d3, we have to be careful here because white is slightly better now. So if you play rook takes g2, suddenly b5, rook b2 and kings and rook check and why did he play king d6? भाई king f6 खेलने का था ना भाई. फालतू में पंगे हो गए भाई, फालतू में स्कैम हो गए भाई. king d6 भाई लोल ना हो जाए यार. वीडी भाई काहे king d6 खेला यार. king e6 था, king f6 था. ओहो, he goes for it. अरे भाई शिट. अरे भाई पैंट गील हो जाएगी भाई. प्लीज भाई शिरोव भाई शर्म करे. ओ रुको चैट. It's draw. G5 draw. Come on, Vidit. G5. Come on, भाई Vidit. G5. Come on, Vidit भाई. G5. Come on. Let's go, Vidit भाई. G5. Come on, भाई. Let's go. Nepo was willing to stop war. Exactly. No, the idea is chat after takes, you can chop off these 2 pawns immediately with the rook and ये pass pawn आ जाएगा. And once we have a pass pawn, तो white का pass pawn की घंटा value है. Come on, भाई. So g5, I think you should probably capture. Rook takes g2 now. Let's say b5 now. Rook check, king c2,
and now simply rook takes g5, and he has a passed pawn, we have a passed pawn, b6 now, simply rook g8, b7, rook b8, rook here, king c7, and it's a draw. So come on, bhai, come on. Come on, come on, VD. Russian banned from Beijing 2022 Paralympics. क्या बात कर रहे हो? चाइना ने बैन कर दिया क्या? Oh my god. I am watching you since even before you become politics assist. Come on, come on, come on. I am not politics assist though. I only comment on matters regarding kayaking because he's a chess player. अरे सब ड्रॉ है अभी वीडी के बाद वीडी बिना बात में ट्रोल होगा अरे नहीं नहीं यार by the way let's see if he gives a check what happens check king c2 and suddenly white is better so he should be very careful now very careful chat g5 come on VD bhai let's play it come on come on come on come on put the radio on अरे ये क्या हो गया भाई did it crash oh I thought it crashed they agreed to a draw what how did he not fight on what happened to Shirov what the hell happened to Shirov wasn't he like playing on they agreed to a draw crazy भाई ये क्या है I thought Shirov was trying to win this like something like this that's crazy okay thanks that's awesome भाई draw हो गया okay I'll take it I'll take it बढ़िया भाई Shirov heard about Shane Warne yeah possibly but yeah whatever I'll take it by so VD has drawn okay I guess it's all fine so VD has drawn chat and that basically means he goes to 2.5 out of 4 and now comes the important game Rapport against Fedoseev. No, this is a draw as well chat because the white king is tied it has no way to come out so he cannot come and if he cannot come then there is no pleasure and he will draw the game so chat this will be a draw so both Rapport and VD go to 2.5 out of 4 and tomorrow we have VD against Rapport with VD having the white pieces and VD has to win tomorrow because if he does not win tomorrow day after like not tomorrow day after tomorrow VD plays him and uske next day में match होगा Shirov against Rapport with Rapport being white so it's very important कि VD wins against him tomorrow so let's hope so he can win so chat अभी एक और game pending है that is the Erigesi Arjun game against Naruski at 12:15 AM so I'll end the stream now I'll be back in exactly 1 hour from now so मिलते हैं भाई I'll see you 12:13 नहीं है भाई 12:10 है 12:10 है भाई 12:10 पे मिलते हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन चैट आई सी यू देन टेक केयर कीप स्माइलिंग मिलते हैं भाई 1 घंटे में बाय चैट